Hello. Good morning, Shashi sir. Good morning, Dr. Abhishek. सर थोड़ा So, सा 5 मिनट का डिले है उसके बाद स्टार्ट करते हैं. yeah, it's okay. Okay. So, am I audible? Yes sir, clearly audible. Okay. Thank you.
Worthy Director Principal, Government Hydro Engineering College, Bandra, Professor Himanshu Mungaji. Worthy Director Principal, Mahatma Gandhi Government Engineering College, Professor Rakesh Kumarji. Other distinguished guests and speakers, esteemed colleagues, and all the other participants. Welcome to the second day of the International Conference on Recent Trends in Engineering, Science and Technology 2024. Now I request respected Director Sir to kindly felicitate Professor Rakesh Kumar. Please. हाँ जी, कोई बात नहीं। Thanks to all guests. Ladies and gentlemen, today we embark on another day of insightful discussions, collaborative learning, and the exchange of groundbreaking ideas. Without further ado, let us commence this day of intellectual exploration and shared knowledge by delving into the insightful talks presented by our esteemed invited speakers. Please join me in welcoming our esteemed speaker, Dr. Shashikant Bhatia. Dr. Shashikant Bhatia is Associate Professor in the Department of Microbial Engineering, College of Engineering, Konkuk University, South Korea. He has more than 10 years of experience in the area of bio-based metallization into bioplastic, bioenergy, and biochemicals. Dr. Bhatia has contributed extensively to the industrial press and served as an editorial board member and associate editor for several peer-reviewed journals, including Microbial Cell Factories. He has published more than 150 research and review articles on industrial biotechnology, bioenergy, production, biomaterials, biotransformation, microbial fermentation, and enzyme technology in international scientific peer-reviewed journals. He has edited 4 books and holds 12 international patents. He was selected to the top 2% scientists list of Stanford University. He has earned an MSc and a PhD in biotechnology at the Himachal Pradesh University. Dr. Bhatia has worked as a brain pool postdoc fellow at Konkuk University in South Korea. Ladies and gentlemen, let's give a warm welcome to Dr. Shashikant.
Hello. Yes, sir, you are audible. Very good morning. Good morning. So my PPT is visible? Yeah, it's visible. Okay. Okay. So can I start now? Please. Okay. Very good morning to all the participants. So I would like to thank organizing committee and Dr. Abhishek to give me opportunity to present in this conference. The topic of my talk is bioengineering for sustainable development. So this slide covers the content of my talk. I will talk in brief about the Sustainable Development Goal, need of bioengineering to meet the sustainable developments, and role of biochar in sustainable development, role of microbes, and how we can produce bioplastic. That is also a part of a sustainable development goal. So first of all, I just give a brief introduction about the sustainability. So what is sustainability? It is the ability to manage the process for a long time. It can be social, economic, and environmental. So in other words, you can say that it is the ability to meet our needs without compromising the resources that are required for our future generation. So in this agenda of 2030 Sustainable Development Goal, which is adopted by United Nations in 2015, so it provides a blueprint for peace, prosperity of people and the world. There are 17 different goals in this Sustainable Development Goal. So which involves ending of poverty with hand-to-hand strategy for education, improvement of health, protection of environment and climate changes, and protecting our ocean life. So why sustainable development goal is needed? So these once we able to achieve this goal, this will provide a good environment and good opportunity for all the pupils. This goal will shape the business, reduce poverty, and improve living standard. Achievement of this goal can create a better world for us, and everyone can contribute, small or big, but it will create an impact. So our research group is working on different types of sustainable goals. So one is the clean water and sanitation, and this sustainable goal agenda is to achieve universal access to safe and affordable drinking water, ensure access to adequate water sanitation and hygiene, and open defecation. So another goal on which we are working is affordable and clean energy. This agenda include ensure universal access to affordable, reliable, and modern energy services. Increase substantially the share of renewable energy in the global energy mix. Double the global rate of improvement in energy efficiency. Expand infrastructure and upgrade technology for supplying modern and sustainable energy service for all the developing countries. This is the another agenda, that is the responsible consumption and production, and this agenda includes achieve the sustainable management and efficient use of natural resources, responsible management of chemical and waste, substantially reduced waste generation through prevention, reduction, recycling, and reuse, encourage company to adopt sustainable practice and promote a universal understanding of sustainable lifestyle. So these are different sustainable goals on which our research group is working. So first off, a brief uh, introduction about all these works. So there are different type of biomass. I know most of people are aware about these type of biomass. There is forest biomass, agriculture biomass. Agriculture biomass is just the waste that is after the harvesting of crops left over, and food waste after the consumption of various food. There are various type of food waste left over, and there are other biomass like wood, grass. So all of you know that this type of biomass is used as a fodder for animals, to make furniture, and a raw material for the construction of buildings, and a energy source.
So all of you aware about these traditional uses of biomass. But as a researcher and scientist, we are exploring these biomass for the production of various valuable and commercially important products. So how we can transition these biomass into a valuable product? So this is the biomass, and it is mainly composed of three components, that is the lignin, cellulose, and hemicellulose. So we can use different type of bioprocesses like the thermal processes in which we can apply pyrolysis process. Pyrolysis is just like a combustion process, and but it involves higher temperature without the involvement of oxygen, and we can produce the product that is biochar. And biochar is a carbon-rich material, and it has porous structure. And syngas and bio-oil are the some side products. Syngas is mainly involve carbon monoxide and hydrogen, and it can be used as a energy source. Similarly, bio-oil is composed of hydrocarbon. After upgrading it, it can be also used as a biofuel. So using biological processes, we can also transform these lignocellulose in various important products like biomaterial, bioalcohol, biodiesel, biochemical, biohydrogen, biogas, and drop in oil. So this is the composition of the biomass. It is mainly composed of cellulose, which is the monomeric made of different monomer of glucose, and hemicellulose, which is made up of glucose and xylose, and lignin, which is composed of various of aromatic compounds. So cellulose is entrapped by all these type of polymers. So how we can produce biochar? So we can use pyrolyzer. It is a kind of machine which can provide higher temperature, more than 500 degrees Celsius and up to 1000 degrees Celsius. So when we provide high temperature, the biomass first volatile component vaporize, and it provide biomass a structure that is enriched of carbon, and it looks like this. Most of you have seen the charcoal, but this biochar is different from the charcoal because it is produced at a higher temperature, and it has high carbon content with less oxygen content. So it has different chemical groups on its surface that provide its various application. At microscopic level, how this biochar looks, you can see that is there are different types of biochar which are produced under the different condition. Rice husk biochar, you can see when it is produced with as a nitrogen with nitrogen gas, it's so different type of porous structure. When it is produced in carbon dioxide presence, it's so different type of structure. And there are other biochar, grape waste biochar, it have different structure. So it all properties of biochar depend upon the condition what we applied for its preparation and type of biomass. So different type of biochar can be produced using different biomass and different conditions. So this is the information about the biochar market. So major market is of this biochar in Asia Pacific region, followed by Northern America and European countries. So most of this biochar is used for electricity generation, in agriculture, and in other forestry products. And there is about 15.35% compound annual growth rate is noticed in this business, and it is predicted that in 2031 there is almost 6.37 billion market will be there for this biochar. So this biochar have different application. It can be used for mitigation of various greenhouse gases. It can be used as a adsorbent to remove the various pesticide, heavy metals, and antibiotics from the wastewater to treat the wastewater. It can used to improve the soil fertility, but it act as a very good material to improve the soil porosity. It help in growth of various microbes which are very important for the crops. This biochar can also be used as a material for the production of various energy producing device like microbial fuel cell and biohydrogen production. So as you have must listen about, there are some type
incidence of oil spill which is caused during the transportation and drilling. So you can see there are people trying to remove these petroleum oil spill, but it is very harmful to health of the worker. And you can see how these oil spill are affecting our aquatic life. So it's very important to deal these type of challenges, and biochar can also be a solution for these type of challenges. So one what we have done in our laboratory, it is uh, laboratory scale experiment. There are different type of biomass, and pine cone is one type of the biomass. We have pyrolyzed this biomass at high temperature at 700 degrees Celsius, and the biochar which is produced, it shows hydrophilic property. So when we applied it for treatment, it mostly sink down. So what we did, we just modified this biochar by applying another oil, that is the coconut oil. It is more hydrophobic. So when we mixed this biochar with this, we are able to produce a biochar which is more hydrophobic, and now it can swim on the surface of the water and it will not sink down. So as oil float on the surface of the water, so we need this type of material that can float on the surface and absorb the oil. So we have synthesized this type of material, and it can be used to remove the oil from the water. So these here you can see the microscopic structure of this biochar. The biochar which is produced at higher temperature is more porous, so it have good absorption capacity, and it is modified by using this coconut oil. You can see how these oils are entrapped inside the pore of this biochar, which make it more hydrophobic. So another similar type of application is use of biochar in antibiotics removal. So as all of you know, antibiotics are very important type of medicine that is used in our life to prevent various diseases. So, but most of the antibiotics are unmetabolized and then directly goes out in drainage system. So it's very important to remove the antibiotics from the wastewater. So we have produced different type of biochar using algal biomass. You can see the biochar which is produced at high temperature, that is 750 degrees Celsius. It shows very high adsorption capacity to remove the antibiotics. The antibiotic we have tested is the tetracycline. So the biochar which is produced at higher temperature is very porous, and it remove the tetracycline with higher capacity. Similarly, reaction temperature is also very important. So with the increase of temperature, it affects the solubility of the various component, and 40 degree Celsius is the best temperature for the removal of this antibiotic from the wastewater. These type of biomaterial can be reused. So once after the removal of antibiotics using some solvent, we can usually dissolve the antibiotics, and then we can again reapply this material for the removal of the antibiotics. So this material so almost 4 times reusability. So another use of biochar is it can be used as a catalyst for biodiesel production. Most of you know that these biodiesel are now very important issue to fulfill the energy demand. So there are a lot of cooking oil is produced in our house and other restaurant, but this main problem with the waste oil cooking oil disposal is we can't dispose it in open. When we dispose it in open, it form a layer in on the water and affect the aquatic life, and it is very hazardous to the health. So how we can convert this waste cooking oil into biodiesel? So we need to mix waste cooking oil with the ethanol, but it will not automatically produce the biodiesel. We need to catalyze some reaction, chemical reaction. So mostly acid and base chemicals are used to catalyze this reaction, but these chemicals are very harmful. So we have tried biochar based catalyst, and these catalysts can catalyze trans-esterification reaction, and we are able to produce biodiesel using biochar as a catalyst. So these produced biodiesel have very similar properties to the petrodiesel. It has the same ketone number, oxidation stability, kinematic viscosity, and density. So it can be directly used in as a fuel for any vehicles. So another application of biochar is as a electrode material.
So, as you know, we all of you know about battery. We use the batteries for to provide power for the various devices. Similarly to battery, there are another device that is the microbial fuel cell. In this device, we use microbes to produce the electricity. And there are two chambers like anodic chamber and cathodic chamber. In the anodic chamber, we used wastewater and or any type of organic matter. And what microbes do? Microbes oxidize these types of organic material and produce electrons and protons, and then uh, these electrons can complete the circle and produce the electricity, and along with production of electricity these devices are used for the wastewater treatment. So where we can use biochar in this device, we used biochar to prepare the electrodes. So here you can see in the figure, the top figure is showing the biochar as the electrode. There is no microbes, but when we add microbes, these microbes grow on this biochar. This biochar is very porous structure and it provide a surface for the attachment of the microbes. And microbial film formation is very important for the electricity production. So in the down figure, you can see how the microbes produce some nanowires, which are used by microbes to transfer electron from the cell surface to the electrode material. So this is the application of biochar in electrode material. So further, this is the one phase in which we are using some thermal and chemical method for the sustainable development. There is another phase where we use only the microbes for the transformation of various biomass for the production of the various products. So microbes can be bacteria, fungi, algae. These can be used or in the pure form or in the form of consortia. So what is consortia? It means mixture of bacteria with other fungi and algae, any type of bacteria and other organism. When mixed together, we called it consortia. So these type of microbes can be used to produce biochemicals, various bioactive compounds, antibiotics, and nutraceuticals. Various type of biomaterial can also be produced like polyhydroxyalconate, exopolysaccharide, polyamides, and these type of microbes can also be used to produce bioenergy from biomass like bioalcohol, biodiesel, biohydrogen, biogas, and biooil. So I'm not going to discuss about all the products. The major product which we are working on is the bioplastic. So with the evolution of human life, humans have developed various tools to make his life more comfortable and easy. And plastic is one of those products. And almost every product is now have plastic. So we can say now we are living in a plastic age. So this is the plastic production data since 1950. You can see there is almost 9,200 million tons of plastic has been produced till date. And out of this, around 5,300 million tons of plastic is just discarded in open, and only 700 million tons of plastic has been recycled. And still 2,900 million plastic is still in use, and about 1,000 million ton of plastic has been incinerated. So most of the discarded plastic run away and directly end in the ocean, where it is affecting our aquatic life. Sometimes animals and birds consume this plastic and then they get die. So what is the main challenge in plastic management? One is the economic challenge. The cost and production of the cost and sorting and recycling of plastic waste is very high. Other is the social challenge, because still we have not developed a mindset to how to segregate the various type of waste like plastic and other waste different ways. So there are other challenges with this plastic is it is resistant to biodegradation, and there are insufficient recycling facility available. So incineration of this plastic release toxic gases, which is also a health hazard. So there is time to shift on
bioplastic due to some other reason also, like fluctuation of petroleum price, limited fossil-based resources, and some other political issue. So due to some political issue, there are continuously up and downs in various fossil-based resource prices. So we need to find the alternate of all these resources. So why polyhydroxyalconate? So polyhydroxyalconate is considered an alternative to various plastics. So what is the polyhydroxyalconate? Polyhydroxyalconate is a polymer. It is produced by microorganisms through the fermentation. Microbes produce this material for themselves as a energy storage material. There are about 150 different types of monomeric units that can be used to produce different type of polymers have been already reported. So this biopolymer, that is polyhydroxyalconate, is completely biodegradable and it follows the closed loop PHA cycle. It means we can easily produce this PHA using the microbial fermentation technology, using the renewable feedstock, and once we produce this bioplastic, we can produce different type of product, and after using the product we can discard it and then it automatically decomposed in the soil, and it release carbon dioxide, carbon monoxide, and methane, which can be again captured and used as a carbon source for the feeding of various microbes to again produce the PHA. So it can follow the PHA loop cycle. So it can be easily recycled again and again. So how microbes can produce the PHA? All of you may be thinking how a tiny microbe can produce this type of plastic. So polysaccharide, it can be a different type of polymer like starch and protein. So microbes are not able to uh, hello. कौन सी स्लाइड में कौन से ठीक है ओके 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 so so how we can produce this type of PHA? So microbes are able to utilize different types of biomass. So polysaccharide, which is a polymer like starch, glycogen, and another type of polymer like protein. So microbes are not able to directly consume these type of polysaccharide. We need to break down, like just we eat something, so we just need to break down to uh, digest that food properly. So similarly, microbes also need small digested particles. So we need some pre-treatment method to convert this polysaccharide material to free sugar, and then microbes utilize this free sugar and metabolize through glycolysis and other pathway and produce the acetyl coenzyme A and other material like lipids. This also utilized by microbes through the beta oxidation pathway to produce the acetyl coenzyme A, which is the basic subunit for the polyhydroxyalconate production. So when there is plenty of a carbon source and nitrogen source, microbes just grow. They don't produce this type of material. But when we manipulate the condition, means we provide excess of carbon source and limit the nitrogen source, bacteria starts to regulate their genes and synthesize various proteins and enzymes which are involved in the production of this material. So when these type of conditions are maintained, so microbes start to accumulate this white circle. You can see these white types of circle are representing the bioplastic, that is the PHA inside the cell. So once again we provide the favorable condition, microbes start to produce various types of enzyme which can use this polyhydroxyalconate as a carbon source for growth. So basically microbes produce this type of PHA for their own purpose. As we store food for during the starvation and some other season, we store different types of food for our purpose. Similarly, microbes also store food inside of themselves. So but so when there is a
again favorable condition provided, microbes start to consume these product and again start to grow. So this is the picture that is showing how this is the real picture. So how this PHA is stored inside the microbe. You can see there are white granules which are tightly packed inside the microbes. So we need to extract these type of granules from the microbes. So there are different types of application related to polyhydroxyalkonates. These polyhydroxyalkonate are different types, short chain length and medium chain length, which depend upon the carbon chain length. They have different application. These are used for in industrial purpose, for the food packaging, preparation of textile fabrics, wood, plastic composites. In agriculture, it is hello. हेलो हाँ अभिषेक वन मिनट hello, am I audible now? Hello. Hello. Okay, so finally, I think there is some technical issue. So I just going to my last slide. So this is the picture of microbes, how they accumulate polyhydroxyalkonate inside the cell. So like human beings, microbes also have different preference for the different carbon source. Like microbes, when fed with glucose, they are very small in size and there are less PHA is accumulated inside the cell. And when galactose is used, some cells grow very big and they produce a large amount of PHA. So this type of you can see microbes have different preference for different type of carbon source, like just like human beings. So I'm just going to conclude. So these are the different products which are produced by our group with the some company. So we have produced some food packaging material and a different material like toothbrush and container for the cosmetic products, water bottle. These are
product which are based on microbial polyhydroxyalconate. So this is the conclusion of my presentation. Using bioengineering, we can achieve various sustainable goals. Biochar is an inexpensive and easy to produce material with plenty of application in environmental science and renewable energy. Microbial technology also play a great role in achieving sustainable goals. These can be used in wastewater treatment, sustainable production of biochemical, biomaterial, and bioenergy. Interdisciplinary science collaboration is important to achieve the sustainable goal and make this world clean and green for our coming generation. So this is our research group. We have almost 10 master student and 5 PhD student and 2 postdoc students. So we have a very big group which are working on different projects. So finally, I would like to thank all the participant and listener and organizing committee and Dr. Abhishek to provide me opportunity to present in this conference. If you have any question, you can just leave me email on my email ID. Yeah. So thank you. I think there is some technical issue. So thank you for your kind attention. Hello. Hello. So I think we are not able to hear. There is some technical issue. So if anyone have any question, just leave a email to me. Thank you, everyone. Thank you once again.
We are blessed to have some such good students. Dr. Naveen Chauhan is Associate Professor, Computer Science and Engineering, NIT Hamirpur. He has to his credit PhD in Computer Science and Engineering from NIT Hamirpur. His research interests include mobile wireless networks with special emphasis towards mobile ad hoc networks, sensor networks, vehicular ad hoc networks, Internet of Things, Internet of Vehicles, and their security aspects. He has excellent research contributions in these areas and has published research articles in large number of journals, including SCI and Scopus Index journals. He has his PhD students, 35 MTech theses, and approximately 70 BTech projects. Dr. Chauhan is revered for various journals of national and international repute. He has also handled few externally sponsored R&D projects in the field of mobile computing, wireless networks, and information security. Presently, he is rendering his services as head, Department of Computer Science and Engineering, NIT Hamirpur. Prior to this, he has handled the responsibilities of Associate Dean, Research Projects, Collaborations and Startup, and Nodal Officer, IIIT Pune. Distinguished guests, let's give a warm welcome to Dr. Naveen Chauhan. Good morning, all. So good morning all once again, and before I'll start with my discussion on the topic, I would like to thank Professor Monga, Principal Director, GHEC Bilaspur, Professor Rajesh Kumar, MGC Theory, Principal Director, Professor Bansal Rajiv Jolly, Engineering College, Nagro, and my friend, Professor Ginhouse, for giving me the opportunity to interact with you all during this conference on recent trends in engineering, science, and technology. So basically, before we start deliberating on my part of discussions, why I'm here is basically to interact with your faculties and to interact with you all over here, right? So my basic purpose is to motivate you. I know how much of you are in the field of electronics and computer science, but definitely this is one of the areas where exactly we'll have to, being an engineer of any field, whether from civil engineering, electrical engineering, or any other field. But nowadays the buzzword is of artificial intelligence, basically. So as far as my research area is concerned, definitely I do work in wireless networks, but with the pressure of AI and all, definitely we are trying to find out some kind of application where exactly we can employ and deploy the artificial intelligence in our specific areas in which we are working. So being a student of undergraduate classes over here in this particular college,
I would like to motivate you to work upon these technologies, and maybe probably our objective should not be only to do the engineering and get the certificates and all, but definitely we'll have to find out around ourselves n number of problems are there on which we can work upon and find out the solution, being the technical students of a prestigious engineering college of Himachal Pradesh. So I would like to give you a brief introduction that from where I exactly belong. I belong from NIT Hamirpur, from Department of Computer Science Engineering. And as far as the facilities, what we do have, and the different programs, we run the program of BTech Computer Science and Engineering, that as you are doing the BTech in different disciplines. BTech 4-year program with an intake of 120 students in Computer Science and Engineering. Apart from that, the dual degree 5-year integrated program in Computer Science and Engineering, where the students used to get the MTech and BTech degrees. I mean, it's a 5-year course basically. And apart from that, MTech in Artificial Intelligence and Computer Science and Engineering with an intake of 25 students each. I mean, Computer Science and Engineering and the AI, there are two fields which we used to run. And apart from that, we also run the PhD program in Computer Science and Engineering with approximately the number of students at present, we do have 30 number of students. And we do have excellent facilities for research and doing all other things. So this is just the brief about my area or my department basically at NIT Hamirpur. So एक पर्पस तो ये है कि आप लोग कहीं ना कहीं यहाँ से ग्रेजुएशन, and I come to know that you have started with BTech in Artificial Intelligence and Data Sciences. That means you have taken a lead basically. We have not started as such BTech program in AI, nor in data sciences, but definitely as I was talking with your director and Professor Vinay, that you have taken a lead, and it's a good thing to start with the newer technologies like artificial intelligence and data sciences. So I would like to congratulate the administration for this particular initiative. Coming to my area of concern, that why do we need the technology interventions, that agriculture. So before that, my topic was smart agriculture for sustainable future, harnessing the IoT and AI technologies for greater yield, for better yield in terms of the agriculture and kind of things. So these are some of the facts which are in front of you, that according to the Food and Agriculture Organization, the global population is going to reach approximately 9.2 billion by 2050, and climate change, shrinking land, labor shortage, and water has put immense pressure on agriculture sector. That means the resources, what we do have, resources in terms of the climate change, not exactly the resources, but the climate change is one of the responsible factor in it. Shrinking land, we do have the limited land, which can be used for the agriculture purpose. Labor shortage is another thing. Water has put an immense pressure on agriculture sector. So producing more with the fewer resources is challenging with the technology intervention. So definitely, being a most populated country in the world, definitely one of the biggest challenge for the governments, for everybody of us, is to yield more of yield from the agriculture, basically, in order to feed our people. So that should be the motivation. हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशंस, ये सब हम लोगों ने सुना है, और मेरे ख्याल से आपने किताबों में पढ़ा भी होगा, 10th, 12th, 11th, और अपने स्कूल क्लासेस में पढ़ा होगा. लेकिन what exactly we now want? We want that the yield should be with limited resources like land and water. We should be able to gain more out of it with limited resources. So इस चीज में क्या चीज हेल्प कर सकती है हमारी? The newer technologies like IoT, like AI, artificial intelligence, Internet of Things are some of the things which can exactly help us in getting more yield out of the agriculture. So with the help of this, we'll
will coin one particular term which is known as the precision farming. Precision farming अगर आप लोगों ने सुना होगा तो जैसे मैंने अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया कि स्टार्ट किया भूमिका बांधी अपनी टॉक की. So what exactly is precision farming? The technique of applying the right amount of input, the fertilizers, pesticides, water, etc. at the right location, at the right time. For what? For what? To enhance the production, to decrease the input supply, improve the quality of the product, and to protect the environment. So this is basically the technologies, what we are harnessing, the Internet of Things. Internet of Things, what exactly is the Internet of Things? We'll just see what exactly and how we can improve upon these particular things to enhance the production, to decrease the input supply, to improve the quality of the product, and protect the environment kind of thing. Apart from that, the precision farming we have just seen, and apart from that, smart farming is what exactly do we need? That right amount of thing at the right time of placement we are going to deploy. So smart farming refers to the use of the ICT technologies to enhance the agricultural productivity and the sustainability. So from the figure, if you just see this particular figure, which is drawn over here, that more crop per drop. That means, as I've said, the limited resources in terms of the water. So we want that every drop of the water should be utilized properly by employing the techniques of IoT and AI. Data-driven solutions should be there. Reduced input. What exactly is the input for us? The reduced input is in terms of that the right amount of fertilizer should be placed in the agriculture, and right amount of water should be given to the agricultural field. Likewise, continuous monitoring. How exactly we can continuously monitor the agriculture, basically with the employment of IoT kind of technology. So technology-driven architecture, precision farming are the one of the key area. Greater focus is on the Internet of Things, AI, and aligned technologies. So what exactly should be the process in order to capture all these things? First is acquiring the data. The data related to the agricultural field we are going to acquire with the help of the sensors. That how much moisture is there in the fields, how much water exactly is required in the field. So acquiring the data in terms of the growth of the agricultural field. Then accessing the data is the next step. How we are going to access the data, and whatever data is accessed, how we are going to make the decisions depending upon the acquired data. Right now, the age, what we call the industrial age and kind of things, right now what we are crossing through is the information age basically. So information age is directly related to the data, isn't it? Data. And in this particular section of students and faculties, we are generating humongous data. Large amount of data is going to be generated. But how we are generating the data basically? How we are generating the data? Data is going to generate it with the help of our mobile phones, isn't it? You take 100 of pictures in a day, where it is going. So this is going to be placed somewhere. We'll have to talk about placement of this particular information in a right or exact manner so that it can be of use. अब मैं यहाँ पे एक particular section में जाना चाहता हूँ कि हम लोग 5G टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं. 5G टेक्नोलॉजीज इतना ज्यादा, अभी आप लोगों ने सुना होगा कि लास्ट ईयर 2022 में 5G लॉन्च कर दिया प्राइम मिनिस्टर ने. फॉर व्हाट पर्पस दिस 5G इज? क्या पर्पस है? या एज ए कॉमन यूजर मैं 5G का क्या यूज कर रहा हूँ? मोस्ट लाइकली विद इन अ ईयर द गवर्नमेंट इज गोइंग टू लॉन्च द 6G आल्सो. बट क्या कर रहे हैं हम उस चीज का? कुछ प्रॉपर यूसेज है? YouTube videos हम लोग देखते हैं, that is for the right thing, in order to learn the technologies and kind of thing. But the emphasis of the government is over here. I want to tell you that 5G उसलिए नहीं है कि आप लोग Facebook और उन सारी चीजों में indulge बहुत ज्यादा रहे. सोशल मीडिया के साथ आप लोग कनेक्ट रहना चाहिए. Everybody wants to be connected
throughout the world through these social media platforms. But the basic idea behind all these communication technologies is to for the betterment of some specific areas. So let us say the example of healthcare. अब healthcare में हमारे पास healthcare अगर domain करें, हालांकि कहने के लिए हमारे पास I mean उसमें pros and cons और उसके negative और उसमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन एक छोटी सी state है हिमाचल प्रदेश, जहाँ पे 12 districts हैं और I think 8 medical colleges हैं. तो अगर देखा जाए तो on that basis we'll say that the healthcare conditions are very good in the state. But अगर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके देख लो, क्या वहां पे लाइंस नहीं है? आप पीजीआई चंडीगढ़, हम आज से बाद में आपके एडजॉइनिंग एम्स बिलासपुर है, थोड़ा सा बेटर हो गई है फैसिलिटी, क्योंकि मुझे भी जाने का मौका मिला है बिलासपुर में. लेकिन अगर मैं 5 साल पहले की बात करूं और पीजीआई चंडीगढ़ के लिए मुझे जाना पड़े, तो रात को 1:30 बजे लोग वहां पे लाइन लगाना शुरू कर देते हैं मेडिकल कॉलेजेस. So, अगर 5G टेक्नोलॉजीज की मैं बात करूं और 6G टेक्नोलॉजीज की मैं बात करूं, तो वो उसलिए नहीं है कि आप सोशल मीडिया पे वो करो, लेकिन बीइंग ए टेक्नोक्रेट, बीइंग एन बडिंग इंजीनियर, यू शुड कम आउट विद सर्टेन सॉल्यूशंस. अगर मैं एम्फेसिस करूं, और सम ऑफ यू माइट हैव आल्सो got an opportunity to attend the inaugural of Indian Mobile Congress, where in 2022 I was fortunate enough to see that particular inauguration of 5G at Delhi. So वहाँ पे emphasis है कि healthcare conditions country में कैसे better हो, कैसे healthcare area कैसे better हो, क्योंकि resources, अगर मैं resources की यहाँ पे बात करता हूँ, तो resources हैं आपके doctors, आपका paramedical staff, आपका insurance companies, और n number of stakeholders are there, and we being the common people are also the stakeholders over there. लेकिन जैसे ही हमें टेक्नोक्रेट और टेक्निकल फील्ड्स के एक बड़े इंजीनियर्स की बात करता हूं, तो कहीं ना कहीं हम लाइन में खड़े होकर वहां पे सॉल्यूशंस का सोचना चाहिए बेसिकली, कि हाउ वी कैन बेटर प्रोवाइड द सॉल्यूशन. अब उसी तरह से मैं अपनी वाली फील्ड पे यहाँ पे जिसमें मैं टॉक देने के लिए आया हूँ, एग्रीकल्चर फील्ड में आना चाहूंगा. एम्फेसिस इज टू empower your agriculturist, your florist, to empower with these technologies. क्योंकि आज वो टाइम चला गया है जब हम लोग कम पढ़े लिखे एग्रीकल्चरिस्ट की बात करते हैं. पढ़ा लिखा हर एक कोई है, अगर कोई 10वीं पास भी है तो मतलब अगर छोटे बच्चों की भी बात करें, they can handle mobile phones very precisely, और आई थिंक जितना हम लोग नहीं यूज करते उससे ज्यादा बेटर वो यूज कर सकते हैं. तो टेक्नोलॉजी इज यूजर फ्रेंडली बेसिकली, राइट. तो ये दो एरियाज हैं, हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर, जहां पे कि गवर्नमेंट का भी एम्फेसिस है, और हाउ बेटर वी कैन प्रोवाइड द सॉल्यूशन फॉर ऑल दीज थिंग्स. सो एक्वायरिंग द डाटा, एक्सेसिंग द डाटा, मेकिंग डिसीजन एंड टेकिंग एक्शंस. व्हाट आई एम टेलिंग यू, एक्वायरिंग द डाटा की आपकी फील्ड से किस तरह का डाटा आ रहा है, उस तरह को उस फील्ड को कैसे कैप्चर एक्वायर किया जा रहा है, और कैसे डिसीजन मेकिंग में उसकी हेल्प ली जा रही है. और डिसीजन मेकिंग में मतलब ये कि पिछले 25 सालों का आपके पास डाटा है, कब बारिश हुई, कितनी बारिश हुई, कितनी आपको पानी की जरूरत है, कितना फर्टिलाइजर की जरूरत है, वो सारे मेकिंग डिसीजंस के काम में आएंगे. और वहां पे कौन सी टेक्नोलॉजी, ये जो पर्टिकुलर फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं, एक्वायरिंग द डाटा और एक्सेसिंग द डाटा, वहां पे आईओटी का रोल है, क्योंकि यू आर गोइंग टू डिप्लॉय सम सेंसर्स, और उन सेंसर्स के थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन, आपका डाटा कैप्चर हो रहा है. And whereas these two decisions, making decisions and taking decisions, over here your artificial intelligence is going to play a major role over there. Some of the key enabling technologies in smart farming are Internet of Technologies, Big Data Analytics, Artificial Intelligence, Robotics and Cloud Computing. मेरे ख्याल से इसमें बहुत ज्यादा डेव होने की जरूरत नहीं है. बेसिकली मेरा पर्पस आपको ये बताना है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को सॉल्यूशंस की बात करनी पड़ेगी, either with these technologies or your allied areas. So supposingly कोई electrical engineering का student यहाँ पे बैठा है, तो how we can employ all these technologies in order to give the better solutions. Like electrical वालों के लिए सबसे बड़ा आज की डेट में कौन सा एरिया है काम करने के लिए? इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन सदियों से होती आ रही है, और पावर जनरेशन में हम लोग काफी आगे हैं. हाइड्रो पावर जनरेशन में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, एग्जैक्टली
इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं या नहीं है? न्यूज़पेपर पढ़ते हो? हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का मेन एम्फेसिस है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को ज्यादा से ज्यादा पुश करना। तो अल्टीमेटली अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को हम लोग पुश कर रहे हैं तो आपका एक रिसर्च एरिया डेफिनेटली होना चाहिए, आइदर थ्रू योर मेजर प्रोजेक्ट्स और थ्रू योर डिसर्टेशन और समथिंग लाइक दैट, योर प्रोजेक्ट्स की हम किस तरह के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाए, नॉट ओनली दीस टेक्नोलॉजीज। मैं इसमें काम कर रहा हूँ, मैं इस एरिया का आदमी हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि जस्ट आई एम जस्ट गिविंग यू ओके। Data in 21st century is the oil what used to be there in 18th century. Oil का बहुत ज़्यादा shortage, मतलब scarcity थी और resources थे, but now data is having the same in 21st century. So data analysis identifies the potential risks and vulnerabilities in agriculture field and helps in making the strategic actions plans. So data collection, big data and AI, as I've already told you. So this is basically this particular picture is giving you an idea about how agriculturists can actually be made aware of all these technologies, like crops, like your livestock, like your greenhouses, farm machinery and storage, etc. ये वाला पर्टिकुलर पार्ट तो आज की डेट में भी हो रहा है और ट्रेडिशनल बेस से हो रहा है। क्रॉप्स को उगाने का काम, लाइफ स्टॉक्स जो आपका एनिमल हस्बेंड्री और ये सारी पोल्ट्री और ये सारी चीजें, ग्रीन हाउसेस, फार्म मशीनरी, स्टोरेज एंड एक्सेट्रा। बट विद द हेल्प ऑफ IoT, जो मेरा मेन क्रक्स है IoT और AI से, IoT gateway would be there, and ultimately all these information about the crops, about the livestock, about the greenhouses, about the farm machinery, about the storage, etc. We are going to place it on the cloud. ये सारी इंफॉर्मेशन हमने क्लाउड में डाल दी, लेकिन एक पार्ट तो रहा कि आपने स्टोरेज डाल दी, लेकिन कहाँ पे उसके बेटर डिसीजन मेकिंग में कहाँ पे काम आ रहा है। सो ये सारे स्टेज जो है, डाटा इंजेक्शन, डाटा प्री प्रोसेसिंग, ML मॉडलिंग, ML मॉडल बिल्डिंग, ML इवैल्यूएशन एंड model deployment, all these things are going to help you in taking the better decisions. ये सारा, ये वाला पर्टिकुलर पार्ट आपका हमेशा से था, हमेशा से ये रहेगा भी आगे, लेकिन विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आप क्रॉप्स में डिफरेंट सेंसर्स की बात करते हैं हम कि कितना किस चीज की जरूरत है, दैट इज गोइंग टू बी कैप्चर्ड विद द IoT। लाइफ स्टॉक्स में लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट, लाइक डेयरी एंड पोल्ट्री काइंड ऑफ थिंग्स, ग्रीन हाउसेस में कितना टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, ये सारा सेंसर्स के थ्रू हो रहा है। एंड अल्टीमेटली वी आर प्लेसिंग इट ऑन द क्लाउड, ऑन द सर्वर्स, एंड over here, being a computer scientist or being a electronics people, we need to work upon these particular areas in order to develop more number of algorithms and latest algorithms, so that with the help of notification and to give the information to the end user, ultimately will be giving the precise information to these stakeholders कि कैसे हम लोग इन एल्गोरिथम्स का यूज करके बेटर डिसीजन मेकिंग में उनको हेल्प कर पाएंगे। What the idea? So Internet of Things, I'll not go word by word, but definitely one of the definition which is given by the Gartner's research. According to it, the Internet of Things is a network of physical objects that contain the embedded technology to communicate and sense to interact with their internal states or external environment. So everything is going to be attached with some IP address. Every electronic device, the physical objects which has been written over here, is contained by the embedded technology to communicate. Communication एक major purpose है, और communication में ही वो 5G और 6G की बात करते हैं हम। Communication ही है basically. How we can harness in order to improve these particular areas. So these are again data acquisition. I know it is not going to the earlier slide, but definitely to the object layer, we do have crops, livestock, agricultural machineries. Perceptive layer talks about the different kind of sensors, like your agricultural sensors, GNSS, GIS. Then these technologies, you might have heard about the Bluetooth सारे लोग हम लोग यूज करते हैं।
सो ये कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट लेयर की अगर हम कुछ कैप्चर कर रहे हैं डाटा, वो कैसे हाउ इट इज गोइंग टू बी ट्रांसमिटेड टू द अदर पार्टीज, कैसे हम लोग ट्रांसमिट करेंगे थ्रू दीज टेक्नोलॉजीज, पैन नेटवर्क्स, पर्सनल एरिया नेटवर्क्स। पर्सनल एरिया नेटवर्क जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी करते हो ना, अपने फोन से दूसरे फोन के साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी करिए या स्पीकर के साथ कनेक्टिविटी करिए, these are all part of your personal area network. So with the help of Bluetooth, radio frequency, Zigbee, all these technologies, LAN and WAN, which consists of your 4G and 5G. तो हम लेयर्स की तरह बात करते हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट लेयर हो गया, ये परसेप्टिव लेयर हो गया, ये ट्रांसपोर्ट लेयर हो गया, then you have the application layer, where exactly I'm specifically talking about the agricultural area, like your planting, gardening, breeding, and associated cloud applications are also there. So this is there, and as a user layer, you are having agriculture producer, system manager, and end user. See, these are some of the sensors which I'll just be letting you know about. These some of the sensors which can actually be deployed in the fields in order to capture the data, like your Arduino boards are there, BeagleBone, gas sensors, Raspberry Pi, DHT, digital temperature and humidity sensors, pH sensor, Jetson Nano, ultrasonic sensors, and water level sensors. These are all sensors which can exactly, or which are exactly the part of your internet technologies. Some of like your some of the boards like your Raspberry Pi or just Jetson Nano are completely a computer on a board. This is a small component. Raspberry Pi and Jetson Nano, these are the small components through which you can program them and accordingly can use them for some specific purpose. So this is just to give you an idea. Okay. So this is the programming of IoT devices, that how we are going to program the IoT devices. Like as I've already told you that some of these chips or some of these modules are programmable modules basically. For example, the Arduino, where exactly the scripts in the Arduino boards are written in C and C++. Raspberry Pi are preloaded with Python and supports other languages as well. And BeagleBone is the most compatible with C++ and Python, and multi-language supports are there. और ये multi-language support किस लिए है? Multi-language support इसलिए कि आप specific, क्योंकि मैं agriculture की बात कर रहा हूँ, तो ये नहीं हो सकता कि आप सारे लोग agriculture की बात करें. Everybody does have certain applications in their mind. So accordingly, they can reprogram them according to their requirement, according to their applications. कुछ चीजें मैं skip करना चाहूँगा. Data generation in big data basically we talks about the 4 B's. अगर big data means अगर हम इस जैसे terminology की बात करते हैं तो big data means large, huge amount of data which we are generating. So here we used to talk about the 4 B's. One is the volume, which is the size of the data. Another is the variety, the different kind of data is generated. Veracity, the trustworthiness of the data. और ये बहुत important है. हम लोग trustworthiness of the data की बात करते हैं, लेकिन आज की डेट में everybody is known to this particular fact कि कोई अगर आपके लिंक में कोई SMS में लिंक भी आ जाए तो उसको दबाने से थोड़ा हिचकिचाहट होती है ना. क्यों होती है? क्योंकि we are not trusting that particular data or the information. Who is exactly generating that particular information? Unless, और ये करना भी चाहिए कि जब तक आपको सोर्स के बारे में पता नहीं है, इन सारी चीजों को अवॉइड करना चाहिए. There are a lot of issues. आज की डेट में आप लोग अपनी ऑनलाइन परचेजेस हर एक बच्चे करते हैं. आप तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स और 9th 10th के बच्चे आजकल ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं. कार्ड्स की इंफॉर्मेशन, आपकी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इन फोन्स में है. एंड इफ सम ऑफ द एप्लीकेशन इज गेटिंग योर डेटा, जैसे आज की डेट में हम लोग ये कहते हैं कि मोबाइल फोन सुन रहा है आपकी बात. कहते हैं नहीं कहते? सुन रहा है. इट इज कैप्चरिंग व्हाट यू आर सेइंग. वो जमाना छोड़ दो जब हम लोग गूगल पे कुछ सर्च करते थे एंड अकॉर्डिंगली यू आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन ऑन द सेम थिंग एन नंबर ऑफ टाइम्स. ऐसा होता था ना कि हम कुछ सर्च करना शुरू करें और उसी के बारे में आपकी इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है. नाउअडेज
The time is that this phone is listening everybody of us. कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं, which things we are interested in. So ये सारा AI और ML मॉडल की वजह से, जिसकी वजह से वो try to predict what exactly your requirements are. So veracity, that is the trustworthiness of the data, and the velocity is velocity, the speed at which we are generating the data. कुछ ले सकते हैं 5-7 मिनट. So traditional analytics and big data analytics focuses on descriptive analysis and diagnosis analysis, predictive analysis, data structure, data sets, supports. There is basically this slide. I'll just give this particular slides to your coordinators, and then accordingly. IoT and big data interrelation. So each sensor pushes data every second, and the accumulation of the data will be huge. And data from the IoT devices are then collected to the cloud for the analysis purpose. This is the cloud computing. Ultimately, we are in order to keep everything on your devices. Ultimately, one of the technology which can employ is the cloud technology. So these are some of the associated things. So I'll just skip this particular part. Artificial intelligence is definitely one of the things where exactly intelligent solutions we want to build the intelligent solutions in terms of the agricultural field. Simple alert could be given to the agriculturalist. Data analysis. Once you've done the data analysis, ultimately the refined information is going to be given to the ultimate stakeholders, and we do have the advanced ML analysis accordingly for the real-time predictive analysis of the things. This is I know it is creating some problem. So intelligent solutions, these are some of the things which we have already discussed. देखिए वो ज़माना चला गया जो हम लोग टाइप करते थे, and ultimately recommendations are going to happen. Machine learning कैसे काम करती है? Ultimately, there is a difference between the human learning and the machine learning papers. So that's why we used to talk about the data sets. In order to train a machine, what exactly we require is that n number of examples should be given to the example in order to identify or in order to distinguish the things. Whereas the human learning, आप लोगों ने शुरू से सीखा है, आपके पेरेंट्स ने, हम लोगों ने, टीचर्स ने सिखाया कि आपको ये चीज है तो ये है. लेकिन ultimately machines को जब train करना है, so ultimately we'll have to. So these are what exactly machine learning is. We are going to give some data, develop model, train model, test, analysis, and ultimately retraining is also required over there. Retraining in order to get the exact things. अगर आप कुछ डेटा सेट किसी तरह का ले लेते हो और ट्रेनिंग प्रॉपर्ली नहीं हुई है, then ultimately you are not going to land up at some exact results or close to the realistic results. But ultimately training or retraining की वजह से ultimately machines are going to learn. That's why we call it as the artificial intelligence. Retraining की वजह से वो close to what you can say, close to the realistic terms you can always. So deep learning is another area where exactly apart from the machine learning, we do have the deep learning where object identification and the kind of applications we exactly require over there is the image processing and all. With the deep learning कहाँ भी use हो सकती है ultimately. अगर हम areas की बात करें तो different areas can be closely related with the deep learning, but image processing is what exactly I can find out solution in the agricultural area basically. These are some of the tools and software for the agricultural automations, right from your MATLAB, which is software, which is basically the simulation tool. And apart from that, whatever has been written
Hello. 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 Are you able to hear me? Hello. We are available to you, sir. Hello. Hello. Can you hear us, sir? Yeah. I'm able to hear you now. Yeah. Thank Can you, we sir. start? Please, sir. Let me start your introduction. Let me give your introduction to our offline and online audience sir, first. Uh, Good morning, sir. Am I audible, sir? Yeah. Your voice is breaking, but yeah. Please go ahead. Hello. So next speaker is Dr. Punta Chandrasekhar, sir. He is currently Chief Coordinating Officer, Ministry of Education, AICTE, New Delhi. He is also CEO and Director, Anuvandri Foundation. Anuvandri is a app, Indian language translation tool, which is being created by Sir. He is a member of National Instructional Media Institute, NIMI, National Digital Education Architecture, National Educational Technology Forum, University Grant Commission Skill Council, National High Power Committee of Indian Languages. He is an advisor of NCCT, Ministry of Cooperation, New Delhi Management Institute, Andhra Pradesh State Skill Development Corporation. His interest includes artificial intelligence, machine learning, deep learning, cybersecurity, blockchain, complex business intelligence, big data, and Internet of Things. His academic achievements from Savitri Bhai Phule University, Pune, and excellence at the University of Maryland speak volumes. His contribution to esteemed companies such as Cognizant Technology, CBase System, and Faces, Primex Technology, CHF International, showcase his remarkable career. Now, sir, I welcome you uh, as a speaker on our first international conference, Recent Trend in Engineering and Science Technology, to share your in-depth knowledge and key points on the topic emerging technologies, AI and ML. So, am I audible, sir? Over to you, sir. You Yeah. may please Thank you start. very much. Namaste to all. And what a wonderful day, because our country is marching towards from a developing nation to a developed nation. And we are very fortunate under Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. Our country is not only growing within our country, we are becoming a Vishwaguru, and serving the entire world. So having said that, is a very important, very interesting topic. And first of all, I would like to thank Government Hydro Engineering College, Bilaspur, Himachal Pradesh, for conducting and helping for this international conference on recent trends in engineering, science, and technology. As you see, I'm a technologist. I code even today. Okay, we creating our own lot of very interesting applications. So one of the application is the language translation tool, because as you know, there are a lot of components like Chat GPT, etc. Which is a foreign based. So we have created a tool called Anuvadini. You can Google it, you will get it. It's an extraordinary Indian language based tool. Example, let's say you can simply say that, the students, Indian students are playing very near seashore. Okay, in Hindi. It creates an image for you. Okay, and you can give any kind of a textual format or a voice based commands in Indian languages, or Bharati languages, what I prefer to call, and it translates into an image. Example, that's one of the sample. The other one, let's say you have a book or you want to write a book, you can use Anuvadini Chutki and you can translate instantly without even touching a button. You can translate the entire book, and you can write a new book as it is, including formulas, including tables, font face, font size, extraordinary capabilities we have in that tool.
So I will slowly, move towards the other ones, but I would like to quickly show you Anuvadini for 5 minutes and move towards the other windows. Please let me know, are you able to see my screen or not? Not yet, sir. Okay. देखिए अभी आपको आ रहा screen? Yes. Okay. Yes, So sir. if you see, I mean, do you guys prefer Hindi or English? Mix. Anything, sir. Okay. तो चलिए हमारा मातृभाषा में हिंदी में बात करें. मेरा मातृभाषा तेलुगु है, बट फिर भी देखिए ये हमारा मेड इन इंडिया हमारा खुद का टूल है. ये टूल में क्या होगा, जब आप अनुवादनी करके सर्च करेंगे गूगल में, आपको ऐसा एक टूल आपको वेबसाइट दिख जाएगा. इसमें पहले समझिए आपको एक नया बुक लिखना चाहते हो तो आपको ये चुटकी करके, छोटा भी में एक छोटा सा कैरेक्टर रहता है, ऐसा भी ऐसा करेंगे उसको चुटकी बोलते हैं ना. तो आप एक बुक लिखना चाहते हो, नहीं तो एक ब्लॉग लिखना चाहते हो, एक कोर्स का कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो, आपको क्या करना है, चुटकी पे जाना. जब चुटकी पे जाएंगे ये डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड पूछ लेगा. You can write it in any language, Assami, Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Tamil, Urdu, Arabic, Chinese, French, German, Italian, Japanese, Korean, Malay, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, Urdu, Vietnam, Thai, Hebrew, Swedish, Dutch, Nepali. You can write it in any language. Are you able to hear me? Hello? 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 Are you able to hear me? Hello? Hello? Are you able to hear me? Hello? Yeah, Himanshu ji, are you able to hear me? Oh, audio stopped. 1 second. I think I need to do something then. Just give me a minute. नहीं 1 मिनट रुकिए. आई थिंक मेरा साइड से करना है. 1 मिनट. मुझे समझ में आ गया क्या प्रॉब्लम है. आई नीड टू नो बिकॉज आई एम नॉट शेयरिंग यार, दैट्स द रीजन. 1 सेकेंड. अरे बाबा मैं शेयर बंद कर दिया ना. रुको लेट मी शेयर. जस्ट गिव मी. आई थिंक आई नीड टू. Now I think your mic is working. Sir की तरफ से problem. Okay, are you able to hear me now? Yes, sir. You are audible now. Okay. अब देखिए. Yes, quite audible. Okay. So what you do is you will click on this chutki. So once you click on that chutki, it will open up something. I think I'm switching. That may be the reason. 1 second. कौन सा शेयर किया याद नहीं अभी. Should be promoted. आई थिंक मुझे लग रहा है ये चुटकी पे जाने के बाद ये. आर यू एबल टू हियर मी नाउ? Yes, sir. ओके. देखिए मैं इंग्लिश से अभी ये एक इंग्लिश हिंदी में बुक लिखूंगा. एंड प्लीज कीप इन माइंड आई एम अ साउथ इंडियन, मुझे हिंदी लिखना नहीं आता. तो देखिए मैं कैसा लिखता हूँ. एग्जाम्पल आपके पास कुछ कंटेंट है तो आप ऐसा लिख देंगे. आप जब लिखते चले जाएंगे देखो दूसरा साइड पे वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया. मैंने कुछ नहीं दबाया. तो समझो आपको इतना ही नहीं, ये कॉन्टेक्चुअल बेस्ड है. जब आप एग्जाम्पल डेट लिखा आपने तो डेट का मतलब एक खजूर फ्रूट है. अब देखो डेट ऑफ अगस्त कर लिया मैं तो ये ऑटोमेटिकली अगस्त का तारीख कॉन्टेक्स्ट बेस्ड ये पूरा चेंज हो जाएगा. समझो आपको एक टेबल क्रिएट करना आपका बुक में. जब आप टेबल क्रिएट करेंगे देखिए दूसरा साइड पे टेबल आ गया. यू आर एबल टू सी माई स्क्रीन राइट? हेलो हेलो हेलो. हाँ बताइए. क्यों स्टॉप? क्योंकि मैं देखता हूँ. Are you able to hear me now? Hello? Hello? Hello?
Are you able to hear me now? Hello? Hello? Just give me a minute. I will switch towards my mobile. Huh? I will join through my mobile. Just give me a minute. Now it is audible. नहीं नहीं, मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा हूँ ना, इसलिए आपको आ रहा है. Just give me 1 minute. What I will do, I will join on both the devices. मैं मेरा मोबाइल से बात कर लूँगा. आप थोड़ा एक्सेप्ट कर लीजिए उधर. यहाँ से करने से देखिए अब मैं are you able to hear me now? So we can hear you, sir. Okay, done. 1 second. Now I will share my screen on my desktop, so that you can see it and I can you can hear me. Are you able to hear me now? Yes, yes. ओके, देखिए अब ये आपके सामने आ गया ना. अब आपको लगा कि एक फोटो ऐड करना आपका बुक में, तो आप एग्जांपल आई एम एडिंग वन स्मॉल फोटोग्राफ हियर एंड सी हाउ सिंपल इट इज टू क्रिएट अ न्यू बुक और राइट अ ब्लॉग. तो मैं एक फोटो ऐड कर दिया. देखिए अब ये फोटो है, बट ये फोटो आपको फ्लिप करना है. देखिए मैं जस्ट इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, फ्लिप हो जाएगा. इसको छोटा करना तो छोटा कर लेंगे, इसको रोटेट करना रोटेट कर लेंगे. एवरीथिंग इज अवेलेबल, हाँ, एंड एवरीथिंग इज फ्री. तो आप इस पे जाके लिख देंगे. हेलो हेलो, आर यू एबल टू हियर मी और हेलो हेलो. I think there's some problem from your side. Hello. 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 Sir, now it is audible. Okay, okay. So you are able to see me also, right? On my screen. तो देखिए अब ये आप एक बुक ऐसा हिंदी में इंग्लिश में लिखा, वो हिंदी में ट्रांसलेट हो गया. समझिए आप हिंदी में लिखेंगे तो इंग्लिश में कौन सा लैंग्वेज चाहिए वो लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा. आप इधर से सीधा डाउनलोड कर देंगे बुक को. तो ये बुक मैंने अभी ये आपके सामने ये हिंदी वाला एक बुक लिख के वो बुक मैंने डाउनलोड कर दिया. जब एनेबल एडिट कर दूंगा, देखिए ये आ गया पूरा. ऐसा कोई भी आप लिख सकते हो, कोई भी आप इसके ऊपर कर सकते हो. बट अभी आपको असमीज में चाहिए यही बुक. आप सिर्फ इधर चेंज कर देंगे तो ये नीचे असमी में चेंज हो जाएगा. ये बंगाली चाहिए तो जब बंगाली में चेंज हो जाएगा. आई थिंक आपको थोड़ा सा लैग दिख रहा है उधर, क्योंकि आई कैन सी इट फ्रॉम हियर. तो आप कोई भी लैंग्वेज ऐसा सेलेक्ट कर लेंगे, वो लैंग्वेज के हिसाब से ये चेंज होके आपके सामने आ जाएगा. तो दिस इज वन टूल वी हैव, इट्स कॉल्ड चुटकी. बट मैं अभी आपको और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वाला दिखाऊंगा. One more thing I will try to show you. I mean it has a lot of features. तो आप एक एक देख सकते हो, बट उसमें एक फीचर है कि आपके पास एग्जिस्टिंग बुक है तो आप इधर से वो बुक अपलोड करके आप ट्रांसलेट कर सकते हो. और यू कैन हैव अ वॉइस बेस्ड फॉर्म, नहीं तो वीडियो ट्रांसलेशन कर सकते हो, आप डिक्टेशन कर सकते हो. वी हैव अ वर्चुअल कीबोर्ड क्रिएटेड. वी हैव भारत ट्यूब. इसका मतलब ये है कि जब ये भारत ट्यूब में जाएंगे आपके पास कोई भी ये शेयर नहीं हुआ है, शेयर दिस टैब इंस्टेड. आप ये भारत ट्यूब पे जब जाएंगे, समझिए आपके पास कोई भी यूट्यूब वीडियो है, आप उसका लिंक इधर डाल देंगे. आप बताएंगे कि मेरा ये वीडियो हिंदी में है, इसको ये मुझे तेलुगु में चाहिए और इंग्लिश में चाहिए. तो जब आप ऐसा सेलेक्ट कर लेंगे ऑटोमेटिकली ये ट्रांसलेट होके इंस्टेंट आपके सामने आ जाएगा. ये भी आप एक बार प्रयास कर सकते हो आपका इधर से. हाँ, जस्ट लेट मी जस्ट गो बैक. सो ऐसा भी हैव ऑडियो लाइव, भारत वीडियो लाइव, AI वीडियो एनालाइजर, यूट्यूब एनालाइजर. वी हैव स्पीच टू स्पीच. वी हैव so many components related to audio.
we have generative core engineering AI. Example, let's say I'm a civil engineer, you know, I'm interested to learn civil engineering but in Hindi. तो मैं क्या करूंगा, सिविल इंजीनियरिंग पे चले जाऊंगा, पहले इधर मैं ये सुन के বাংলায় हिंदी চালিয়ে যেতে सेलेक्ट कर এই लूंगा। বোতামটি ক্লিক तो করুন। जब मैं हिंदी सेलेक्ट कर लिया, देखिए पूरा सिविल इंजीनियरिंग के बारे में पूरा हिंदी में मेरा सामने आ जाएगा। उसमें स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ये इंजीनियरिंग कितना सिविल इंजीनियरिंग का मेन टॉपिक्स है सब एक पेज पे आपको मिल जाएगा। आपको लगा चलो मैं सिविल इंजीनियरिंग में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के बारे में जानना चाहता हूँ, तो आप जब इस पे क्लिक करेंगे आप सुन लेंगे क्या है जैसे ये। इमारतों, पुलों, बांधों और टावरों के डिजाइन और विश्लेषण पर केंद्रित है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे बाहरी और आंतरिक बलों का सामना कर सकते। बट अब आपको लगा कि नहीं मुझे ये मोर डिटेल्स चाहिए। देखिए अब क्या होगा, इसमें अलग अलग ऑप्शंस आ जाएंगे, आप ज़्यादा मोर डिटेल्स देख सकते हो। इसमें कौन सा R&D प्रोजेक्ट्स है, वर्ल्ड वाइड R&D प्रोजेक्ट्स कौन सा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में, हमारा देश में कौन सा है, कितना जॉब अपॉर्चुनिटीज है, कौन सा नया इनोवेशंस हो रहा है, सब आपको एक जगह पे मुफ्त में मिल जाएगी। एग्जाम्पल मैं इसमें स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में टॉपिक पे टॉपिक देखना चाहता हूँ। देखिए स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में कितना टॉपिक्स, पूरा टॉपिक से फ्री है पूरा, आप क्या चाहिए वो सीख सकते हो। एग्जाम्पल में ये पर प्रश्न के ऊपर क्लिक कर लूंगा, इसका पूरा उत्तर आपके सामने आ जाएगा। आप इसको पढ़ भी सकते हो, इसको सुन भी सकते हो। उसका रिलेटेड कितना क्वेरीज है वो पूरा नीचे आ जाएंगे, वो भी आप पढ़ सकते हो, सुन सकते हो। बट मैं एक प्रश्न भी पूछ सकता हूँ। एग्जाम्पल में एक प्रश्न पूछूंगा, देखिए हमारा भारत देश का प्रधानमंत्री जी कौन है। तो जब हम लोग ये सब पूछेंगे वो क्या करेगा, वो रिप्लाई दे देगा। आपको ये टैब में नहीं दिख रहा, ये दूसरा टैब में चला गया इसलिए वो उधर नहीं दिख रहा, बट आपको समझ में आया ना। ऐसा हम लोग ने अलग अलग ऑप्शंस इसमें पूरा डिराइव किया। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, लेट मी ट्राई टू शेयर इट अगेन। ये कौन सा पेज, तो अब इसमें और अच्छा मजेदार चीज है ये स्पीच टू इमेज। अब आप इसमें कोई भी वॉइस कमांड देके आप इमेज जनरेट कर सकते हो। एग्जाम्पल देखिए मैं एक इमेज ऐसे ही इंग्लिश में करके दिखाऊंगा, बट यू कैन स्पीक इन एनी लैंग्वेज। आप इधर है ये हिंदी, तेलुगु, उर्दू, चाइनीज, कोई भी लैंग्वेज में, बट मैं इधर एक आपको दिखाऊंगा। देखिए कि ये कैसा चलता है। इंडियन चिल्ड्रन प्लेइंग क्रिकेट, ये आप बोल भी सकते हो, नहीं तो टाइप कर सकते हो। वर्चुअल कीबोर्ड भी है, उसमें भी बोल देंगे तो आ जाएगा। अब देखिए ये क्या करेगा, एक इमेज जनरेट करके दे देगा आपको आपका स्पीच के हिसाब से। देखो इधर द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग क्रिकेट, दिख रहा है आपको। आप इसको चाहिए तो डाउनलोड करके ले लेंगे, बट लेट्स से स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स doing experiments in science lab, huh? Doing in chemistry lab example, huh? देखिए अब ये एक इमेज जनरेट करके आपको दे देगा केमिस्ट्री रिलेटेड, लैब रिलेटेड इमेज। अच्छा लगा आप लोगों को? ये देखिए ऐसा आप कोई भी कर सकते हो। एग्जाम्पल में इंडियन गर्ल चाइल्ड, हाँ, प्लेइंग फुटबॉल, हाँ, डू यू सी। सो ऐसा ये पूरा इमेज जनरेशन ही करके आपके सामने दे दे। So this has so much of potential, and then we have image 23 handwritten। इसमें बहुत ज्यादा ऐसा कंपोनेंट्स हमने बिल्ड किया। कोई पीडीएफ आपको बनाना चाहते हो, कंप्रेस करना चाहते हो, स्प्लिट करना चाहते हो, इट हैज सो मेनी अदर इंग्रेडिएंट्स। बट आई वुड लाइक टू शो यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज our
internship portal. Because as you know, there is a gap between a industry requirement and what you learn in the colleges. So basically what we did for that, in order to solve that problem, we have created this internship portal to bridge the industry requirement with the academia. So now this portal is called National Internship Portal. इसमें 75,000 के ऊपर कंपनीज है, 32 lakhs के ऊपर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज है, एंड टुडे ओनली वी रिसीव्ड 5 lakh इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम रूरल मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो इसमें क्या होगा, आप कोई भी बच्चे जाके इधर कोई भी एनी बिग कंपनी, वो कंपनी का इसमें इंटर्नशिप कर सकते हैं. एग्जाम्पल, आप अर्बन डेवलपमेंट में, रूरल डेवलपमेंट में, नहीं तो भारतीय भाषा समिति में, नहीं तो IBM में, सिस्को में, माइक्रोसॉफ्ट इंटर्नशिप्स में, नहीं तो कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन में, नहीं तो नेशनल हाईवे में, NCDC में, और एरोस्पेस और एनीथिंग यू नेम इट, ऑल द बिग कंपनीज, मैथवर्क्स, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, सिस्को, वी हैव सेल्सफोर्स, वी हैव गूगल, we have all big companies are published their internship opportunities here. उसके साथ आप नीचे आके एक एक इंटर्नशिप एक एक स्टेट वाइज भी देख सकते हो. एग्जाम्पल, आपका स्टेट के लिए आप थोड़ा सा नीचे चले जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश का देखिए, इंटर्नशिप्स इन बिलासपुर, चांबा, सब आपके पास इसमें है. समझिए आप इंटर्नशिप्स बिलासपुर में कौन सा देखना चाहते हो, तो देखिए ये पूरा इंटर्नशिप्स बिलासपुर का है. तो सिविल इंजीनियरिंग इंटर्न चाहिए म्युनिसिपल काउंसिल बिलासपुर को, प्लम्बर चाहिए, इलेक्ट्रीशियन चाहिए, स्वच्छ टूलिप इंटर्न चाहिए, ऐसे यू नेम, ऑल दीज आर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज पब्लिश्ड ऑन दिस पोर्टल. तो आप क्या करेंगे, आप पहला फर्स्ट आप यू गो टू द होम पेज एंड रिसेंटली पोस्टेड इंटर्नशिप्स करके एक लिंक है. जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, रिसेंटली कौन सा पब्लिश हुआ वो पूरा इस पे आ जाएगा. ये बहुत ऑनलाइन भी है, सो दैट यू कैन डू इट ऑनलाइन. एग्जाम्पल देखिए, इधर वेब डेवलपमेंट इंटर्न चाहिए, फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट इंटर्न चाहिए, पाइथन प्रोग्रामर चाहिए, जावा प्रोग्रामर चाहिए, पाइथन इंटर्न चाहिए, वेब डेवलपर, फुल स्टैक इंटर्न चाहिए, मशीन लर्निंग इंटर्न चाहिए, जावा इंटर्न्स चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसा आप पाइथन इंटर्नशिप, यू नेम इट. आई मीन वी हैव ऑल दोज इंटर्नशिप्स आर रेडी. तो आपको क्या करना है, एग्जाम्पल ये वेब डेवलपमेंट इंटर्नशिप है, इस पे आप, ये कोडिंग राजा करके कोई कंपनी है, इस पे आप, इफ यू आर इंटरेस्टेड, यू विल गो हियर, यू विल लुक इनटू दैट अपॉर्चुनिटी. देख के वो पूरा अपॉर्चुनिटी आपको अच्छा लगा तो आप इसको अप्लाई करेंगे. अप्लाई करने के बाद देन दे विल गिव अ अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद देम एंड यू विल गेन अ इंटर्नशिप एक्सपीरियंस. एट द सेम टाइम सम कंपनीज दे पे, कुछ कंपनीज ऐसा रहता है कि दे विल पे एंड दे विल गिव यू इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी. एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया था, ये रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का आज आया था, वो 5,000 रुपीज दे पे एंड दे विल गिव यू इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी. सो ऐसा अलग अलग कंपनीज, ये देखिए डिफरेंट कंपनीज, दे ऑल आर पब्लिश्ड. सो यू कैन गो एंड यू कैन सी, इफ इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन डू इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी विद देम. सो ऐसा हमने पूरा कितना इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, वो पूरा इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज इसमें दिया, ताकि प्रधानमंत्री जी का क्या सपना है वो भी पूरा हो जाए. एट द सेम टाइम द पीपल आर विल गेट, द स्टूडेंट्स विल गेट अ रियल टाइम अपॉर्चुनिटी. तो आप कितना इंटर्नशिप्स कर सकते हो, आप मैक्सिमम 3 इंटर्नशिप्स आप कर सकते हो. 1 सेकंड.
इसका टोटली है ये ऐप नहीं है। पोर्टल है ये सिटीजन पोर्टल उसी में बाकी क्या कर
इसी तरह से ही हो जाएगा।
Before starting the session, I would like to tell a rule that maximum time given for each oral presentation is 8 minutes. However, the bell will be rung after 6 minutes in order to remind the speaker. All are requested to please take care of the time duration. Thank you. Now, I would like to call Ms. Richa Sharma from Career Point University, and her topic is a volumetric and compressibility study of an ionic SDS in aqueous medium of anti-HIV drug at different temperatures. A very warm good afternoon to all of you. I, Richa Sharma, from the PhD research scholar from Career Point University, Hamirpur, under the guidance of Dr. Kuldeep Kumar from Career Point University, Hamirpur, and Dr. Suvarsha Chauhan from HPU Shimla. I'm going to give my presentation on the topic, a volumetric and compressibility study of anionic surfactant, STS, in aqueous medium of anti-HIV drugs at different temperatures. These are the main contents of my presentation: introduction, aim, experimental formulation, result and discussion, conclusion, and then references. First of all, introductory part. In recent years, drug surfactant interaction has gained significant attention in pharmaceutical industries, drug formulation, and new drug delivery system. Why surfactants are so important in pharmaceutical industries? Because they can boost up drug solubility, increase drug stability, rearrange the nature of drug release, alter the mode of drug uptake, and enhance the bioavailability of drug species. Now, what is drug? The word drug is derived from the French word drogue, a dry herb, and is defined as any substance used for the purpose of diagnosis, prevention, treatment, or cure of a disease by altering the physiological system of body. These two drugs I have chosen in my study, these are anti-HIV drugs, metricitabine and lamivudine. If we see their structure almost similar, just the difference of fluoro group. In metricitabine, there is a fluoro group in the cytidine ring, but in lamivudine, there is no such fluoro group. Now, surfactant. Surfactant, as we all know, that a chemical substance which has a property to lower the interfacial tension between two immiscible liquids. How? Because they contain both polar and non-polar part together as hydrophilic head and hydrophobic long chain. And one characteristic feature of surfactant is that they form self-aggregation at a fixed concentration, which is known as critical micelle concentration. These are the different types of surfactant. Cationic contain a long hydrophobic chain with positive head group. Anionic long chain with negative head. Non-ionic with long chain polar groups but no positive and negative head. Amphoteric, they contain both positive and negative charged head group. Aim of present work to carry out the volumetric and compressibility measurement of anionic surfactant STS in the aqueous medium of metricitabine and lamivudine by measuring density and speed of sound values and then evaluating some important parameters 5e, 5k and kappa s. These are the experimental and formulation which I have used to calculate 5e, 5k and kappa s parameters. Now these are the results of my study. After measuring speed of sound and density values of STS in pure water and both the drugs, we get such type of graphs. These are the graphs of first parameter apparent molar volume 5e, which are curvilinear in nature. These are the graphs of isentropic compressibility kappa s. And these are the graphs for apparent molar isentropic compressibility parameter 5k for the three systems in pure water, first drug, and in the second drug.
लास्टली नाउ द रिजल्ट एंड डिस्कशन में कि जो हमारे पास ये ग्राफ्स आए इनसे हम क्या एनालाइज कर रहे हैं। सबसे पहले प्लॉट्स ऑफ 5A एंड 5K दे आर फाउंड टू बी कर्वी लीनियर, जो कि यूजुअली लीनियर आते हैं, बट सर्फेक्टेंट के केस में दीज आर कर्वी लीनियर। क्यों? क्योंकि सर्फेक्टेंट CMC दिखाता है, क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन, उसमें माइसल्स बनने शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से कर्व जो है वो कर्व जो ग्राफ है वो कर्व शेप में आता है। एंड 5E वैल्यूज हैव बीन फाउंड टू बी पॉजिटिव एंड इट्स मैग्नीट्यूड इंक्रीज विद टेम्परेचर एज वेल एज बोथ ड्रग्स इन STS। अमंग मेट्रिसिटिबिन एंड लैमोविडिन, जो दो ड्रग्स हमने चूज की थी, 5E showed more increase for metricitabine and Ks values vary inversely with the concentration. Then next is conclusion. 5E पॉजिटिव मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, इससे ये क्लियर होता है कि सर्फेक्टेंट जो हमने चूज किया था उसने ड्रग के साथ पॉजिटिव इंटरेक्शंस दिखाई। सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो ड्रग्स की थी उसमें पॉजिटिविटी है। जो दोनों ड्रग्स हैं एमेट्रिसिटिबिन और लैमोविडिन, इन दोनों में से भी जो फर्स्ट ड्रग है उसमें ज्यादा सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन शो हो रही है। अब इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? इससे ये कि जो सर्फेक्टेंट है हमारे वो एज ए ड्रग व्हीकल यूज होते हैं। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि वाटर सोल्यूबल नहीं होती या साइड इफेक्ट्स करती हैं, टॉक्सिसिटी करती हैं, तो ऐसे केस में सर्फेक्टेंट हेल्प कर सकता है to reduce the toxicity in particular case. These are the references. Thank you. Sir, can you tell us about some application area where your work actually is going to be implemented? सर मेनली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में ये यूज होता है सर, ये सर क्योंकि सर anti-HIV ड्रग्स की अगर हम बात करें ना सर, आज के सिनेरियो में भी ऐसा है कि कोई भी anti-HIV ड्रग ऐसी नहीं है कि जो अलोन यूज हो, मतलब अकेले यूज हो, कॉम्बिनेशन में होता है सर वो यूज, और उसके बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो ऐसे केस में मुझे लगता है ये जो मेरी स्टडी है ये हेल्प कर सकती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में फॉर द बेटर फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, और कई जगह पे सर्फेक्टेंट एज ए एप्लीकेंट यूज होते हैं सर, स्पेशली SDS, इसका काफी फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन है। As far as your results are concerned, have you done some analytical study about the comparisons with the present scenario, what exactly chemical industries are using? Sir, as such. Okay, sir. Thank you so much, ma'am. Next, I would like to call Ms. Dimple Chauhan from Career Point University, Hamirpur, and her title is Aloe Vera Mediated Synthesis and Characterization of Pure and Doped Magnesium Oxide Nanoparticles and their Photocatalytic Application. Attended international. A very warm good afternoon to everyone present here. Myself Dimple Chauhan, and I'm here to present my paper in this international conference in recent trends in engineering, science and technology. And my paper presentation title is Aloe Vera Mediated Synthesis and Characterization of Pure and Doped Magnesium Oxide Nanoparticles and their Photocatalytic Application. I'm doing my research work under the guidance of my supervisor, Dr. Kuldeep Kumar from Career Point University. And my contents are as introduction, methods of preparation, characterization, results, and the references. Now, first of all, introduction. As we all know, nanotechnology in the last few decades, it has done a great advancement in the field of science, in physics also, in chemistry also, in medicine also, and in material sciences. What is nanotechnology? It deals with the materials which have their dimensions in the 1 to 100 nanometer range. Because why we go to nanoscale? Because in nanoscale, the properties of the particles, they modify completely from their bulk counterparts.
Now we have chosen the metal oxide nanoparticles because metal oxide nanoparticles who have band gap in the range of 2 to 4 electron volt, they form an important class of semiconductors. What is band gap? It is a gap between the valence band and the conduction band. If the band gap is above 4 electron volt, then that material is classified as an insulator. But if it is in this range, that it comes in the category of semiconductors. These metal oxide nanoparticles can be used in optical devices, in electronic devices, and they have very important biomedical and photocatalytic applications. And metal oxide nanoparticles, there are different chemical methods of synthesis of these metal oxide nanoparticles, like solvothermal, co-precipitation, salt gel process. But in these processes, all these chemical processes, we have to use some reducing agents and some stabilizing agents. And these stabilizing and reducing agents are generally highly toxic in nature. So our aim is to go towards green synthesis. Green synthesis is a novel approach in which we eradicate the use or to minimize the use of toxic chemicals. And in biosynthesis approach, we use the biomolecules as bioreductants to form these metal oxide nanoparticles. And from where these biomolecules are derived from the biomolecules which are present in plants, microorganisms, algae, or fungus. These plant extracts act as bioreductors as well as stabilizer, and this approach does not involve any toxic chemicals, and this method is also cost effective and eco-friendly in nature. Out of the various metal oxides, I have chosen magnesium oxide for my study because this magnesium oxide, as we know, it is a basic metal oxide. It is non-toxic. It has very high thermal stability. It has very high flame resistivity. It has very good mechanical strength, and instead of these properties, it has biological properties also, like it is antioxidant, anti-cancer, and it has also antimicrobial properties also. And for the present, this study, I have utilized the plant extracts of the aloe vera plant. The mucilaginous gel, which is present in this aloe vera plant, it contains a variety of biomolecules like aloin, allicin, lupiol, amylase, and all these bioactive molecules have anti-cancer, anti-diabetic, and antioxidant properties. Now, this is a schematic presentation of how I have prepared these nanoparticles. I have extracted the plant extract in the second picture, like this. And in the third picture, this is the aloe vera plant extract. Then I have mixed the precursors, which I have used for my study. And under a constant stirring, and at a temperature of 70 degrees centigrade, I have prepared all the magnesium oxide nanoparticles and doped magnesium oxide nanoparticles. And these are our last picture is of the samples which are obtained after drying and after calcination them at 500 degrees centigrades. This is the final plan what I have prepared. By utilizing this aloe vera leaf extract, I have prepared 4 types of samples: pure magnesium oxide nanoparticles, cobalt doped magnesium oxide nanoparticles, copper doped magnesium oxide nanoparticles, and zinc doped magnesium oxide nanoparticles. And after preparing them, I have characterized them from different spectroscopic studies: X-ray diffraction spectroscopy, UV visible spectroscopy, Fourier transform infrared spectroscopy, scanning electron microscopy, energy dispersive X-ray spectroscopy, and transmission electron microscopy. X-ray diffraction spectroscopy is used to find out the crystal structure of the prepared nanoparticles. From these graphs, we have concluded that such my prepared nanoparticles have face-centered cubic lattice. And these are the different parameters which are evaluated from the XRD data.
These are the UV visible spectroscopic graph from which we have calculated the band gap values. As you can see, the first one, which is the pure magnesium oxide nanoparticle, it has a band gap of 4.9 electron volt. But after doping with cobalt, copper, and zinc, the band gap have reduced drastically. It has reduced to 1.76 electron volt in case of the cobalt doped magnesium oxide, and in case of the copper dope, it has reduced to 1.89 electron volt, and in case of the zinc magnesium oxide nanoparticles, it has been reduced to 3.27 electron volt. I'll skip some of my slides because I have to show my application part. I have utilized these nanoparticles for the photocatalytic degradation of the malachite green. Malachite green, it is an organic dye which is used by various fabric industries for the dyeing of the cloths. And we know that this wastewater is being released into the reservoirs, water reservoirs, where it pollute the water. So if I use these nanoparticles for its degradation, the first peak, it is before exposure to these magnesium oxide nanoparticles, I have a strong peak at 614 nanometer. But after exposing this dye to my synthesized nanoparticles, there is significant degradation in the concentration of the dye. So these nanoparticles can be utilized for the effective wastewater treatment. These are the results of the, thank you. Hello, Dr. Gu, you are there? Yes. You're audible to me. So let me start with your introduction to our audience. Then we will proceed for the presentation. Am I audible? Come again. So you will. Am I have to share the presentation now? No. No, let me start with your introduction first. Okay. So our next speaker is Dr. Go. Dr. Go is currently an associate professor and pro vice chancellor, global engagement cum chairman, University Research Committee, INTI International University. He obtained his PhD in swarm intelligence from University Technical Malaysia, Melaka in 2019. He is a dedicated academician with more than 12 years of teaching experience in higher education and possesses more than 15 years of research experience. He is actively involved in various research areas such as swarm intelligence, mathematical modeling, fintech, pharmaceutical information technology, healthcare data analysis, and precision farming optimization. He obtained 2 FRGS grants as principal investigator in 2016 and 19, which was focused on computational analysis on protein structure prediction and Islamic finance portfolio optimization, respectively. And one more thing I need to share, that recently we have signed MOU with INTI University to extend our limits in engineering field. Now I request Dr. Ho to take over the mic to share your presentation on the topic role of collaboration in engineering. So over to you, sir, please. You can proceed with your presentation. Okay. Thank you very much, the chairperson. You have. I think you have searched through my profile on the internet, so I think you have find my profile. You have a very comprehensive introduction. Thank you very much. Today, I just take. Thanks for the principal of GHEC to invite me to introduce about the emerging research in trend in our INTI International University. The INTI is not any short form. It is basically we pronounce it as INTI. So this INTI is actually in Malay language. Is mean the core value. So it's come from the Malay language. So
because our founder, then when they started this university, they want to focus on building the core value of the education of all the students. So that's why they use these words, INTI. So INTI. So I'm the Pro Vice Chancellor of the Global Engagement of the INTI International University. I will take this chance to briefly introduce about INTI International University to all of you. So we started at 1986, okay, 38 years ago. So we begin with a very small college by training the student for English and then send them to study abroad. Then 1991, we actually brought in a lot of UK degrees into Malaysia. So we are the very first college in Malaysia starting the twinning program. So that time it was quite famous in Malaysia, where a lot of people coming to Malaysia to do 1+2 or 2+1, or at the end we managed to make it into 3+0, meaning you just have to spend 3 years study in Malaysia, but you will obtain the degree from UK. So we have worked very closely with the Hertfordshire University and also the Coventry University. So 2008, we were acquired by this Laureate Education Group from America. So since then, we have worked closely with all the giant university from US, from Canada, with Australia, because under the Laureate Group, there are a lot of giant university, famous university. So we have been starting a lot of America transfer program, Australia transfer program, Canada transfer program, all this. So we have transferred a lot of Southeast Asia students, especially Asian students, to America or US and Canada and also the Australia. Then we 2021 2010 we actually managed to upgrade our campus in Nilai here as INTI International University. So since then, we start offering our Bachelor of Degree, our own Bachelor, Master, and PhD program. And we also converted a lot of like Hertfordshire University and Coventry University, the partnership into the Dual Award. So people come to INTI study, we will get the Dual Award. Then in year 2020, we actually acquired by the Hope Education Group from China. So from the transition from Laureate Group to Hope Education Group, from America company to a China company. So actually we have a transition role changing. So we are the first international university from this Hope Education. So that's why they want us to be in branding for their education group. That's why we actually embarking into the QS ranking. So so we start expand our network. So we will actually started our QS Asia ranking in 2021 and at that time we actually having the ranking at 450. And then now this year we actually at the Asia ranking of 222. And also we managed to embark into the QS World ranking, World University ranking at 556. Okay, as the top 600 last year. After we also managed to sign the MOU with government hydro engineering college last year itself with this expansion. Okay, with the after we obtained the ranking. So we actually having 4 campuses across Malaysia, and then 38 years of experience. We have more than 1,000 plus academic staff across the 4 campuses, and we have active students around 13,000. And this is if you are familiar with Malaysian map, so this is our location. Our university located in nearby the airport, and then we have the another campus nearby Kuala Lumpur, and we have one more in the northern region, which is Penang. Then we have Sabah campus. So today I would like to talk about the international collaboration as well,
and also our research activities, because I'm the chairman of the University Research Committee as well. So from the international collaboration of our publication, we actually encourage all our staff to publish with all the partner university overseas. So as you can see, last year actually we still have double digit in our only institution collaboration and single author, and this year we managed to reduce it into a single digit, and now we try to reduce this national collaboration into the single digit as well by encourage all our staff, all our research publication must have international collaboration. That's why we are very aggressively looking for partnership and also collaboration internationally. And these are the strength of our university subject area. As you can see, our university in T, we publish 48% of our papers is in the engineering and technology. So almost half of the research are focusing in the engineering and technology. Of course, there are another two big chunk research, which is in life sciences and medicine, and also the natural sciences in 25%, and social science and management around 29%. We also focusing on the SDG. So I think nowadays when we talk about international collaboration, research collaboration, a lot of research area we need to look into, which is the especially following the United Nations Sustainable Development Goals. So as you can see, the INTI achievement is actually the blue line. Okay, and compared to the world, which is quite average in every aspect, and we have the Malaysia achievement in the SDG. So we are achieving quite well, especially in the SDG 9, 12 and 14, and also the 4, which is quality education. So these are the area that we are quite producing quite well, but we're looking forward with collaboration from international collaboration with partner university to improve, especially like our justice of and strong institution like SDG 16. So because we do not have any law expertise in our university, that's why we are very weak in this point. So we're looking forward if university in overseas would like to work together with us, and we are also very weak in the especially in the reducing the inequality. As you can see, gentle equality, okay, and then the climate action. So these are the weak point that we are looking forward that partner university in overseas that can work together with us. So we are open for research proposal, and we do have a lot of seed grant and also industry grant that we can work together. And as a university policy, we actually encourage all the grant application must have international collaboration. So following by that, I would like to introduce those research projects currently active in our university. For example, in the field of computer science, these are the area that currently our lecturer are working on with together with a lot of partner university. For example, like the first one is about the conceptualize the SES based unified IoT architecture framework for the futuristic IoT application. So this one is like the software as the SES, so more to cloud based. Then the second one is remodeling the master site change of collaboration, improving the security and scalability of the Explore blockchain. So this one also related to security and blockchain in computer science. Then outlier and the anomaly pattern detection using the machine learning algorithm. Okay. Then development of sustainable assessment tools for higher education.
So this one also integrate with the computer science software for our assessment tools. Digitalized technology acceptance. This one is more to the social science, but they are talking about the agriculture sustainable growth. So I think it's also consider some emerging technology involved. So and especially when we do a lot of research in the emerging technology, this is one of the best way to check whether the community can accept our product or our development or not. Then waste heat recovery model for Malaysian Urban Data Center. And another one is the Metaverse University, the future of online education. This one also quite famous because nowadays even the QS ranking, they are also focusing online education. I think now online education started getting popular. So Metaverse University, people have been talking about. It's a new way of learning, okay, and it can improve the student experience by integrating the VR into the teaching and learning process. Then we do have research that involve such as engineering. So we have the photonic photon modulation. So this research actually conducted by our one professor in the very famous professor in physics. So he applied the photon modulation using the two-dimension materials. And then there's another project under the effect of the force of conical cell foundation under the Malaysian high-speed train. So this one also because our university engineer, they are more focusing on this kind of material science and then design. So they applied this one. And then another one is application of drone photogrammetric for urban green building profiling based on the spectral spatial method. So this one is the more to drone technology. Developing the brain-machine interface for controlling the robotic arm, because we have mechanical engineering here, so there are research using how they can using the brain-machine interface to control the robotic arm. Then we also have the investigating the peacefulness of the brain connectivity. This is one of the bioinformatic approach. And we also have civil engineering student staff. They talk about how to developing this Sharia compliant guideline for the wheelchair entry to the main prayers hall for the people with disability in Malaysia most. So this one is more to the civil engineering staff who developed this one. And automate detection for human pose estimation with the AI framework for the portable motion captured system. So these are the computer science and engineering. Of course, there are also still a lot of research area, potential research topic done by our researcher, but I just choose the computer science and engineering project to introduce here because to share with everyone. So this is the trend that our university working on. So in future, maybe if you looking forward, are we looking forward for any partnership, any collaboration? So for all the audience, if you would like to collaborate with us, we are welcome. Any collaboration and looking forward, we can apply research grant together and also working for publication. So you all may get my contact with there. So he got my contact. So for those who are interested, please contact me. Thank you very much. Thank you, sir.
for providing a comprehensive overview of your university. We'll definitely look forward to many more collaborations with your university. Now I would like to call Ms. Sakshi Dhiman from Career Point University, Hamirpur. Her presentation titled as Microwave Assisted Biosynthesis for Silver Dope Zinc Oxide Nanoparticles using Agar Marmelius Leaf Extract for Photocatalytic Applications. Good afternoon, everyone. I'm Sakshi Dhiman, PhD Research Scholar from Career Point University under the supervision of Dr. Rahul Sharma, Assistant Professor, Career Point University. And my topic is microwave assisted biosynthesis of silver doped zinc oxide nanoparticles using aglymomelose leaf extract for photocatalytic applications. Content: Introduction, Material and Method, XRD, FTIR, UV, SAM, photocatalytic activity, and then conclusion. Introduction. Innovation in nanotechnology has led to the synthesis of materials with a variety of properties, allowing for a growth in how they are being utilized with implications for the sustainability, well-being, and living standards of people. Nanoparticles are synthesized using top-down and bottom-up methods, but these methods are quite toxic, expensive, and hazardous. While green synthesis approaches are gaining attention due to their low cost, biocompatibility, and environmental friendliness, overcoming these issues. Zinc oxide nanoparticles is a promising field in nanoscience due to their eco-friendly, safe, and biocompatible properties, including high photostability and non-toxicity. Silver doped zinc oxide nanoparticles exhibit better photocatalytic effects and antioxidant activity. Aglymomelose. Aglymomelose is called bale in Hindi, vilvam in Tamil, and vilva in Sanskrit. These leaves are used to treat neurological and cardiac conditions. Vilva leaves are quite useful for healing wounds and treating jaundice. Material and method. We have used aglymomelose leaf, commonly called bale patra, zinc nitrate hexahydrate, and silver nitrate. Green synthesis of silver doped zinc oxide nanoparticles using aglymomelose leaf extract. Firstly, we have collected bay leaves from the nearby area of Career Point University, Himachal Pradesh. These leaves were washed properly and dried under the sunlight. Thereafter, these leaves were crushed in a mortar and boiled, and therefore the extract is made. Thereafter, zinc nitrate hexahydrate along with silver nitrate were added to the extract and it is stirred until the mixture is homogenized. After stirring, the mixture is placed in a microwave oven for about 10 to 15 minutes. Thereafter, grayish silver doped zinc oxide nanoparticles were obtained. Here is the XRD result for the prepared silver doped ZNO nanoparticles. 20 nanometer is the highest crystalline size of the synthesized samples, while 15 nanometer is the minimum crystalline size of the synthesized samples, as shown in Table 1. Crystallized size is calculated by a scalar formula which is given in equation D is equal to K lambda upon V cos theta. Here is the table showing the crystalline size of the synthesized samples. Here is the FTIR graph of the synthesized silver-doped zinc oxide nanoparticles. The peak intensity of silver zinc oxide nanoparticles is shown here at 585, 835, 1370, and 2438 and 3482 centimeter is due to ZNO, silver oxide, and
OH and again due to OH band. Next is UV visible spectroscopy. Here is the UV visible graph for silver dope zinc oxide nanoparticles. The silver zinc oxide nanoparticles UV visible absorption spectra are measured in the wavelength range of 200 to 800 nanometer at ambient temperature. At 330 nanometer, the spectrum reaches its peak. Here is the SAM image of the silver dope zinc oxide nanoparticles. SAM analysis examines the surface morphology, crystal size, crystal structure, and growth mechanism of synthesized silver dope ZNO nanoparticles. The synthesized silver dope ZNO nanoparticles are spherical in shape, closely and oriented randomly. Next is the photocatalytic activity. Here is the photocatalytic graph for the silver dope zinc oxide nanoparticles. The degradation efficiency of silver dope ZNO nanoparticles is 88% after 1 hour of exposure to sunlight. The acquired results outperform the literature by a wide margin. In literature, 93% of the dye is degraded in 2 hours, whereas the synthesized silver dope zinc oxide nanoparticles are excellent in degrading dye only in 1 hour. Conclusion. Microwave assisted green method for synthesis of silver dope zinc oxide nanoparticles is quite advantageous due to its slow reaction time, greater yield, and less use of chemicals, making it eco-friendly. XRD, FTIR, and UV results showed the silver dope zinc oxide nanoparticles were synthesized successfully. The observed crystalline size was 15 to 20 nanometer based on XRD calculations. Different functional groups were found according to FTIR analysis. While 93% of the dye in the literature degraded in 2 hours, silver dope zinc oxide nanoparticles are exceptional at degrading 88% of the dye in just 1 hour. Thank you. Any question from your side, sir? Thank you, ma'am. Now, our next presenter is Mr. Anil Punjak from Rajiv Gandhi Government Engineering College, and his title is An Engineering Approach to Local Body Elections in India. First class. Next one, sir. Good evening, one and all. At the first instant, my topic may look a little bit unorthodox, but I hope I am able to translate into a good example, whereby I am able to demonstrate that it is a good example to showcase what is the importance of engineering in our day-to-day life. Local body elections, I think as a government employee, we have in-depth idea. Even as a voter, we have general idea how the elections are being conducted. कैंपेन कैसे की जाती है, इलेक्शन कैसे होता है, सिंबल्स का क्या इंपॉर्टेंस है, all of us have substantial idea. So I'm going to skip the initial slides. I will come to the problems as a presiding officer I have identified and the possible solutions. So nominations is the basic, first step, and
the soul of any democratic setup is to provide equal opportunities to the contestant, irrespective of their literacy background. तो पढ़ा लिखा अनपढ़ है, सबको एक अच्छा मौका मिलना चाहिए. लेकिन इस स्टेज पे क्या होता है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू फाइल देयर नॉमिनेशन फॉर्म प्रॉपरली, तो वो रिजेक्ट हो जाता है. तो देयर टू इश्यूज हैं इसमें कि वो लिटरेट है पर उनको आइडिया नहीं कि फॉर्म कैसे भरा जाता है, या फिर कि वो अनपढ़ है, उनको मालूम ही नहीं है. तो बेस्ट इसका जो सॉल्यूशन है कि वी कैन आउटसोर्स द एंटायर नॉमिनेशन फाइलिंग प्रोसेस. यहाँ पर क्या हो सकता है कि ओके, इंस्टेड ऑफ लाइक उनको बोले फॉर्म भरो, वी कैन आस्क देम द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की आधार कार्ड, पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए, वोटर कार्ड, इलेक्टोरल इंफॉर्मेशन के लिए, या एनओसी जो रिक्वायर्ड होता है, हम वो फॉर्म उनसे दे सकते हैं. और एज ए इंजीनियर हमारे पास मीन्स क्या अपॉर्चुनिटी है कि वी कैन डेवलप ए इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स आर्किटेक्चर वेयर बाय फीडिंग द कोड्स, आधार कार्ड का नंबर डाल दो, वोटर कार्ड का नंबर डाल दो, वी आर एबल टू रिट्रीव द इंफॉर्मेशन, एंड दैट इंफॉर्मेशन कैन बी रीअरेंज्ड इनटू ए प्रिंटेबल फॉर्म, फाइनल नॉमिनेशन फॉर्म. So the rejection at this stage has to be completely eliminated, and allocation of the. So it is very, very important, because at this stage we associate identity with the candidates, and the problem here is there is a process whereby we have to sort the names according to the Devanagari script. तो पहले तो अ याद नहीं आता है, और अगर आ जाए तो मात्राएं इतनी कॉम्प्लेक्स होती है कि वहाँ की गलतियां हो ही जाती हैं. और समटाइम्स लाइक वो बोलते हैं कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर मतलब इस खुमानी में रहते हैं कि सर कि आप तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, आप किसी को भी कोई भी सिंबल दे सकते हैं. तो राजू को आपने काजू दे दिया, जबकि हुजूर को मतलब कि खजूर होना चाहिए था बाय प्रोसेस. तो इवन समटाइम्स ये भी हो जाता है कि आप मिस इंटरप्रेट कर लेते हो कि आपने विमला को बिमला पढ़ दिया. तो विमला को बाय रूल सिलाई मशीन मिलनी चाहिए थी, लेकिन आपने बिमला सोच के उसको धुलाई मशीन दे दी. तो इवन विमला जो है, कई बार मतलब लोग इतने अवेयर होते हैं कि हाँ क्या प्रोसेस है, मतलब एलोकेशन का प्रोसेस क्या है. तो शी हैज लाइक वो एंटायर कैंपेन उसने जो सिलाई मशीन के अराउंड स्टिच किया, लेकिन आपने गलत वो दे दिया. तो उससे क्या हो गया कि गलत एलोकेशन से क्या हो गया कि प्रॉब्लम होगी कि मतलब कि इंटायर मींस इलेक्शन इज बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड, मतलब वो डिसमिस हो सकता है. तो जो ये जो सिलाई और धुलाई जो इवेंट थे, वो इवेंचुअली आपके लिए इवेंट मींस जो सिंबल थे आपके लिए इवेंट बन सकते हैं कि आपकी अच्छे से धुलाई भी होने वाली है, आपकी अच्छे से सिलाई भी होने वाली है. तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि मींस कि देयर मस्ट बी सम सॉर्टिंग सॉफ्टवेयर. अगर है तो आई हैव मींस टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट. तो ये अपॉर्चुनिटी है एज ए इंजीनियर हमारे पास कि ओके कि एक हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं वेयर एंड इट इज इजी. क्योंकि देखिए आप स्क्रिप्ट तो लिख सकते हो, हिंदी में लिख सकते हैं, ठीक है, आप मींस वर्ड में लिख सकते हैं, गूगल डॉक पे हम लिख सकते हैं. तो मींस बैकएंड पे आपके पास एक कोड है, तो सॉर्टिंग हम कर सकते हैं. और जरूरी है कि सॉर्टिंग जो नाम से करो, सॉर्टिंग तो हम जो मतलब कि आधार एक यूनिक कोड है, तो उससे भी हम सॉर्टिंग कर सकते हैं. वोटर आईडी कार्ड अल्फा न्यूमेरिक कोड है, वहां से भी सॉर्टिंग हो सकती है एग्जिस्टिंग टूल के अकॉर्डिंग. तो इसको हम जो है एलिमिनेट कर सकते हैं, ये वाली जो प्रॉब्लम्स है उसको भी. सेकंड इज बैलेट पेपर प्रिंटिंग. तो क्योंकि ग्रैंड लेवल पे मतलब पूरी स्टेट पे इलेक्शन हो रहा है, तो अब मतलब प्रिंटिंग करना पेपर्स को उस लेवल पे, तो ये जो मतलब कि प्री प्रिंटेड बैलेट पेपर होते हैं जहाँ सिंबल है, सीरियल नंबर है, और आपको हाथ से नाम लिखने हैं. तो लेबर जो इतने इंटेंसिव है, आप सोचो कि मान लीजिए एक पोस्ट के लिए 10 मींस कैंडिडेट हैं और 1000 वोटर है, मतलब 10,000 बार आपको मतलब 10,000 वोटर मतलब मींस बैलेट पेपर्स को आपको लिखना है हाथ से. तो इसको क्या कर सकते हैं कि ओके कि एंटायर प्रोसेस कैन बी डिसेंट्रलाइज्ड वेयर बाय कि सिंबल और नाम साथ में प्रिंट हो. प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आज की डेट में हाई स्पीड प्रिंटर्स हमारे पास हैं, तो वो इजीली हो सकता है. एंड अनदर थिंग इज वोटिंग स्टैम्प जो पंचिंग है. तो दिक्कत क्या थी यहाँ पर कि जो स्टैम्प मुझे मिली थी, जो लकड़ी की स्टैम्प आपको यहाँ देख रहे हैं उस तरह की स्टैम्प थी. तो लोग क्या कर रहे थे कि उनको पता नहीं कौन से फेस से स्टैम्प लगाना है, वो जो मतलब लेटर सरफेस से स्टैम्प लगा दे रहे हैं. उनको पता है कि उसने सही कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है, लेकिन यू कैन नॉट कंसीडर इट एज ए वैलिड वोट क्योंकि वो सिंबल आया ही नहीं यहाँ पर. तो इसमें क्या कर सकते हैं कि एक तो आप जो मतलब हैंडल को डिजाइन करो
हैंडल को जो आप फ्लैट फेस एक ही रखो, कोई पता है इसी को लगाना है। और दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरी ये दिक्कत भी होती है सिंबल में लोगों को बोलते हैं कि आम को वोट डालना है या इस नाम को वोट डालना है, तो वो उसी पे मींस वो स्टैंप लगा देते हैं एंड यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट कि वो वोट कास्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसमें क्या कर सकते हैं, मल्टीपल सिंबल हम यूज कर सकते हैं ताकि एक ब्लैंक स्पेस के ऊपर आ जाए कि हाँ उसने वोट कास्ट किया है। तो ये भी हम एक डिजाइन चेंज कर सकते हैं। एंड मिक्सिंग ऑफ द बैलेट पेपर्स, अब होता क्या है कि 2 बॉक्स होते हैं जिसमें जो मतलब कि प्रधान, उप प्रधान और जो जो हमारे वार्ड मेंबर है उनके वो जाते हैं, क्या कहते हैं, बैलेट पेपर। दूसरी साइड दूसरे बॉक्स में जो है मतलब कि वो मींस जो डिस्ट्रिक्ट लेवल वाले इलेक्शन है उनके पेपर जा रहे हैं। तो उसमें दिक्कत क्या है कि मिक्स हो जाते हैं, अगर इधर उधर हो गए तो आपको पता है कि वो वोट काउंट होने वाले ही नहीं है। तो उसको क्या कर सकते हैं हम कि एक तो हम लेआउट चेंज कर सकते हैं कि क्या हो कि पहले ही तीन ही आप बैलेट पेपर दो, फिर वो यहाँ के वोट कास्ट करेगा, फिर वो तीन वोट को यहाँ डालेगा, उसके बाद दूसरा आ जाएगा तो वो 3 ले लेगा और ये वाला बंदा जो है मतलब दो बैलेट पेपर ले लेगा दूसरे बॉक्स में डाल देगा। और हम क्या कर सकते हैं, वी कैन गो फॉर कलर कोडिंग कि प्रधान के लिए आपको पता है कि बैलेट पेपर में कलर कोडिंग की होती है। इवन सेग्रीगेशन इज अ प्रॉब्लम लेटर ऑन वोट काउंटिंग के टाइम में, तो वो सेग्रीगेशन को भी हम जो मतलब कि एलिमिनेट कर सकते हैं कि जो आपका बॉक्स है उसको 3 कंपार्टमेंट्स में आपने डिवाइड किया, फिर आपने सब फीडिंग बनाई वहां पर और बाहर से कलर कोडिंग कर दी। तो मतलब ये दिस इज अगेन गोइंग टू सिंप्लीफाई द एंटायर प्रोसेस। एंड काउंटिंग में, वोट काउंटिंग में क्या करना है, अब सेग्रीगेशन इजीली हो गया तो आप मतलब इजीली जो है मतलब उसको बंडल्स को बना सकते हो। अब होता क्या है कि हम ऐसे ही काउंट करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो नोट काउंटिंग मशीन से हम वो यूज कर सकते हैं, तो अगेन टाइम कैन बी सेव्ड। एंड फाइनली रिजल्ट प्रिपरेशन में 2 तरह के फॉर्म हमारे को फाइनली बनाने होते हैं। तो इस स्टेज पे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, डायनामिक इन्फॉर्मेशन क्या है कि कितने वोट कास्ट हुए पर कैंडिडेट वाइज। व्हाट वी कैन डू, अगेन एक इंफ्रास्ट्रक्चर बैकएंड पे हम बना सकते हैं, मतलब आर्किटेक्चर बना सकते हैं जहां पर हमारे को सिर्फ, क्योंकि all static information is there, only you need to feed the number of votes that is being cast. Again they can be reformed into the required किस फॉर्म में चाहिए वो प्रिंट हो जाए रेडी। so in this way we can improve the process. So any questions? Thank you, sir. सर अभी तो इसमें भी देखो ना, हम ट्रेडिशनल प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, मैं तो उसी को देखते हुए, और सारे सबमिशंस हैं हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। हम जो आज की टेक्नोलॉजी, हम पूरा रिवैम्प कर सकते हैं इस सिस्टम को, जो आज टेक्नोलॉजी, एक महीना लग रहा है इलेक्शन कराने में, आप देखो। Thank you so much, sir. Even if your mobile device can be used for casting votes, this is one idea, and European countries are doing it. So it is not a joke. It's happening. We have to cut short the election process. That is a good idea. Next, I would like to call Mr. Amitesh Sharma from Mahatma Gandhi Government Engineering College, and his title is Heat Transfer Augmentation in Solar Collector Using Jet Impingement, a Critical Review. डालना पड़ता है, बेइज्जती होती है, अल्लाह ही अकेली बेइज्जती वजह पूरी। हाँ, इसके साथ टीम लगी। Very good afternoon to one and all present here. I am extremely thankful to the organizers for giving me an opportunity to have
presentation on my topic, which is heat transfer augmentation in solar collectors using jet impingement, a critical review. As far as dividing topics are concerned, it is divided into certain things: introduction, solar energy potential, drawback of solar energy, jet impingement, etc. So I am starting with the introduction. All of you know that energy scenario is changing day by day. As far as focus is concerned, we are focusing on development of renewable energy resources. Even our Honorable Prime Minister has recently put a lot of emphasis on solar energy. Renewable energy sources like solar energy can be used instead of fossil fuels to make clean, long-lasting power, save energy, and reduce the detrimental effect of construction industry on global warming and climate change. Therefore, the scientists in recent times are putting a lot of emphasis on solar energy to prevent the environment and overcome the energy crisis. As far as solar energy conversion is concerned, it can be converted directly to heat energy, which is solar thermal energy, and can be converted to electricity with the help of photovoltaics, which we are using in our households also. Solar thermal is the heat that is extracted from the solar collector, and collector is a device that captures the heat from the sun's energy. This is very basic definition of solar collector. On the other hand, photovoltaics generate electricity from solar energy. The technology behind solar energy, which is called photovoltaic and photovoltaic thermal technology, has both drawbacks and application when compared to other types of energy. We have to address certain drawbacks which prevents better use of this development. As far as solar potential is concerned, we in India have a good solar potential. This is a GIS data which shows that India is having good solar insolation per day, even for the entire duration of the day as well as for the year. We are having sufficient amount of solar energy which need to be harnessed. As far as drawback of the energy is concerned, it is intermittent in nature. All of you know that solar energy is available during the daytime, as sun is only available for the day. We have to use certain phase change materials for using this energy during night times. Solar energy, when we use air as a medium, has poor heat transfer coefficient. Even the heating of solar photovoltaics is also one of the issue. Space constraint and installation cost is also high. Recycling of the material used in solar panel is also the issue. And all of you must appreciate that payback period is quite high. As far as jet impingement is concerned, it serves 2 or 3 applications in solar energy. The technology of impinging jet is utilized in a wide industrial applications such as cooling turbine blades in case of steam turbines, annealing metals in case of productions, chilling electronics in case of our laptops, etc., and cooling solar collectors in case of cooling solar photovoltaics. The thermal performance of the solar heat can be improved using efficient technique known as impingement, or using rough forms to make absorber walls surface area big. In order to increase overall efficiency of the solar panel, the boundary layer is disrupted. This is our article. It is published recently. As far as physics of jet impingement is concerned, I am rushing through this slide. As far as objective is concerned, in this study, we have considered enhancement of heat transfer by employing jet impingement in PV solar system, a discussion of various roles of the target plate, variation in distance between jet and target surface plate, to discuss the scope of our further research in solar thermal correctors using impingement air jet towards maximizing energy efficiency. For this, roughly we have identified 170 articles. Some of the articles were eliminated, and in comprehensive review, we have considered 93 articles from the various refereed journals. I am also rushing through this slide as this is basic slide of solar thermal corrector. As far as geometrical considerations, there are certain dimensionless numbers and certain design aspects which we have to look upon in case of jet impingement. Reynolds number, Nusselt number, Prandtl number, these are dimensionless numbers involved in heat transfer applications. Second is jet target surface distance ratio, and last one is jet to jet separation ratio, which are considered by almost all the researchers in their research work. As far as categorization of jet impingement is concerned, jet impingement solar collector can be categorized as single pass, double pass, concentrated, and jet on the basis of jet configuration.
Further, single pass is single duct, double duct. These are further classifications. I will show some of the classification by diagrammatical view. The first one is single duct, in which PV panel is cooled with the help of air which is passed through the duct. In this, we are cooling the PV panel to increase the efficiency of the panel. In second, we are putting air from the lower channel. It is passed through the holes and it is again cooling the upper PV panel. The second diagram, figure number 7, which shows that. In case of double pass jet impingement, we are using two air passages. One is impinging through the holes and another one is through upper duct. And last one is, it is representation of double pass solar air heater with an impingement jet. And top one are the glass cover to minimize heat losses. These are some of the jet configurations which are used by various researchers from time to time. Figure number 10 is in which the ribs are used in the absorber plate, and figure number 11 shows how the holes are designed for stream-wise pitch as well as span-wise pitch. This is angled jet plate in which the air is sprayed by an angle to increase the efficiency. This is jet impingement by nanofluids. We are using nanofluids. This is again for the cooling of the PV panel. As during the daytime, the PV panel get hot and it is very essential to lower down the panel temperature. And these are some of the key findings. I am also rushing through this. Now, conclusions. There is lot of gap which can be investigated in this area. Jet impingement provides increase in efficiency in collectors as well as photovoltaic systems. We can use excited jet as well as active jets for cooling of our solar panel. We can work upon various configurations. Even working medium can be changed from air to water or some with the help of nanofluids. And this small review can be useful to have a brief idea how jet impingement help in cooling of solar panels. These are some of the references, and at last, thank you. Any questions? Thank you. Thank you so much, sir. Now, coming to the last oral presentation of the day, we have Mr. Pradeep Singh from Atal Bihari Vajpayee Government Institute of Engineering and Technology, and his title is Performance of Battery Energy Storage System for a Grid-Tied DFIG Smart Controller Under Wind Alteration. Is it visible? Is it visible? Hello? You are not visible. Your presentation is visible now. Okay, okay. Thank you. Hello, good afternoon, everyone. Myself, Pradeep Singh, Assistant Professor in Electrical Engineering at GHEC, Pragatinagar, and currently I am doing PhD from LPU, and under the esteemed guidance of Dr. Krishna Arora, Professor and Head, and co-supervisor, my Director and Principal, Sir Dr. Umesh Chandra Thor. So today's my topic, my paper presentation is on performance of battery energy storage system for grid-tied based wind energy conversion system with smart controller under
wind alternations and dips. So this is my table of contents. So firstly, it is introduction about renewable energy, then what is wind energy conversion system, then induction generators in our machine, different types of energy storage systems, and the next one is smart controllers for DFIG based WCCS, and last next one is the proposed model my work that I am doing currently, and result analysis and conclusion. So first one is the introduction about renewable energy. Everyone knows energy obtained from the natural resources or the persistent flows of natural energy in our environment. Such energy may be called as green energy or something else, renewable energy. So for example, solar energy and wind energy. Everyone knows what is solar energy, that heat energy of the sun is directly converted into the electrical energy, and wind energy is categorized into two parts, like firstly kinetic energy of the wind is converted into mechanical energy, and then mechanical energy is further converted into electrical energy. So this is our power scenario in India as on 31st December 2023. That this one is we have maximum electrical generation is from the thermal power plants, then hydro power plants, then wind, then solar. So this next one slide is the power scenario expected by up to 2039-40. So we are increasing. Hello. Hello. It's okay now. Your presentation was not moving. It's now moving. Okay. Please proceed. This one is the power scenario expected around 2039-40. So as the non-renewable energy sources are reducing day by day, so the coal production is the energy from the obtained from the coal is also reducing day by day, and hydro energy potential is also reducing. So we are moving towards the solar energy and wind energy sources. So my topic is on the wind energy conversion system. As we see, here is the wind. If we see from the from the left side, this one is our wind energy that is flowing into the rotor. That is the rotating part blades of the our wind turbine. Then the gearbox is there. This one, that is low shaft and high shaft speed, high speed shaft over there. Then we have the generators in electrical energy. Then we have the converters that converts the AC supply into DC for storage in our batteries or some other devices. Then from DC to AC. Then we have the transformers that are connected on the grid side, and this one is the grid where AC energy, or from where we got the energy. So next one is our generators in renewable energy sources. This one is the self-excited induction generator. So this one is the self-excited generator where this generator is excited by itself to by supplying a reactive power supply to its energization. Then it will work. So due to this energization process, this will its cost will increasing. Then we have the DFIGs. Here, this one is the wind turbine and this one is the DFIG. It supplies power from the both sides. That is from the rotor side, and that is one power is from the stator side. We can extract the power, but one advantage of this generator is that it can work on low speeds and high speeds also. So during low speeds, we get the supply from the grid to run our rotor and synchronize its up to its synchronous speed. Then we can supply the power to the grid. So next one is our energy storage systems.
So we have different types of energy storage systems like electrochemical energy storage systems, batteries, fuel cells, then electromechanical like flywheel, pumped hydro storage, and electromagnetic storage where superconducting magnetic energy storage devices are used. Next one is our electrostatic devices, that is supercapacitors, and last one is the thermal energy storage system. So we are using here our battery and energy storage system. So we have different types of smart controllers in our system, that is fuzzy logic, neural network, genetic algorithm controllers, model predictive controllers, multi-agents controllers, and NFIS controllers. So this one is our control circuit of the TFIG. So here we are using energy storage system, that is battery energy storage system is over here. This one is our energy storage system, and we are using here smart controllers. And these one are our results with the fuzzy logic controllers, that we have provided a voltage dips around in our grid around 25% of the voltage dips in our system. We can see that here. We can see that over this point. We can see that at this point, our battery energy storage system and controller comes in action, and it supports the voltage. It supports the rotor current to its position, to regain its position. And last we have the SOC versus time for wind speed at moderate wind speeds. So this one is our battery charging time. This one is our battery. This one is our battery state of charge at moderate wind speeds. We can see we can see that our battery charging starts from 70 to 76.5%. So this one is our with the fuzzy logic controller. So this one is results, analysis, and conclusion. And thank you. Any questions? Thank you, sir. As we have had an engaging session so far, it's time for a short break. Please feel free to stretch your legs and grab a cup of tea. We'll continue after 10 minutes. Thank you.
Good afternoon, ma'am. Good evening, ma'am. Actually, मैम एक्चुअली हमारे ऑर्गेनाइजर्स ने बोला है कि टाइम लिमिटेशन के कारण ना तो आपकी प्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगी. आप उनको जस्ट सेंड कर दें अपनी प्रेजेंटेशन ना इस टाइम. यस मैम, ईमेल कर देना. कौन सी मेल पे करनी है? हेलो. मैं आपको सेंड कर देता हूँ. RTEST वाली पे ही. यस मैम, आप हमें RTEST वाली मेल पे ही आप वहाँ पे अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो मेल कर दीजिए. थैंक यू मैम. अभी प्रेजेंटेशन नहीं होगी फिर? मैम अभी क्योंकि हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग कमेटी अभी शॉर्ट टाइम की वजह से प्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगी मैम. थैंक यू मैम. यहाँ से बोलेंगे.
And we would like to begin with the certificate and prize distribution. And for that, I would like to invite our worthy chief guest and director, sir, to the stage. So firstly, we are going to distribute the certificates for the people who presented papers in offline mode. So first one is Dr. Naresh Kumar from MLSM College, Sundarnagar. Mr. Anuj Gupta from ABVGIT, Pragati Nagar. Mr. Avnish Kumar from SVGC, Ghumarvi. Mr. Anil Pundir from RGGEC, Nagrota, Bagwa. Mr. Talvinder Singh from Government Polytechnic, Kangda. Mr. Amitesh Sharma from MG Government Engineering College, Jewari, Kotla. Ms. Dimple Chauhan from Career Point University, Hamirpur. छोटा बेटर होगा हाँ जी सर वो एनवायरमेंट रेगुलेशन के लिए हाँ जी थैंक यू Ms. Richa Sharma from Career Point University, Hamirpur. All the best. Mr. Sushil Kumar from HPU, Shimla. Mr. Rajesh Kumar from HPU, Shimla. Mr. Munish Patyal from Atal Bihari Vajpayee University of Information and Technology, Vakna Ghat. Mr. Ashish Thakur from JNGC, Sundarnagar. There is one participation certificate for Mr. Mridul Bansal from NIT Kurukshetra. And now the certificate for best paper presentation offline mode, Mr. Avnish Kumar from SVGC, Ghumarvi.
Now the certificate for best poster presentation, Pratibha and team from Government Hydro Engineering College, Bilaspur. क्या पोस्ट होगा आपने They hold it now. Thank you. I would now request our worthy chief guest to please address our audience. How much time is allotted to me? Infinite. Independent. Good evening, everyone. First of all, I thank Professor Moga, principal of this college, who has invited me and adjusted me as a chief guest of this occasion. I am highly thankful to him, and I am also highly thankful to the organizer and all the students. And I am also highly thankful to the participants who have come from various universities, who have presented paper, and they have attended this conference with a zeal and better participation in today's workshop. Perchance I could not ask what is the meaning of this art test, because this is a new term to me. I will ask this from Monga after the end of the session. So one thing I want to say, that these type of interactions, they are very good for all the technical institute. It may be even a formal education also. So government is also planning to this. You see, most of the school guys, they are coming to the polytechnic, they are going to the engineering college, and they want to have the round of the labs of the polytechnic and engineering college, so that they should be motivated what they have to do, what action they are proposing, and how they can be fulfilled. So I was going through most of the orators, they were presenting the paper. So their confidence was very, very high. You see, when crowd is there, I may not be a chemistry person, but the way the chemistry teacher was presenting her paper, so she had a confidence. So I was happy that at least first thing is confidence. Most of the crowd people, they are not from that subject matter. So from where this thing will come? If you'll attend different conferences, if you'll go from one place to another place. You see, most of the politicians, when they deliver some speech on the first day, sometimes they fumble. After second speech, they gain some confidence. And thereafter, say they become very perfect. Most of you, those are doing BTech, thereafter they will do MTech, thereafter they will do PhD. When they are going as a teacher, they are becoming the teacher of any of the organization. They sometimes will say, sir, I should go to some industry because this teaching is not my baby. In the sense, they can't control the students because the stuff other side of the table or sitting on the benches, there is always a phobia in the mind of a teacher that they may be more intelligent to me. So one thing I want to guide or tell to you, whatsoever is in your mind, go ahead. Whatsoever it is in your mind, it is not 100% that everybody is understanding or everybody is up to that level. Your ideas, sometime the person who are very intelligent on the other side, they might be thinking that he's not a okay man, no problems. But at one stage, that crowd will see he was the most intelligent person. In that very lecture, he has spoken 100 lines, but 2 lines, they are touching my life. He has said something good and I should implement it. So don't worry where you are, what you are doing, what there should be confidence in you. If you have a confidence, definitely you can excel. It is not only a piece of paper that you are getting PhD. There are so many people everywhere. Every third person is nowadays PhD. I have never seen sitting in this August house in the term of teachers, they are less than PhD. But whether they are excelling after doing the PhD, how they will excel? Because nowadays there is a cutting throat competition. Unless you will sell yourself as a teacher, you will sell yourself as a professor,
nobody will recognize you. So none of the organization is better, none of the organization is bad. It is all the students and the faculty which make some organization very good. You might have heard Roorkee. Roorkee is a very small place near Haridwar. So it was the REC. So it is internationally recognized. It is not better than Delhi. It is not better than Gurgaon. It is not better than even Chandigarh. Why Roorkee is excelling in the civil? How they are excelling? The point is the students, the faculty, they have dedicated their lives for making that institute the better one. So this is the case. IIT Mandi, such a remote area in the sense. Some days back, I had been there for some inspection purpose. I am a nominee from the industry department. They have starting some incubation center. You see, even such a far-flung area, they are excelling. In the sense, institute person's name is good, IIT, faculty will come in the name of IIT, that is very true. From where IIT has become a pioneer institute. IIT, you may start at Chirag, you may start it at away from Bandala also. People will go there, students will get the admission. So from where the name has come, because of the dedication of the teachers, dedication of the faculty, dedication of the organizers. So whensoever you will start some function, you will start some doing something, there will be every time criticism. I can criticize, you see, this program in 100 times or by 100 ways. Oh, organization was not okay. Principal has not done anything. That tea, what was served, that was very sluggish. There was no planning in the hall. These are the 100 negative points. What is your attitude? If I will think, suppose if I had to do such type of conference in such a remote area like Bandala, can I do it? First thought will be, it will be very, very, very difficult. And how will you manage? Can I manage some of the teachers? I think when I will say to somebody, nobody will come. Can I ask some of the students, they should participate actively? I think nobody will come. So you see, what Mr. Himanshu has done, he has done a marvelous job. So always learn a art of appreciation. This is the second point. First is dedication, thought. Second is appreciation. Every time try to appreciate. If you talk to any Englishman, मेरा कोई इतना experience नहीं, but what I have heard and what I have heard from, you can say, gentry like you, they never say, as if we Indians were very blunt. He said, how was day? No, it was very sluggish. It was not okay. I'm giving a minor example type of. But English people will say, oh, Mr. Himanshu, if we could have some more sugar, it could have more beautiful. Otherwise, it was very nice. I used to like this. So they convey the things, but in appreciation type of manners. So what we have the tendency as such, we always try to find out the negative points. I have this habit also. I am also Indian. I am not brought from some planet here. What I have learned from other people, always opt the better things what other person has. Let it be a student also. When I used to be the principal of some organization, you see, you will be surprised. I used to talk to the clerk of the directorate also. I used to talk to the clerk of a school also. Suppose I want to go for some LTC. If I will ask, what is LTC? All of the crowd will be silent. What is LTC? Because it is not in your domain. Sir, we are engineers. We don't know LTC. It is a general term. But I don't know what is LTC. So I don't hesitate to ask any of the person. If somebody was telling it is LTC. It is PTP. It is RTEST. It will be very common term for you. And you will be surprised. When I have done my post-graduation, so a kid came to me and she told, कि uncle, ये अनार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अंकल को क्या पता? अभी तुम बड़ा ही हुआ था. मैंने कहा बेटे, मैं तेरा अंकल नहीं हूं. I am just like your elder brother. I had to change the topic. और मैं डिक्शनरी में डालूं तो गूगल चूगल इतना एक्टिव नहीं होता था कि अनार को बोलते क्या है. बच्ची ने सवाल पूछ लिया. उसने ऐसे नहीं पूछा कि मैं गौतम भैया से पूछ रही हूँ, गौतम अंकल से पूछ रही हूँ. फिर मैंने सर्व किया. फिर मैंने कुछ कहीं ना कहीं मुझे किताब में मिला. एक दो दिन तो मेरे को मिला नहीं. फिर मेरे को पता लगा पोमग्रेनेट. फिर मैंने किसी जगह बोला कि ऐसे पोमग्रेनेट. तो एक बच्चे ने मेरे को बोला, नहीं, यू आर नॉट स्पेलिंग ओके, ही वाज फ्रॉम सम कॉन्वेंट स्कूल, दैट्स पोमग्रेनेट, मतलब समथिंग लाइक दैट. सो यू हैव टू लर्न समथिंग. सो स्काई इज द लिमिट. अगर आपने एक रिसर्च पेपर लिख दिया, डोंट फील वेरी प्राइसी. 2 लिख दिया, ऐसा ना सोचो वी हैव डन द मिरेकल्स.
3 लिख दिया, कोई ऐसा नहीं है। आपने 1000 पेपर भी लिखे हैं, कोई बड़ा काम नहीं किया, ये नेगेटिविटी है। 1000 पेपर लिख दिए, ये हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है। अगर आपने 3 पेपर भी लिखे हैं और उनमें से एक पेपर आपका इंटरनेशनली पब्लिश हो गया, नेचर में पब्लिश हो गया, कुडोज टू यू। वो बोलेंगे किस कॉलेज का हुआ, नेचर से, कहते जिस कॉलेज का हुआ, किस बच्चे ने लिखा, यार वी विल टेक द एडमिशन इन दिस कॉलेज। द कंट्रीब्यूशन ऑफ दैट फेलो फॉर राइटिंग दैट पेपर, how many students will pour into Bandla? If they can go to IIT Mandi, they can come to Bandla also. There are some of the regional colleges, not IITs or NITs also. They are doing better because of the faculty. So the dedication, it comes from inner. So इसलिए जब भी आप कुछ काम करो जिंदगी में तो दिल लगा के करो। और सेकंड पॉइंट है, डरना बिल्कुल नहीं है। जो आपको लगता है यू डू इट। एक्सेप्ट एंड ड्राइविंग, मतलब ऐसा नहीं कि आपको दिल करता है, मेरा दिल तो राइट साइड करता है, देन पीपल विल नॉट टॉलरेट एनीथिंग। जो आप बड़े कॉन्फिडेंस से कर रहे हो, विदाउट फियर कर रहे हो, उसमें कम्युनिटी हार्म नहीं हो रही है, देन डू इट। अगर कम्युनिटी हार्म हो रही है, मेरे को इस वक्त अच्छा लगता है कि मैं एक बनैन लगा के यहाँ खड़ा हो जाऊं, बट आई सी एक कम्युनिटी बैठी है, देयर आर सो मेनी लेडीज एम्प्लॉय, लेडीज स्टूडेंट्स, इवन मेल्स आल्सो, दिस डज नॉट साउंड्स गुड। तो मुझे ऐसा नहीं करना है। When I'm alone in my room, I should come in my best and whatsoever it is there. So that depends. Where community is punctured, don't do those type of things. तो ये पॉइंट मतलब ये सब्जेक्टिव भी होते हैं। कोई भी आपने काम करना है उसमें सब्जेक्ट होना है। गुस्सा करना है तो उसमें आपके वर्ड्स में गालियां नहीं होनी चाहिए। If you're an administrator, कई बार गुस्सा आता है। I ask some of my colleagues कि सर आप गुस्सा करते हो, गुस्सा जरूर करो, बंदा अगला माइंड नहीं करेगा। गुस्सा आपने तभी किया है जब डेफिनेटली यू आर एनॉयड, द सबऑर्डिनेट इज नॉट डूइंग द वर्क। बट इफ यू विल पोर योर गुस्सा विद सम गालीज, पीपल विल कैच होल्ड ऑफ दैट। ऐसे आप रिसर्च पेपर लिखते हो, ऑल कंटेंट्स आर ओके, एक लाइन आपने कहीं, क्या कहते हैं, प्लेगरिज्म, ऐसे वर्ड होते हैं ना, आई एम लाइक आई डोंट नो सो मेनी थिंग्स, तो बस उस बात को लेके आपको सस्पेंड करवा देते हैं। There was one professor in Punjab University. His name was Mr. Gupta. He was the head of geology. I am talking of 1983-84, very old time. He has published one of the paper in Nature. उसने क्या किया, जो कुछ पत्थर थे जो जर्मनी में होते थे, उसने शो किया, I got them from उदयपुर in लाहौल स्पीति। तो people will track into this. उसके सबऑर्डिनेट्स को पता था कि तो उदयपुर भाई साहब कभी गए नहीं, ये प्रोफेसर बन गया, ये चेयरमैन बन गया, हम एसोसिएट रह गए। They write a letter to the nature. बड़ा पब्लिशिंग हाउस है ये, बड़ा जर्नल है ये। और उसके बाद इंक्वायरी हुई इंटरनेशनली एंड यूनिवर्सिटी हैज टू थ्रो हिम आउट फ्रॉम द चेयरमैनशिप बिकॉज दैट वाज द फेक डाटा। तो यू सी व्हेन यू आर गोइंग अप देयर इज ए बिग ऑपोजिशन। ये अगर आप बहुत आपके साथ पैसा है तो समझो 10-15 चोर आपके साथ लग पड़े हैं। आपकी इनकम टैक्स रिटर्न, चोर में इनकम टैक्स क्यों नहीं कहूंगा, आप ITR आपकी किसकी स्कैन करेंगे? मोंगा जी के पास लिख दिया 10 करोड़, एकदम स्कैनर। इन भाई साहब ने लिख दिया 10,000, नो स्कैनर। ही हैज डन नथिंग। ऐसा नहीं है कि व्हाट मिस्टर 10 करोड़ मिस्टर मोंगा हैज अर्न्ड, बट पीपल विल स्कैन हिम, IT विल स्कैन हिम। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे आपकी पब्लिकेशंस बेटर होती जाएंगी। तो कृपया ध्यान रखें, आपकी पब्लिकेशन का स्टैंडर्ड बिल्कुल ठीक होना चाहिए, प्लेगरिज्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नकल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपका जो आई मीन टू से टॉपिक है नोवेल होना चाहिए, नोवेल नहीं नोवेल होना चाहिए, और वो कहीं दोबारा रिपीट ना हुआ हो, उसमें आपने सोचना है। इनिशियल स्टेज में व्हाट यू आर डूइंग, नो प्रॉब्लम्स, नो गेन्स, नो पेन्स, समथिंग लाइक दैट। If you have written 3 or 4 I mean to say papers and just getting the job, लोग कहेंगे ठीक है यार लग गया ना लेक्चर, nothing more, क्या है प्रोफेसर बन गया, nothing more। जब आप एसोसिएट जाओगे, प्रोफेसर जाओगे, कोई प्राइज लोगे, कोई आपको चीज मिलेगी, तो आपकी हर चीज स्कैन होगी। तो कृपया करके जब भी आप ऊपर जाते जाओ, पहले तो ऊपर जाने की चेष्टा करें, और जब ऊपर जाते जाएं तो अपने आप को और रिफाइंड करते चलें। अदरवाइज जैसे जैसे ऊपर जाओगे क्या होती है, ऑक्सीजन कम होती है। एवरेस्ट में कौन पहुंचता है? आई वांट टू बी एवरेस्ट विनर। कितने बंदे गए आज तक? 15, 20, 25, 50, 60। अभी हमारे पास अच्छे आ गए कपड़े, फिर भी वही होंगे, 60 होंगे, 100 होंगे। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, हो सकता आप मेरे को जनरल की तरह बोलो कितने गए हैं, बट व्हाट आई वांट टू से, व्हेन यू गो हायर ऑक्सीजन लेवल इज कम। कंपटीशन हमेशा ग्राउंड पे होता है,
फर्स्ट फ्लोर पे थक जाते हैं कुछ, तीसरे पे कहते हैं तू वहां जाइयो मंदिर में रस्ते च मत्था टेक देंगी, फिर आखिरी में वो भक्त जाता है माता वैष्णो के। यू गेट माई पॉइंट? So you see, for achieve that target, you should have energy, and when you have energy, then you can go up to top. And the competition at the top level is very, very less. But to reach top, it is very tough. मैं पूछूंगा आपको टॉप 10वीं मंजिल में कंपटीशन नहीं है, ग्राउंड फ्लोर पे कंपटीशन है, वेयर यू वांट टू गो? सर 10वीं पर जाना आपने खुद है। फिर ठीक है सर, ग्राउंड इज ओके। यू गेट माय पॉइंट? सो प्लीज, these are my type of conveying the things. तो मेरी तो इन्होंने इंट्रोडक्शन दे दी थी बच्चों ने, जो मोंगा जी ने बताया था। सो बेसिकली आई एम एसके गौतम, आई शुड बाइंड इट, थक गए होंगे आप। सो आई हैव डन, जैसे मैंने +2 की, आई वाज अ मेडिकल स्टूडेंट, ठीक है, नॉट फ्रॉम इंजीनियरिंग स्ट्रीम। सो फिर बोलेंगे इस प्लेटफॉर्म पे आई शुड नॉट स्पीक, क्योंकि ज्वाइंट डायरेक्टर ऐसी बात करेगा तो चीजें गलत हो जाएंगी। So I compete for PMT of Himachal Pradesh. So what is the inner information I had? I got 242 marks out of 300 at that time. So I was being selected. There was only 60 seats, but when result came, my marks were shown 202. क्योंकि मेरे भी तो लिंक्स थे अंदर, जिसने मेरे को 242 बता दिया। तो उस टाइम हमारी जो हिमाचल में PMT होती थी, वो बड़ी हेरा फेरी वाली होती रही थी। अखबारों में आपने पढ़ा, इसमें बोलता जो पब्लिक हो उसको, आई कैन स्पीक इट ओवर हियर। सो आई गॉट रिजेक्टेड। पंजाब में मैंने PMT दिया, वहां पे मेरे 185 मार्क्स थे। जो आजकल डायरेक्टर हेल्थ एजुकेशन है हिमाचल में, मिस्टर बेरी, ही वाज माय क्लास फेलो इन सो कॉल्ड, हमारे टाइम प्री मेडिकल होती थी। गोपाल बेरी इज द डायरेक्टर, ही इज माय क्लास फेलो एट हुशियारपुर। सो मेरे नंबर आए 185। आई वाज सिलेक्टेड इन मेडिकल कॉलेज पटियाला। तो मैंने कहा शराब कितनी होती है, आई वाज हिमाचली बॉय, हमने डोमिसाइल बना लिया, क्योंकि आई हैड ए हाउस इन पंजाब आल्सो, बट देयर वाज ए कंडीशन एट दैट टाइम कि वहां पे वोटर होना चाहिए पंजाब का। तो मेरे को किसी पटवारी थे, मेरे पिताजी बोला लिख देते हैं जी वोटर, लिख दिया उन्होंने 10 15 16। वो बच्चे को पता लग गया, कहते अगर गौतम तूने एडमिशन ली हम कंप्लेंट करेंगे, हम डरपोक आदमी हैं, भगवान गॉड फीयरिंग आदमी है। मैंने पंजाब में एडमिशन नहीं ली, एंड व्हाट ऑप्शन आई हैड लेफ्ट? There was an option going into the Punjab University. I had 81% marks in pre-medical. उस टाइम के 81%, I am telling you. So हमारी 25 सीटें होती थी बी फार्मेसी में पंजाब यूनिवर्सिटी में। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा आपको शायद रोचक भी लगे और कहीं आप मोटिवेट भी हो, कहीं डीमोटिवेट भी हो कि आप नहीं कर पाए। तो 14वां ओपन सीटें थी, 11 रिजर्व थी, whatsoever it is there, probably I was the topper of that merit and I got selected. मेरे को दुख था कि आई हैव ट्राइड फॉर PMT, नंबर बड़े कम सीटें होती थी, अब तो 200 हो गई, मेडिकल कॉलेज 9 हो गए, स्काई द लिमिट, क्वालिटी डिक्लाइन हो गई। 60 में क्रीम होती थी, 6 बंदे नॉमिनेशन के भी होते थे, कई उसमें भी कमियां होती हैं, कमियां शुरू से चली हैं, सदियों से चली हुई हैं। एनी हाउ, सो आई डन माई बी फार्मेसी। बहुत उससे नहीं की, दिल से नहीं की, जैसे आपके बच्चे आए होंगे ना, वो दिल से नहीं की यार, आ गए माता पिता ने भेज दिया यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो मैं तो स्टफ फिल्म इंडस्ट्री का था, मैंने तो एयर होस्टेस बनना था, मैंने तो कहीं और जगह जाना था, मैंने तो कहीं उस कॉलेज में पढ़ना था। तो दिल में रह जाती है बात। फिर भी मुझे पता था कि आई एम हिमाचली गाय, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना है, पास तो एटलीस्ट होना है। जब हम पास करने की सोचते तो फर्स्ट डिवीजन आ जाती थी, जब हम फर्स्ट डिवीजन की सोचते तो थोड़े ज्यादा नंबर आते थे। तो एनी हाउ आई हैव डन माई बी फार्मेसी। सो मैं थोड़ा सा फिर पीछे चल जाता हूँ। मेरी एजुकेशन हुई गवर्नमेंट हाई स्कूल चुराग से। इसलिए मैं बताता हूँ ऐसा कुछ नहीं होता कि यू शुड बी एवरी टाइम कॉन्वेंट एजुकेटेड, ऐसा कुछ नहीं होता। गांव से बच्चे निकल के भी कहीं ना कहीं मेरे जैसे टीचर बन जाते हैं। सो इन 5th क्लास, जिसको हम 5वीं कहते हैं, आपके पता नहीं क्या स्टैंडर्ड्स कहते हैं, हम जैसे पहाड़े कहते थे, आप टेबल कहते हो, तो मुझे स्कॉलरशिप लगा 10 रुपए पर मंथ, 10 रुपए महीना मुझे स्कॉलरशिप लगा। और स्कॉलरशिप मिलता था कितने लिए? 3 साल के लिए। सो मेरे मंडी डिस्ट्रिक्ट में आई वाज द टॉपर ऑफ दैट। मैं अपनी प्रेज नहीं कर रहा, सो सेल्फ मेरी प्रेज में मैं बताता हूँ कहां से मोटिवेशन आ सकती है। सो मेरे नंबर 147/150 आ गए। तो मेरे एक एडजॉइनिंग स्कूल में एक मनसाराम होते थे हमारे मिनिस्टर, वो कुछ टाइम पहले एक्सपायर हुए, कुछ खबरें आप पढ़ते रहते हो, करसोग से थे वो। उनका बेटा मेरा क्लास फेलो था किसी दूसरे स्कूल में। माई फादर वॉज ए टीचर एंड ही हैड पुट ए कंप्लेंट टू द गवर्नमेंट कि ये मास्टर का बच्चा था, तो इसने नकल मारी होगी और टॉपर बना दिया होगा इसको।
So inquiry has been initiated. ये तो मेरे को बाद में पता लगा. So a team of 2 persons have been made. ये तो मेरे पिताजी ने बताया. There was some professor from Mandi, Mr. बालकृष्ण शर्मा, और एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल करसोग होता था. वहां के 2 प्रिंसिपल्स को, वहां का प्रोफेसर, वहां के प्रिंसिपल को इंक्वायरी में लिखा और उन्होंने मुझे ऐसे 11 बजे बुलाया कि बेटे बैठो, आपसे हमने कुछ पूछना है, हम आपसे पूछेंगे, आप जवाब दोगे? मैं कहा यस सर, व्हाई नॉट, आई विल. उन्होंने मेरे से लिखाते गए एंड बेटा यू विल बी सरप्राइज्ड, आई गॉट 150 आउट ऑफ 150. उन्होंने कागज लगाया, सेंड टू द रिपोर्ट टू द मिनिस्ट्री, उस पता नहीं कौन मिनिस्टर होंगे, एंड आई गॉट द स्कॉलरशिप. इट इज नॉट क्वेश्चन ऑफ ओनली 10 रुपीज, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ प्राइड. सो ऑपोजिशन वहां भी आ गई. एक मिनिस्टर के बच्चे को नहीं मिला तो उसने मेरे को एलिगेट कर दिया, बट हमें पता नहीं, बच्चे थे, छोटे छोटे थे. इन 8th आई गॉट स्कॉलरशिप इन साइंस, 25 रुपीज, 25 रुपए महीना. कितना होता है? मैंने अभी वो पासबुक रखी है जिसमें 10 रुपए जमा कराए थे. बेटा उसको बंद कर दो कि चलना है, ठीक है, आई शुड नॉट टच एनीथिंग. सो व्हाट आई वांट टू से, मुझे 25 रुपीज स्कॉलरशिप मिला, 300 रुपए एक साल के, 600 रुपए मिला. 10वीं में मुझे 100 रुपए स्कॉलरशिप मिला. सो आई वाज 17th और 18th इन द हिमाचल बोर्ड मेरिट. फिर हम होशियारपुर चले गए, वहां पे मुझे स्कॉलरशिप मिला 11th में भी. फिर उसके बाद पीएमटी में मुझे रिवार्ड नहीं मिला, मे बी स्टार्स और समथिंग लाइक दैट, या मिस कैलकुलेशन, नंबर ऑफ सीट्स लेस. फिर बी फार्म में आई वाज नॉट ए वेरी ओके टाइप ऑफ स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट, बट फेल नहीं होने की कोशिश की. उसके बाद हमारे टाइम गेट होता था. गेट वाज मैंडेटरी फॉर गेटिंग द स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी एंड फार्मेसी. Okay, up to now it has been changed. It has become GPAT and all that. So at our time, there were 2 papers of the GATE, Graduate Aptitude Test for Engineering. पहले वाले 12 सब्जेक्ट होते थे पहले उसमें सेट में. उसमें you have to select any 4 topics or subjects, और उसमें आपको 50% मार्क्स लेने हैं. Then your second paper has been evaluated. तो इंजीनियरिंग वाले भी रह जाते थे क्योंकि जर्नलाइज्ड पेपर थे, उसमें बायोकेमिस्ट्री था, बायोफिजिक्स भी था, थर्मोडायनेमिक्स भी था. मुझे आई कैन रिकॉल सो मेनी थिंग्स. तो मैंने एक दिया, 3 तो मेरे अपने सब्जेक्ट के लग रहे थे मुझे, मेडिकल साइड के. एक मैंने थर्मोडायनेमिक्स भी लिया, यू विल बी सरप्राइज्ड. और मेरा जो पेपर 1 था उसमें मेरे 72 मार्क्स आए. 72 आए मींस आई वाज ओके फॉर दिस. और सेकंड वाले में मेरे 96 आए. फिर उनका एवरेज निकाला और मैं गेट क्लियर कर गया. जो बच्चे गेट क्लियर करते थे उनको एआईसीटी, यूजीसी और स्कॉलरशिप देती थी. तो हमारे टाइम पहले 600 रुपए होती थी, और जैसे मैंने एम फार्म की हमारी 1800 रुपए हो गई. 1800 रुपए स्कॉलरशिप होल्डर हूं मैं उस टाइम का, 18 महीने. और उस टाइम यूनिवर्सिटी में पेरेंट्स बच्चों को 300 रुपए देते थे, और मेरे हॉस्टल के कमरे का किराया पता कितना था? 4 रुपए. पंजाब यूनिवर्सिटी में 300 रुपए वाला काफी रिच स्टूडेंट होता था पंजाब यूनिवर्सिटी में. और मेरे पास कितने पैसे होते थे? 1000 रुपए मेरे पिताजी भेजते थे, बिगड़ा हुआ बच्चा. 1800 रुपए मैं स्कॉलरशिप लेता था, 250 रुपया. मेरे पास मोटरसाइकिल थी यामा, और मैं शिमला से चंडीगढ़ तक 1.5-2 घंटे में पहुंचता था. आज हम बच्चों कहते हैं ये देखो, ये साइन नहीं आपने देखा, ऐसा नहीं देखा. मेरी बात से आई एम नॉट मोटिवेटिंग यू. उसमें बचपना था, गलती थी. शिमला से चंडीगढ़ तक ट्रैफिक नहीं था. और उसके बाद 86 में मेरे पिताजी ने मुझे स्कूटर लेके दिया था, और 89 में मैंने मोटरसाइकिल ले लिया, जो मेरे कुछ पैसे भी हुए. और हमारा एक वर्ल्ड कप होता था, जाते सॉकर, 86 में 90 में जो वर्ल्ड कप होता है ना, फुटबॉल के मैचेस को कहते हैं सॉकर, वर्ल्ड सॉकर. तो जब मैंने 86 में मैच देखे तो मैंने कॉमन रूम में देखे ऐसे, वहां हमारे टाइम नीग्रोज बहुत होते, नाइजीरियन एंड ऑल दैट. उनकी कुछ स्टिंक आती थी, होते तो मेरे से भी शायद आती होगी, पर उनसे कुछ ज्यादा ही आती थी. तो मैंने प्रण कर लिया था कि जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप होगा मैं अपने कमरे में देखूंगा. और मैंने उस टाइम 16,000 रुपए का टीवी लिया 90 में. 16,000 रुपए का टीवी. अभी तक कुछ टाइम पहले मैंने किसी पीएन को दिया कंडा घाट में, उसमें 12 चैनल थे. नेल्को कंपनी है टाटा वालों की. एक वीडियोकॉन टीवी होता था, पीआईपी, पिक्चर इन पिक्चर, वो 16,000 का होता था, कॉस्टलेस टीवी. कभी एम्स छोटे नहीं रखे, चोरी नहीं की. मैं एम्स की बात बता रहा हूं. ऑलवेज थिंक बिग. सारा सर्वे किया हमने, महीना लगाया मैंने टीवी को सर्वे करने के लिए. मैंने किस्तों पे लिया, 1200 रुपए किस्त देता था मैं उसकी, और अपने कमरे में हीरो बन के पूरा वर्ल्ड कप देखा. कोई नहीं आ रहा, किसी को लिमिटेड को बुलाना, गौतम आ जाए, बस 2 ही आएंगे, मतलब समथिंग लाइक दैट. आई एम टॉकिंग ऑफ 1990 का वर्ल्ड कप. यू सी, आई कैरिड दैट. आई हैव अटैचमेंट विद द ओल्ड थिंग्स. मैंने अपने पिताजी के ट्रंक भी रखे हैं. मैंने एक उसको बुलाया बेचने वाले को, मैं कितने का ले गए? तो गुरु जी 40 रुपए. तू हाँ चलो, घर बंदे 50 दे देंगे.
ड्रंक यू माइट हैव सीन ओल्ड बच्चे को, गांव को दादों दूधों के देखे होंगे आपने। सो बेटा ये कुछ हमें उन लोगों को अटैचमेंट है अपनी चीजों के साथ। तो टीवी एंड में मेरे पास 2-3 टीवी हो गए। फिर मैंने उस पिन को दे के आया कंडा घाट में। फिर मैं 1-2 बार उसको पूछा, मैं क्या चल रहा है, चल नहीं रहा और मेरे को खुश करता, हाँ गुरुजी ठीक चला रहा। मतलब इट इज ए टाइप ऑफ अटैचमेंट जो कहीं हमारे जनरेशन को होती थी। हमें अपने पेरेंट्स से बड़ी अटैचमेंट थी और हमें अपने बच्चों से बड़ी भारी अटैचमेंट है। अब नया थोड़ा चेंज आ गया आपका ट्रेंड। आपको अटैचमेंट मोबाइल से ज्यादा है, आपको अटैचमेंट दुनियावी चीजों से ज्यादा है। डोंट माइंड, उसमें भी घबराने की कोई बात नहीं। नाउ इट इज योर पेरेंट्स आर वेल टू डू। आज की डेट में एक फोर्टिस का नंबर डालेंगे, एम्स का नंबर डालेंगे, एम्बुलेंस कम टू देयर फुटस्टेप और उनको आपके पेरेंट्स बीमार हैं उनको कैरी करके चले जाएगी। हमारे टाइम खुद लेके जाना पड़ता था। आजकल 108 आ जाती है ना, बटन दबाओ तो आ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर नई जनरेशन नई टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व हो गई है तो पुराने बुजुर्गों को कोई घाटा हो रहा है। अब वो मोबाइल पे किसी भी बात कर लेते हैं। उनका बच्चा कनाडा है, वो वीडियो कॉल करता है, वीडियो नहीं बटन दबाए आता है ठक, फिर वो सीधी दे स्टार्ट टॉकिंग। चेंजेस हैं। तो पेरेंट्स भी अगर जैसा हमारी जनरेशन के पेरेंट्स ना कर्ज बहुत कर रहे हैं बच्चों को, तो कनाडा चला गया, तो अमेरिका चला गया, हमारा क्या होगा, हाँ तो मरी जाना। नो, दे शुड नॉट क्राई। अगर बंदा सिंगापुर से चलता है, दिल्ली आने में कितने घंटे की टाइम लगेगा उसको? 3 घंटे। पढ़ना चलो फ्लाइट टाइम गूगल में मिल जाता है, 3 में भी 30। और अगर आपने यहाँ से रोडू जाना हो आपको 6 घंटे लगेंगे, और आपने यहाँ से उदयपुर जाना हो आपको 8 घंटे लगेंगे। ना ये allows with you. So this is the bent of mind. So convince your parents कि मैं फुटस्टेप में और फोन करो, 16 घंटे में बंदा अमेरिका से यहाँ आ जाता है। और मेरे फादर साहब एक बार गिर गए चुराग में, मेरे को टेलीग्राम मिली तीसरे दिन, और उसका देखो इतना वो रहा कि उनका जो पेल्विक गर्डल डिसलोकेट हो गया था, उनकी टांग मतलब आधा इंच छोटी होगी, थोड़ा लिंप मारते थे। मैं तीसरे दिन पहुंचा, जब टेलीग्राम आए तो टेलीग्राम में लिखा हुआ योर फादर सीरियस, और हमारे तथा लिख दिया सीरियस। तो हम सोचे, फिर मैं एकदम मैंने मोटरसाइकिल उठाई, रोडू में आई वाज ए लेक्चरर देयर। मैं इसलिए बता रहा घरेलू बन के बात बता, पता नहीं अच्छी लग रही तो बोलूंगा, तो नहीं बोलूंगा। सुनना चाहते हो? तो आई स्टार्ट माई जर्नी, और मैंने 2-2:30 बजे चला। आखिरी बस 1 बजे आती थी रोडू की। हाँ तो कितनी गाड़ियां जाती हैं, इनके पास गाड़ी, इनकी सबके पास 2-2 गाड़ी होनी चाहिए, बच्चों के पास गाड़ियां होनी आजकल। मेरी बातें समझे। मोटरसाइकिल में वहां पहुंचा तो जिस हमारे घर के पास छोटी सी लाइट जली, और मैंने वही समझा हमारी लाइट जल गई है। वो थॉट है ना, नेगेटिव थॉट्स। जब अंदर जाके देखा तो 1-2 बंदे बैठे हुए, तो उन्होंने मेरे को घूरा, गांव वालों ने, मिल गया टाइम आपको, मतलब ऐसे टोंट सा, गुस्सा तो बढ़ाया। फिर आई कैरिड हिम, आई टेकन हिम टू होशियारपुर। फिर उनको ट्रैक्शन लगाई, ऑपरेशन तो उनका नहीं हुआ, पर उसने बोला थोड़ी सी टांग हल्की सी रह जाएगी। उस टाइम उनके 10,000 रुपए का खर्चा हुआ था। तो मैं मोटरसाइकिल वहां रखी, वहां से मैंने टैक्सी की, टैक्सी कहाँ मिलनी है, फिर बंदा भेजा बस पे, फिर टैक्सी करसोग से लाया। मतलब देखो कितने क्रूशियल टाइम्स थे। आजकल आप बातें करते हो, यू आर आनंदित। मतलब ये टेक्नोलॉजी का इतना अच्छा फायदा है, जब मर्जी आप कर लो, किससे बात कर लो। माय डायरेक्टर कैन टॉक टू मी इमीडिएटली, माय मिनिस्टर कैन कॉल मी इमीडिएटली, आई कैन कॉल टू एनीबॉडी एल्स। डीजी साहब ने अभी इनको फोन पे बात किया। फिर आई मूव्ड देयर, पिताजी का इलाज कराया, फिर हमारे साथ रहे। फिर वो कहते देखो यार तू ऐसा बेटा है, तूने मेरे की आशीर्वाद तो मिलता है इफ यू डू समथिंग। तो कीप इन माइंड, अगर आपके पेरेंट्स हैं, अगर आप दूर भी हैं, तो आप डिटैच मत होइए। टेक्नोलॉजी को थोड़ा कभी छोड़ दें, उनके साथ 2 मिनट बात कर लें, दे फील हैप्पी, मेक ए टाइम। आजकल के जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट क्या है, सबने लाया ना पेरेंट्स टाइम, या किसी ने पिता का नाम ऐसे लिखाना, इरिटेटिंग टाइम। मतलब कि यार 7 बजे बहुत करनी है, एकदम सब जुटे हो जाते हैं 7 बजे, यार पापा से बात कर लेते, पापा से बात कर लेते, मम्मा से बात कर लेते। नो, दिल से बात करें। 5 मिनट बात करनी है। लड़कियां बेचारी करती हैं, लड़कियों के लिए आई एम नॉट सो नेगेटिव, पर बच्चे आजकल थोड़ा सा, लड़के थोड़ा सा शरारती हो गए हैं। तो कृपया करके अपने पेरेंट के लिए, दूर भी बैठे हैं, 2-4 मिनट का टाइम निकालें, और वो सी चेंज हो जाए। आज उनको फोन करो, वो सोचे सी चेंज क्यों होगी, ये कौन सा ऐसा काउंसलर आ गया था आपको पढ़ाने आज, समथिंग लाइक दैट। डाउट भी करेगा। फिर कहना तू आज मैं प्यार नाल गल की, तू तां ही बोलिया कि आज बड़ी प्यार नाल गल करा रहा, तां ही नहीं मैं करता। नो, एक चीज मैं बता दूं, वन थिंग आई वांट टू टेल यू मोर। एक जो बच्चा होता है ना, और एक बूढ़ा होता है, इनकी नेचर सेम होती है। मैं अपनी बेटी को दूध देता था तो मेरे फादर कहते थे, मुनिया दूध देता, हाँ मुंजो नहीं देना, मतलब समथिंग दैट। तो ये एज गैप आ जाता है। कहते बच्चे और बूढ़े में फर्क नहीं होता। तभी देखना दादा और पोता फ्रेंड्स होते हैं। वो बॉल फेंक रहा होता है, वो इसलिए नहीं तो मेरा पोता है, वो भी बच्चा बन गया होता है। क्योंकि अब मैं थोड़ा साइंटिफिक बात करता हूँ, आपके ना ये जो हमारे नर्व सेल हैं,
ये सेनाइल होते जाते हैं, वीक होते जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। बच्चे की जो नर्वस ग्रोथ है कम होती है, फिर हम इंप्रूव करते हैं, मैग्नीफाई होते हैं। ओल्ड एज में भी ये चीजें कम होनी शुरू होती हैं। 90 साल के बाद वो भूलना शुरू होता है। अपने बेटे को कह रहा होता है कुतु है हिमांशु, मतलब वो सामने खड़ा, मैं मुझे नहीं पता हिमांशु नहीं है तू, मतलब दुनिया भी सोचेगी। डोंट माइंड, दीज आर माइनर थिंग्स। 90 के बाद की ये स्टेजेस आ जाती हैं, क्योंकि मैं तो बड़ा वाइडली ट्रैवल्ड हूँ, मैंने कई फैमिलीज में ऐसे लोगों के जाता हूँ। तो कृपया करके मेरे बच्चों के लिए स्पेसिफिकली एडवाइस है कि अपने पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा टाइम जरूर निकालें। इफ यू आर बिजी, इतने ज्यादा पेपर बना रहे हो, इतनी ज्यादा पीएचडी कर रहे हो, सैटरडे संडे मेक ए टाइम, उनको थोड़ा सरप्राइज हो, वो हैरान हो। और सरप्राइज का मतलब ऐसा ना हो कि हमारे को किसी ने बोला जी आज टाइम करना है, मतलब आप थोड़ी दिल की बात करें, हो सकता दे विल शेयर समथिंग विद यू। आप दूर बैठ के भी यू कैन गिव द हीलिंग इफेक्ट टू योर पेरेंट्स। और उनको ज्यादा अपेक्षा उनसे ही होती है, पैसे की उनसे आपसे 0% अपेक्षा है। जो मीन्स है उनके पास भी गाड़ी है, वो ड्राइवर नहीं चलाने को मिल रहा है, उनको गाड़ी उनके पास आपसे बढ़िया है, उनके पास जीपीएफ बहुत ज्यादा है। बस उनको होती है कि मेरा बेटा या बेटी वीक एंड पे मेरे को 10 मिनट का टाइम दे। अगर नजदीक हैं तो कभी चले जाया करें, दूर हैं मतलब कोई बंदा केरला से है तो टेलीफोन पर बात कर ले, तो उनको इतना आनंद आएगा ना, मतलब आशीर्वाद ही देते रहेंगे। और कोई भी बंदा आपको मिलता है टीचर तो उनको विश करें। मैं नीलोखड़ी पॉलिटेक्निक में गया तो आई वाज ए फार्मा पर्सन, तो मेरे फार्मेसी वाले मेरे को नमस्ते करते थे, मैकेनिकल वाले नमस्ते नहीं करते थे, सिविल वाले नमस्ते नहीं करते थे। मैंने रोक लेना, आप आए कि सिविल को नमस्ते करो, मैंने कहा पागल सा है नमस्ते करो। फिर ऐसा हुआ, फिर मैंने उनको काउंसलिंग करनी जैसे आपको कर रहा हूँ। कुछ दिन बाद मेरे को मैकेनिकल के उनमें से बाई चांसलर हैं किसी यूनिवर्सिटी में राजस्थान में, पहले मानव यूनिवर्सिटी में थे, मिस्टर गोम्बर करके, मेरे को नाम बोला, चलो आई विल रिकॉल इट, मैकेनिकल के हेड थे उस टाइम। वो कहते हैं यार आजकल हमारे बच्चे ना नमस्ते करने लग पड़े, पता नहीं कौन बंदा इनको क्या समझाता है, हम तो इरिटेट हो रहे हैं, जैसे अचानक ही नमस्ते कर दो ना, जैसे मोंगा जी कह रहे थे। उसके बाद ऐसा कल्चर हुआ कि मेरे फार्मेसी के बच्चे सारे टीचरों को नमस्ते करते थे। और एक चीज मैं और बताऊं, उस टाइम फार्मेसी डिप्लोमा में बड़ी टफ एडमिशन होती थी, जिसने कर लिया उसने केमिस्ट शॉप खोल दी। उस टाइम प्राइवेट कॉलेज में 30 हजार पर डोनेशन देते थे। आई एम टॉकिंग ऑफ 86, 30 हजार में तो बंदे को रिटायरमेंट के नहीं मिलते थे। 2,500 पेरेंट्स की नौकरियां थी। मेरे फादर जब मेरे को 1000 रुपया भेजते थे तो मेरे फादर ने मेरे को बताया कि मोआ मेरी तनख्वाह 1900 रुपया है, 1000 तो मैं तिजो पे ज्यादा। आई एम टॉकिंग ऑफ दैट टाइम। उस टाइम 30,000 डोनेशन होती थी। उस टाइम एमएससी बच्चे, बीएससी बच्चे डिप्लोमा फार्मेसी करने आते थे कि लाइवलीहुड बहुत है, बहुत अच्छे बन गए। उसके एक और स्टोरी सुनाऊंगा मैं, बच्चे कहाँ गए, पर बड़ा टाइम लग जाएगा कि कहाँ पहुंचे हो, कैसे कैसे। तो मैं इतना स्ट्रिक्ट टीचर था सो कार्ड, आजकल तो नहीं कर सकते, आजकल तो सुप्रीम कोर्ट के एक्ट दिस एंड दैट, मैं उनको बेंच पे खड़ा कर देता था। मतलब माई एज वाज अराउंड 22-23 साल होनी। तो जो एमएससी करके आया वो भी 22-23 साल, उसने टॉपिक तैयार दिया, मैंने उसने पढ़ के नहीं आया, बेंच पे खड़े हो जाओ। वो लोग हैरान होते थे, यार ये चीज क्या है, बताना जा बंदा और ऐसे कर देता है। पर मुझे पता है, मैं टीचर की कैपेसिटी से बोल रहा हूँ, और उनको पता है कि हम उनके स्टूडेंट हैं। वो सारे के सारे बच्चे टॉप गन्स हैं इस वक्त। वो अच्छे उन्होंने होलसेल की दुकानें, रिटेल की तो पता है कितनी कितनी लगा ली है। उनके पास एक दो फेसबुक पे फोटो है, क्या आती BMW, एक होरुस तो भी लेमोजिन, ऐसी ऐसी गाड़ियां उनके पास है। होते हैं ना नाम ऐसे ऐसे, मैं तो फाल्टो वाला आदमी हूँ। यू गेट माय पॉइंट। बहुत खुशी होती है। आई एम नॉट क्रेजी, नन ऑफ द टीचर विल आस्क यू कि अपनी सैलरी से मुझे 5 रुपए भी देना, बस यही खुशी होती है। टीचर के पास सबसे बड़ा सेट है, मैं टीचर्स के लिए बोल रहा हूँ कि अगर उनका बच्चा कहीं जाके कुछ करता है तो दिल खुश हो जाता है। मेरी बात नहीं समझे। कल मैं कहीं सुंदरनगर में घूम रहा था तो किसी केमिस्ट शॉप के सामने गया, तो मैं वहां पे खड़ा हो गया। वो लड़की फोर तो नहीं हो रहे, सर आपने पहचाना नहीं? मैं कहा हाँ पहचान लिया, कंडा घाट में होनी। कहते सर आपका जरका आप भी बहुत है। सर हमें तो बहुत डर लगता था, उतना भागो भूत आया, समथिंग लाइक दैट। मेरी वाइफ वाज वेरी जेंटल, नहीं मैडम अभी भी वैसे हैं, मैडम अभी भी स्वीट हैं, मैडम तब अब नहीं बोलते थे, मैडम अब नहीं बोलते। पर मुझे खुशी हुई कि मेरे स्टूडेंट ने मुझे एज ए स्ट्रिक्ट ट्रीट किया। स्ट्रिक्ट का मतलब बदतमीज ट्रीट नहीं किया उसने। स्ट्रिक्ट ट्रीट करना बदतमीज नहीं होता, स्ट्रिक्ट ट्रीट करना कि यू आर समथिंग। एक टीचर को तो एक भाई गुमान की बात है, मेरे लिए तो गुमान की बात है। मैंने कोई फिल्म राजनेता बनना है, मैंने कोई पिक्चर अपनी एग्जिबिट करनी है यहाँ पे कि मैं हीरो हूँ, सारे पसंद करें कि गौतम साहब कितना स्वीट बोल रहे हैं। मेरा 100% रिजल्ट था। व्हेन आई वाज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, इट इज ऑन रिकॉर्ड। मैंने अपने टीचर्स को भी मोटिवेट किया। आई एम टेलिंग यू, नो डाउट एट दैट टाइम स्टूडेंट्स वर वेरी इंटेलिजेंट, नंबर वाज लेस, नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट वर वेरी लेस। तो मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूं जब मैं हेड रहा, अभी भी आपने आरटीआई ले लेनी बोर्ड से, आरटीआई वाले बंदे भी हैं मेरे मित्र यहाँ के,
So 100% result. Don't take it personally. So what I want to say, कितनी खुशी हुई उस 100% से मेरी एडवांस प्रमोशन नहीं हुई, उस 100% से मेरे को ऑल ऑफ सडन किसी ने डायरेक्टर नहीं बना दिया, उस परसेंट से मेरे को किसी ने अमेरिका नहीं भेज दिया, हिमाचल में टी क्यूब के प्रोजेक्ट बने, इंजीनियरिंग कॉलेज के टी क्यूब के प्रोजेक्ट सबसे पहले मैं था हिमाचल में एज ए पॉलिटेक्निक HOD, सबसे पहले कंडाघाट में आई हैव मेड द प्रोजेक्ट। सुंदरनगर वालों ने नकल मारी, हमीरपुर में नकल मारी, हमें 2.5 करोड़ रुपए मिले। फिर इन्होंने मेरे प्रोजेक्ट की नकल मरवाई हमीरपुर वालों की, आप सुनाता हूँ। फिर जो रिपोर्ट आई ना एक दिन, मैंने वहां क्या बोला डायरेक्टर वालों को कि भाई साहब इनको बोलो कि जहां मैंने फार्मेसी लिखा वहां सिविल सुबल तो लिख दे। तो जो प्रोजेक्ट जाना था ना, दैट हैज टू बी एग्जीबिटेड। 12 कॉलेजों ने बिड की या 9 कॉलेजों ने, जितने कॉलेज सबने बिड की, उसमें 3 को सिलेक्ट हुआ। सो व्हाट आई वांट टू से, आई वाज द नोडल ऑफिसर लाइक दिस। फिर उन्होंने बी फार्मेसी खोलनी है, सबसे पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट हिमाचल में मैंने बनाई। तो मेरे डायरेक्टर ने बोला, और रोडू चलाई उन्होंने, चलाना मैं कंडाघाट चला था अपग्रेडेशन करके। मैंने हरियाणा में बात की, जैसे मोंगा जी लगे रहते, दिल्ली में बात की, चंडीगढ़ में बात की, पंजाब से बात की, वहां डॉक्यूमेंट लिए। फर्स्ट टाइम आई हैव मेड द हाउ टू मेक द DPR फॉर स्टार्टिंग ए न्यू कोर्स। उसी DPR की कटवट करके आपके कॉलेज चले। हमारे पॉलिटेक्निक के टीचर, हमारे इसलिए बोलता हूँ बड़ा खुशी होती है, हमारे पॉलिटेक्निक के टीचर ने ही सबसे पहले 2003 में आपका GN चलाया। हमारे टीचरों ने बताया, और हमारे बच्चे एक्सेल किए, पुराने वाले बंदे को अमेरिका तक पहुंच गए। हमारे टीचर बाद में यहाँ पे प्रोफेसर बने, हमारे टीचर यहाँ पे प्रिंसिपल बने, जो पॉलिटेक्निक सिस्टम में थे। बड़ी खुशी की बात है। मैं हमारे ही फैकल्टी फार्मेसी की जो डिप्लोमा फार्मेसी पढ़ाती थी, वहां के 2 बैच रोडू में, मिस्टर सिंह सबसे पहले, मैं वहां का प्रिंसिपल था, वो भी हमने चलाया रोडू में बी फार्मेसी। 2 बैचेस हमने डिप्लोमा फार्मेसी के टीचर से पढ़ाया। ऐसा नहीं है, अगर यहाँ पे M.Tech है तो डिप्लोमा में भी M.Tech था, अगर यहाँ पे M.Pharm है वहां भी M.Pharm था। दिस इज नॉट अ पॉइंट। बस डिफरेंशिएशन हो जाता है कि इंजीनियरिंग वालों को हम सोचते बहुत ज्यादा है। अब आपकी प्लेसमेंट क्यों कम हो रही है? रीजन बीइंग, व्हेन यू गो टू द वर्ड ऑफ वर्क, यू आर नॉट एग्जीक्यूटिंग, यू आर नॉट डूइंग द वर्क। दे आर सेइंग कि सर आपके क्या चलता है? मैं बोलता हूँ मेरे B.Tech भी चल रही है और हमारे B.Pharm भी चल रही है, चल रही है। सर काइंडली सेंड द डिप्लोमा स्टूडेंट्स, डोंट सेंड द डिग्री स्टूडेंट्स। मैं कह नहीं ना, आपको ज्यादा पैसे देने थे। कहते नहीं सर, हम B.Tech को ज्यादा पैसे भी दे दें। मैं आपको थोड़ा एंटी बोल रहा हूँ, दिल में मत लगाना, पैसे कम देते होंगे। कहते नहीं सर, दे आर नॉट डूइंग। इवन आपका जो डिप्लोमा स्टूडेंट है, ही इज डूइंग बेटर। तो बेटा, दिस इज माय हम्बल एडवाइस टू ऑल ऑफ यू, ऑल द स्टूडेंट्स, इफ यू आर ए B.Tech, show you are really B.Tech, you are not diploma holder. If you are M.Tech, show you are really M.Tech. If you are PhD, show your worth, really you are a PhD stuff. तो छड़ यार, क्या इस PhD बात करनी, नकल के ने पेपर छाप लिए हुए हैं, आता जाता इसको है नहीं, इल का टुकड़ा नहीं आता। People should not speak like this. मेरी बात समझे, अपनी बर्थ बनाएं, make a point in life. No doubt B.Tech is much better than diploma in the sense, बेटर इन द सेंस अपनी फील्ड में। अदरवाइज जहां डिप्लोमा लगेगा वहां डिप्लोमा लगेगा, जहां सुई लगेगी वहां सुई लगेगी, जहां तलवार लगेगी तलवार लगेगी। तलवार से पजामा सिल सकते हो? नेवर। वेयर रिक्वायर्ड केमिस्ट्री रिक्वायर्ड। लेबर के बिना मैसन काम कर सकता है? नेवर। बट मैसन इज हाईली पेड, कंपैरेटिवली बेटर पेड। तो व्हाट आई वांट टू से, इफ यू आर B.Tech स्टूडेंट्स, तो अपने आप को B.Tech बन के दिखाओ, और आपकी मेहनत और आपकी लगन ही आपको वहां पे हो रही। जो पेपर छापने हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ PhD मत छापें, उतना की छाप लो कि यू शुड कन्फर द डिग्री इन द डॉक्टरेट डिग्री, बट आप सब्जेक्ट मैटर में कहीं ना कहीं प्लीज एक्सेल करें। एंड वन मोर थिंग, ये तो फिर अपनी कुछ ज्यादा प्रेज होगी कि डिप्लोमा में, और सबसे पहले ISO हिमाचल में मैंने चलाई। मैं वर्ड बोल रहा हूँ रावण की तरह, डोंट माइंड। सो ISO फर्स्ट इट हैज बीन स्टार्टेड इन पॉलिटेक्निक कंडाघाट। सारे जो अपने मॉड्यूल्स बनाने थे अपने दिए। अब तो कहीं के भी ISO चल रही है, उस टाइम ISO मिलती नहीं थी। अब तो आप जाओ, मोंगा शाम को फोन पे बात करते हैं, सवेरे ISO घर आ जाती है। उन्होंने अपने आप को डिवेल्यूट कर लिया। जब डिवेल्यूट होते, सर ISO पुरानी कुछ नहीं नाम की है, कंडाघाट में बोलता होगा क्या ISO, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। बट जब हमने पहले बनाई थी ISO एड स्टैंडर्ड, पुराने जमाने के डिप्लोमा होल्डर, दे आर चीफ इंजीनियर्स, दे मेक द बेटर डिजाइंस। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, थोड़ी आपकी फिर एक्टिविटी कर रहा हूँ मैं। आई वाज ए प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक अम्बोटा, मेरे पास मैकेनिकल का टीचर था। मैंने बोला जाओ इनको मशीन ड्राइंग पढ़ाओ। बच्चे कहते सर इनको तो आता नहीं। मैं कहता तुम्हारे को कैसे पता लगा? श्रोता सब सुन रहा है इस वक्त, सुनने वाला, एक पेपर बच्चे सब बोल रहे थे, जितने भी टीचर यहाँ बोल रहे थे, हमें टॉपिक नहीं आ रहे थे।
पर हमें समझ आ रहा था कि इनको आता नहीं है, हमें समझ आ रहा था बहुत ज्यादा आता है, हमें समझ आता है एवरेज आता है, क्राउड को सब पता लगता है। फिर मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, यू विल बी सरप्राइज्ड। मैंने उसी टीचर को एक ड्राइंग दी, मैं कहा इसको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बना और थर्ड एंगल भी बना। वो पहले हैरान हो गया, फार्मेसी का बंदा क्या टपड़े मार रहा है, उसको ये नहीं पता था। व्हेन आई हैव डन बी फार्मेसी तो हमें मशीन इंजीनियरिंग की वन ऑफ द सब्जेक्ट था, मेरे 72 नंबर थे 100 में, मैं नलायक था लिखने में, लाइनें कभी हल्की कर देनी। वो स्ट्रिक्ट टीचर होते थे, मेरी बात में 72 को बड़े अच्छे नंबर नहीं थे, 72 यू नो, इंग्लिश भी बोल रहा हूँ हिंदी भी बोल रहा हूँ। सो व्हाट आई वांट टू से, उसको ये नहीं पता लगा व्हाट इज थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, मैकेनिकल के बैठे होने, व्हाट इज फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। फिर बाहर जाके पूछता है क्या, उसने वो बनाया नहीं, वो मेरी सीआईडी करता रहा, पता नहीं 2 लाइन आई गई होनी। फिर मैंने उसको एक ड्राइंग दी एंड यू विल बी सरप्राइज, वो बंदा नहीं बना पाया। फिर मेरा एक लड़का था, ही वाज ए इंस्ट्रक्टर, बलवीर, अगर जानते हो किसका नाम सुना, ही वाज ए आईटीआई होल्डर, उसके बाद उसने सीटीआई की थी, यू विल बी सरप्राइज्ड, वो मेरा सीटीआई इंस्ट्रक्टर, वो मशीन ड्राइंग पढ़ाता था बच्चों को और 100% रिजल्ट देता था। लोग कहते हैं हमने इससे नहीं पढ़ना, तो ये इज्जत हुई उस बंदे की बीटेक मैकेनिकल की, उसने को पॉलिटिक्स की। वो इंस्ट्रक्टर मेरे को कहता सर आप बोल रहे हो तो पढ़ा रहा हूँ, मेरे पे आसान किया उसने, सर मेरा टॉपिक नहीं, मैं कहाँ इंस्ट्रक्टर, मैंने कहाँ सीटीआई कलकत्ता से की, पर उसको आईटीआई में भी इतना ग्राइंड किया था उन टीचरों ने कि जितने लेवल की डिप्लोमा लेवल पे इंजीनियरिंग रैंक का सब्जेक्ट था वो बंदा इम्पार्ट करता था। तो आपको बेटा किसी भी सब्जेक्ट पे 100% महारत नहीं होगी, पर 75% रखें। और जिस दिन किसी ने और बोला जस्ट वेट टुमारो आई विल लेट यू नो, सारी रात बैठो, गूगल सर्च करो, किताबें करो, रेफरेंस देखो, अगले दिन बच्चे को पढ़ाओ, झूठ मत पढ़ाओ। आपके एक टीचर एक दिन गया, मैं क्लास में था, मैं सुन रहा, वो बोल रहा है गुड कंडक्टर्स आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, बच्चे सारे मोबाइल देख रहे। मैंने कहा वेरी गुड वेरी गुड, वो देखे करके रहा है, मैं बैठ गया, गौतम सर आ गए, उसको पसीना आना शुरू हो गया। मैं कहा यू कैरी ऑन, कोई नहीं, आई एम सेइंग ऑफ वन ऑफ द कॉलेज, मैं कभी नहीं बैठा क्लास में, मैं कभी टीचर को ह्यूमिलेट नहीं किया। बच्चों ने इतना अंडरस्टैंड नहीं किया, मेरिट लिस्ट के बच्चे हैं, उनको ये नहीं पता गुड कंडक्टर्स आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। आईआईटी का बच्चा खड़ा कर देता टीचर को, जस्ट होल्ड ऑन, एनआईटी का बच्चा जस्ट होल्ड ऑन, अब वहां भी कम हो गया, तो अभी कहते हैं कैरी ऑन, नो होल्ड ऑन। सो हु इज द बेस्ट स्टूडेंट, जो आपको कहता है होल्ड ऑन, हु इज द वर्स्ट स्टूडेंट, वो कहता है कैरी ऑन। मेरे बाप की दिन तो आईआईटी का टीचर, एक दिन मैं कानपुर में गया, ही इज फ्रेंड ऑफ माइन, वो सवेरे ब्रेकफास्ट करे तो उसके मिस कहते भाई साहब आए हैं, आप बात ही नहीं कर रहे। मैं जब पॉलिटेक्निक का प्रिंसिपल है ना, क्या बात करनी है, हाई लेवल का बंदा, वो खाई जा करता रहा हूँ, गौतम से बात तो मैं कर रहा हूँ। मैं फिर उसको पूछ लिया, मैं कहा भाई साहब कर क्या रहे हो, वो कहते यार इस बार के तो बच्चे ना बड़े टेढ़े से आए हैं, वो होल्ड ऑन कर देते, मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, और क्लास उसने छोड़नी नहीं है। मीन्स जो बंदा वहां पे कोई 19-20 साल से प्रोफेसर मतलब चला हुआ है, मेरी उम्र का था ना, वो कितना क्या होगा, 20 साल तो प्रोफेसर ही हो गए थे, वो भी पढ़ रहा था, क्योंकि उसको किसने करना, होल्ड ऑन। आजकल हम जाते हैं, मेरा टीचर कोई किताब नहीं लेके जाता, अगर जाता तो बुक रीडिंग कराता। इनर्शिया इज ए पॉइंट व्हेन, चुप कर की लग रही गुस्सा खांदी, इन इनर्शिया फिजिक्स हो रही है हमारी। ZN2 मैडम क्या होता है ZN, माँ सेट करना तुझे ZN आ रहा, तुझे नहीं पता क्या ZN, मैडम बता दो मेरे को नहीं आता, मैं अब करूंगी प्रिंसिपल से शिकायत करूंगा, मैं करूंगी। दिस इज नॉट ए पॉइंट, why the teacher has not have a command, you should have a command, teacher should have a command and student have energy to analyze। तो बेटे इट इज ए टीम वर्क, तो टीम पर बनाने की कोशिश करें। अब मुझे लगता है आप थोड़ा बोर होने लग पड़े, मैंने आपको असेस कर लिया है, क्योंकि मेरी पर्सनल बातों से आपको आनंद नहीं आता, जब हमारे बुजुर्ग भी सुनाते हम भी कई बार बोर हो जाते थे, बट मैंने जितना इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की। तो व्हाट आई वांट टू से कि नो डाउट मैं आई हैव बीन सिलेक्टेड इन द फाइजर, में से कुछ पूछ रहे थे कि आप 89 के एमफार्म हो, उस टाइम एमफार्म मिलते नहीं थे, टॉर्च लेके ढूंढते थे। तो मेरे साथ के जो फ्रेंड्स है दे आर जीएम एंड सीएमडी। एक बार मेरे पास आया, ही वाज जीएम ऑफ सम कंसर्न, ग्लेक्सो वाली कौन सी फर्म है, तो कहता गौतम कहाँ है तू, उन दोनों लैंडलाइन पे नंबर आते थे, मोबाइल नहीं होते थे, उसने लैंडलाइन का नंबर लिया बाजार की किसी वो बटन दबाने वाली नंबर से, यहाँ पॉलिटेक्निक है, उसने बोला यार नीचे आ जा, मैं तेरी भाभी के साथ आया हूँ, मेरा चैल होटल में बुक है आज, महाराजा सूट 4000 रुपए का था उस टाइम, सूट की बात कर रहा हूँ। मैं कहता कोई नहीं यार तू रुक जा, कहता नहीं मेरे को 1 दिन की छुट्टी मिलती है साल में, मतलब उसकी उस टाइम तनख्वाह थी 52,000 और हमारी तनख्वाह थी 4000, समझे? अब क्या मैनीफोल्ड होगा, समझे? अब उसका पैकेज कितना है, ही इज गेटिंग ए पैकेज मोर देन 5 करोड़ पर एनम, और मेरा पैकेज कितना है,
वेल 36 लाख 35 लाख सी वेर इज 35 लाख पर एनम 35 लाख महीने की मत समझना हाँ ऐसे मतलब एलिवेट हो जाओ तो व्हाट पर फिर मैंने उसको कैसे कन्विंस किया कि अपने दिल को मैंने कन्विंस किया a person who is getting 52,000 or 56,000 and I am just getting merely 4,000 मैं साल में 12 कैजुअल लीव ले सकता हूँ मैं 18 अन लीव ले सकता हूँ सैटरडे ले सकता हूँ संडे ले सकता हूँ प्रिंसिपल से लड़के भी जा सकता हूँ मतलब पढ़ा दूं नहीं पढ़ाया तो भी कोई नहीं चलेगा मतलब इतना आनंद हाउ यू हैव टू सेव योरसेल्फ उसकी अगर प्रोडक्शन नहीं हुई ना कैप्सूल नहीं बने आउट एंड शिफ्ट में था जो फैक्ट्री है परवाणु में उस टाइम की बात कर रहा हूँ उसके बाद तो उसका बेटा सिंगापुर के भाई बन गए कई ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं व्हाट आई वांट टू से तो कहने का मतलब है कि अगर आपको कहीं फायदा हो रहा है तो कहीं लॉस हो रहा है आपने जिंदगी में अगला स्टेप एक और रखना पहले तो ट्राई टू अचीव दैट अगर 10वीं मंजिल पे नहीं पहुंचे ना तो 8वीं पे पहुंचे 8वीं की विशेषताएं भी बताते रहो अगर आप 5वीं मंजिल पे बैठे 5वीं की विशेषताएं भी बताते रहो डिप्रेस मत हो हाँ 10 पूछे नहीं 10 पूछे नहीं 5वीं 4 से तो ऊपर है यू गेट माई पॉइंट तो मेरे एक ये कोलीग है उन्होंने मुझे एलिवेट किया कि सर ऐसा कुछ नहीं है डोंट गेट डिप्रेस्ड एटलीस्ट यू आर जॉइंट डायरेक्टर एंड बीइंग जॉइंट डायरेक्टर आई एम हैंडलिंग होल ऑफ द स्टेट इन द सेंस he may be PhD but if some official letter is there it will come from joint director you see this is the way how you elevate yourself ऐसा नहीं कि we are going in a fighting spirit but what I want to say so these are the things अगर आप वहां तक नहीं पहुंचाए तो जहां भी हो उसको अप्रिशिएट करो एंड सम टाइम मैरिज केसेस में बच्चियां सोचती हैं लड़के सोचते हैं मुझे कौन सी प्रीत लेडी के नाम नहीं बोलूंगे पंगा पड़ जाए हीरोइन का नाम नहीं या किसने बोला कि मुझे वैसी मिल जाए अपनी शक्ल हमने कभी नहीं देखी आई हैव नेवर सीन चेष्टा है पर ऐसा नहीं है उसके बाद भी जो आपको लाइफ पार्टनर मिल जाए उसमें विशेषताएं देखो कि सवेरे उठ के भाई साहब चाय बनाता है भाई साहब नहीं मतलब हस्बैंड गीजर ऑन कर देता है रॉड तैयार होती है मेरे कपड़े बिल्कुल वार्डरोब से निकाल के रख देता है शाहरुख खान ऐसा करेगा नेवर वो अच्छी हीरोइन ऐसा करेगी वो अपना सूट लेगी so this is the way how you have to convince yourself how you have to survive अगर आपने सर्वाइव करना है मैं सिर्फ इसलिए नहीं मैंने जिंदगी में चीजें खुद इंप्लीमेंट की है आपके सामने बंदा खड़ा है विद एग्जांपल कहीं भी बता सकता हूँ अगले पिछले सारे कहां तक कंप्लेंट हुई कहां तक हुई मींस किताबों वालों ने लिखा है कि अगर आपने सर्वाइव करना है तो सी योर जूनियर्स कोई बंदों को यहाँ तक पोस्ट नहीं मिलती कि मेरे साथ के हेड ही रिटायर हो गए सिर्फ 4 डिप्लोमा यहाँ 4 पॉलिटेक्निक थे 2 ही पॉलिटेक्निक थे हमारे से ज्यादा एजुकेटेड बंदे थे उनको मौका हेड से ज्यादा मिला नहीं वो लेक्चरर रिटायर हो गए हमारे टाइम कॉलेज बढ़ गए हम कोई प्रिंसिपल रिटायर हो गए और कॉलेज बढ़ गए हम ज्वाइंट डायरेक्टर बन गए कोई उम्र में मेरे से बड़ा है वो मेरे से बाद आया वो रिटायर हो गए सी वन शुड बी थैंकफुल आई शुड नॉट कर्स यार मैं डायरेक्टर नहीं बना आई शुड नॉट कर्स मेरे साथ का बंदा डायरेक्टर है हेल्थ सर्विसेज का आई कुड हैव डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन हमारे IAS आगे नहीं बना तो क्या डिप्रेशन ले लूं या उसके साथ फाइट करूं सवेरे डायरेक्टर साहब आओ जरा वी शुड हैव अ फाइट ही विल किल मी ही विल पुट अ चार्ज शीट अगेंस्ट मी कि व्हाट इज दिस न्यूसेंस सो व्हाट आई वांट टू से व्हाट यू आर यू शुड नो हाउ टू एक्सेप्ट समझ रहे हैं You are not happy with my speech. तो आपको बात कर रहा हूँ यहाँ यस ओके थैंक यू तो व्हाट आई वांट ही इज ओवरजॉयड अच्छा नहीं बट ही इज गिविंग दैट टाइप ऑफ जेस्चर ना मुझे लगा नहीं है आई शुड ओवरजॉयड तो जब भी आप बेटा क्लास में जाओ ना एक कहता है ना जितनी बारी हमारी चीजें आ गई ना ये वाली चीजें आ गई उसके बाद हमारा फेस टू फेस इंटरेक्शन है ना वही आज तक चलता है चॉक एंड टॉक मेथड अभी तक भी दी बेस्ट है ओरिजिनलिटी कभी खत्म ही नहीं होती बेशक AI आ गई मैं अब IIT में गया ना आई हैव सच ए कॉन्फिडेंस वो AI के प्रोजेक्ट लाए वो तो पता नहीं अपने प्रिंसिपल से बोल रहे हो डायरेक्टर से बोल रहे हो मैंने उनको बता दिया दीस ऑल योर प्रोजेक्ट्स आर नॉट डोंट लाइक दिस आई मैं कहता कितने बच्चों की जॉब चलेगी सॉरी अर्ली मैं कहता ये 20 इंजीनियर हैं जो AI पे काम कर रहे हैं यू गेट माय पॉइंट तो इसमें से अब 2 बंदे इंजीनियर काम करेंगे 18 बार हो गए तो क्या करेंगे दो को मारे तो आबाद सिर्फ बंदे ने मेरे को कन्विंस किया कि सर सेम बात द मेथड जब राजीव गांधी जी ने कंप्यूटर लाया मतलब ये आर्गुमेंट बट अंडरस्टैंड स्पीकिंग आल्सो
उन्होंने गलत नहीं कर रहे हो, प्रोजेक्ट तो बनाने हैं। मैं कहा नो, राजीव गांधी के जब कंप्यूटर लाए थे सारे हिंदुस्तान आगे बबूला हो गया था, बट लोगों को ये नहीं पता था कंप्यूटर एड है, एड्स नहीं है। टाइप क्लर्क नहीं करनी थी, वो जो क्लर्क टाइप करता था उसको टंग करने कहते हैं। लोहे की मशीन देखी आपने बच्चों ने पुरानी? अभी टाइपराइटर देखा पुराना वही वाला, उसको चुप था, फिर वो पेज खराब हो जाता था, गलत हो गया ना, फिर उसके बाद दूसरा कागज जाता था, फिर उसको गुस्सा आता था, फिर वो आयोडेक्स में जाता था, फिर करता था। मेरा थीसिस पे मैं अपना थीसिस बनाऊंगा, मैं थीसिस अगर मौका मिला तो सारा उससे बनाऊंगा। तो उसने हम उसको पैसे देते 2000 में देते ना उसको थीसिस लिखने की, कि गलती बहुत कम करते थे, रियल गलती कर रहा है, कार्बन लगाते थे 6 कॉपी, वो एड में दिया कंप्यूटर उसको टाइप करने के लिए। आज एवरी क्लर्क इज हैप्पी। मेरा क्लर्क आया, उसने डेट लिख दी, मिस्टर गौतम विल रिटायर ऑन 25 भाई। मैं कहा मोआ मैं 24 होना, कट एंड पेस्ट फटाफट उसने 24 कर दिया। तो किसी का एड, मैं कहा योर लॉजिक इज नॉट अप टू दैट पॉइंट। इफ कंप्यूटर हैज कम, वो एड थे, एड्स नहीं के आई। आप कहीं वैसे तो नहीं कर रहे हो इस पे सेकंड फ्लोर को, फिर कहते सब करना क्या, फिर वो इन्फ्लुएंस हो गई। मैं क्या, आपने अपने आप इस सिस्टम से बाहर कैसे नहीं होना है। जो भी आप एआई के प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, चैप्टर होता है ना कि पहला चैप्टर पूरा नहीं होगा तो दूसरे पे नहीं जाओगे, दूसरा पूरा नहीं होगा तीसरे पे नहीं जाओगे, तीसरा पूरा नहीं होगा तो नहीं जाओगे। तो उसमें एडमिन चाहिए जो सेकंड पे भेजेगा। एंड एवरी इंजीनियर शुड बी 20 के आप 15 काम करेंगे पर 15 रहेंगे अगर आप चैप्टर सब लेवल करोगे। और रोबोट ऐसे नहीं चल जाए कि बटन एक दबाया और सीधी चाय बन के आ गई। वो पूछेगा चीनी डाले तो आपसे पूछे सर शुड आई पुट द चीनी, देन यो 2 स्पूनफुल। कहते सर हाँ ये करेंगे हम। वो तो मेरे ऐसे मैंने गप मारी और मेरी चली बन गई। सर गिव मी योर नंबर, अब मेरा नंबर मांग रहे हो, सर बताओ हमने आपसे बात करनी है। फिर मैं सीएसआई में चले गया। मैं जाता रहता हूँ जाते था, मैं जाता रहता हूँ। सीएसआई में आ गया, मैं क्या कर रहे हो, हम ऐसा करें जैसे मैडम को मैंने ज्यादा नहीं पूछा एलोवेरा से एलोवेरा मैं ज्यादा पूछूंगा तो कैमरा से आज माहौल था मेरा ठीक है तो देर आई वाज इंस्पेक्टर। तो हम ऐसा बना रहे हैं ऐसा बना रहे हैं ऐसा बना रहे हैं, ये तो ट्यूब सर भाई इससे बेटर ट्यूब है, लैक में बड़े ऐसे बनाते हैं। सीएसआर में प्रोजेक्ट है तेरा क्या सर इसमें एलोवेरा पड़ेगा, इसमें ऐसा पड़ेगा वैसा पड़ेगा। मैं तो कुछ चीज बताता हूँ। तो मैं कहा सर्वो सल्फर डाइजेशन सुनिए आपने ट्यूब कहते हैं सर मैंने मैं कई बार लाग पड़ जाता है ना आग से जल जाता है तो वो ट्यूब लगाते हैं। मैं कहा मेरे पास एक बूटी है, मैं कहा मेरे पिताजी सीखी है, अगर तू उसको यूज बनाए जो तू प्रोडक्ट बना रहा है तो वो कोई निशान नहीं पड़ता और हीलिंग 2 दिन में हो जाएगी। अगर सल्फर सल्फर डाइजेशन आपको 15 दिन में कर दिया तो क्या है। तो मैंने उसको बोला तूने स्ट्रॉबेरी सुनी है, तुम्हें घबराया स्ट्रॉबेरी तो स्ट्रॉबेरी बूटी है। मैं कहा तू सवाल ना पूछ, स्ट्रॉबेरी सुनी तूने? मैंने फिर उसको पता नहीं चल रहा था। मैं कहा स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी होती कुछ नहीं होती जाते ना बाजार में स्ट्रॉबेरी सुनिए ना कोई और स्पेल करता है। मैं क्या जंगली स्ट्रॉबेरी देखी, मैं कहा अगर तो तूने वो देखी है तो फिर उसको याद हाँ हाँ सर वो पूरी ऐसे ऐसे मैं फोटो से बना दी कहते हैं। मैं क्या जंगली स्ट्रॉबेरी होती है उसमें लाल लाल से दाने लगते हैं, उसके पत्ते होते हैं। मैं कैसा करना उसको कुटना, जब भी कभी कुछ हो ना ये आपको भी दिया एक्सटर्नल चीज है कुछ नहीं, थोड़ी देर में लग गई तो वो लगाओ और आपकी जो है एकदम जो है हीलिंग शुरू हो जाती है। मैं कहता उसकी कंटेंट देख क्या है और जो ट्यूब बना रहा ना ये मुंह वाली ट्यूब दिस ट्यूब तो हीलिंग वाली ट्यूब बना। उसने मेरा नंबर ले लिया तो व्हाट आई वांट टू से कोई भी बात मैंने कहीं सुनी थी। गांव के लोग पहाड़ों पे अभी तक भी किसी का चूल्हे में हाथ चला जाए फ्लाग पड़ जाए पानी गिर जाए गरम गरम वो जंगली स्ट्रॉबेरी को कुटते हैं। मेरी बात समझिए, बिच्छू बूटी की चटनी बनाते हैं, बिच्छू बूटी की जड़ें हैं जैसे आर्मपिट्स में कई बार फोड़े होते हैं ना उनको भी लगाते हैं, बट डोंट डू दैट। ऐसे ही बिच्छू बूटी तरह से बिच्छू बूटी लग गई मैं ऐसी चीज नहीं एडवाइस करूंगा। मैं क्या डू इट उसने मेरा नंबर दिया। अब पता नहीं उसका कब फोन आएगा अगर सर आपको ज्ञान के सागर हैं आप आयुर्वेदाचार्य किया है। मैं कहा मैंने जो किया तो सुन ही नहीं सकता मैं second point, always try to decimate the information whatsoever you have to. You have to do and what you have to do. But decimate only thing which will not spoil the community. ऐसी मैंने उसको चीज बता दी वो मेरे पे खेद करके मैंने ऐसी मैंने किससे सुना था सारे जड़ी बूटियां मुंह पे लगा लो बंदा सीधा हीरो बन जाता है। पता लगा उसकी एलर्जी होगी वो तो मेरे कुटेगा। जो चीज टेस्टेड एंड ट्रस्टेड है और जो आपने सुनी है जो आपको लगता है प्रिलिमिनरी स्टेज में इफ यू डेसिमेट द इंफॉर्मेशन बताओ
and people will appreciate it. जितने अब मैं एक लाइन और ऐड करना चाहता हूँ, जो मैं तो बड़ा बोर करता हूँ, मैं तो 6 घंटे एक बार स्ट्राइक हुई किसी कॉलेज में, मैंने पिछले दिन बच्चों को बता दिया, वो कहते हैं सारे बच्चे बड़े शरारती है, कल उन्होंने स्ट्राइक करना, मैंने और आगे बता दिया, मैं तो डेढ़ साहब आ रहे हैं, बच्चे होते हैं आपके लोगों ने कि बस डेढ़ साहब आएंगे तो हमने ये भी बोलना है, भी बोलना है, भी बोलना। मैं ऑब्जर्व करना चाहता हूँ द टीचर इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ कॉन्स्पिरेसी, वो बच्चे, मैं 10 बजे कॉलेज जाता हूँ, हमारे दोस्त बनाया मैंने सर बच्चे स्ट्राइक कर दिए, मैं कहता वेरी गुड, आप दोनों ने कर दी, डेढ़ साहब आ रहे हैं, वो सोचिए डायरेक्टर 11 बजे आना, प्रिंसिपल बड़ी मस्ती से नहा धो के आ रहा है, मैं बाहर गया था, सारे बच्चे बाहर खड़े, मैं कहा क्या हो गई आपको, हमारे दोस्त सर हट के खड़े, सर कुछ डिमांड थी, कुछ सर बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ चली गई, मैं कहा मेरे आने के बाद नहीं, सर मैं ऐसा कर दो, मुझे धोखा अच्छा नहीं लगता, आप कमरे में जाओ, आई विल कम टू यू, और नहीं हुआ वी आर नॉट सैटिस्फाइड, तो आज घंटे डेढ़ घंटे बाद खड़े हो जाओ, और ही इज गोइंग टू स्टॉप, मेरे साथ 2 दिन हटते, बेटा यू विल बी सरप्राइज, 10 बजे मैं शुरू किया, अब मैं टाइम बता रहा हूँ, वो रोक देना, मैं बुलंद किया, I went from 1 room, 2nd room, 3rd room, 4th room, 10:15 की मैंने स्पीच शुरू की, 1 रूम, 2 रूम, 3 रूम्स, मतलब बच्चे खड़े रखे हुए, कोई लड़कियां बेहोश, कोई लड़के बेहोश, मैं पानी ला तो करते करते जो वो तो छोड़ो, मेरे साथ जो हेड्स थे ना, अराउंड 1.25 दिन हो गए, एक अनिल था उसमें, मैं जो बोले कांगड़ी में, चलिए तो मतलब हाँ ये बता रही है, मैंने एक सबको दे दिया अपने हेड, अरे यू हैव ए गुड, फिर आई वेंट फ्रॉम 1 रूम, मैंने बच्चों से पूछा, मैं कहा बेटे अब आपका मन है तो कल सुबह करें, मैंने दूसरे बच्चों से पूछा, मैं कहा बेटे आपने कहा नहीं, यू सैटिस्फाइड नाउ, मैं कहा सॉरी आज हमारे डेट साहब ज्यादा पढ़ना नहीं आ पाए, केवल ऊपर पढ़ता है तो कभी भी होगी तो बेटा आपने मेरे को लिख के देना, डोंट वेस्ट योर टाइम। फिर सिविल के मैंने एक डिप्लोमा का बैच निकाला, कोई टीचर नहीं था, उस अखबारों में निकला स्ट्राइकिंग करे, आप हैरान हो गए, मैंने सिविल के सब्जेक्ट पढ़ाया, इसी जैसे मैं पढ़ा रहा था ना इम्पैक्ट इनर्शिया दिस एंड दैट, फिर मैंने आर्किटेक्ट की टीचर उनको पढ़ाया एंड यूपी के सर्वे में उनको उनमें मैंने उन्हें उत्तेजना कर दी, मैं क्या हिमाचल में जेई की पोस्ट जो निकल गई, मैं कहा ये और एंड यूपी की सरप्राइज ये झूठ नहीं है, हम वोटा का रिकॉर्ड ले लेना, हमारे 30 में से 29 बच्चे पास हुए और उन्हीं दिनों जैसे उन्होंने डिप्लोमा किया नेक्स्ट ईयर ऐड आ गई, 17 बच्चे जेई लगे, आज उनमें से एसपी हो गए, मेरे को रोड से पेटी भेज रहा है, कोई नाली से भेज रहा है, सर मैं सोनी, मैं क्या सोनी मेरे से आप मेरी इज्जत नहीं करते, एक में तत्ता पानी चला गया, वो वहां एसपी वगैरह से एक ना जेई कुर्सी आ रहा है, सर आप यहाँ बैठे आपने पीछे को आप सर आपने मेरे को पूछाना है स्टूडेंट नोटा, सर मैंने उस बैच का था जब आप हमें पढ़ाते थे, सर आपने हमें गाइड किया, वो मतलब दिल खुश हुआ ना, मतलब एसटीएम से पहले मेरे को कुछ नहीं गाया टक तो टीचर के पास सेट होता है, तो मैंने उनको डिस्क्राइब किया, मैंने रोड में आई वाज अ फार्मेसी टीचर, ओनली अलोन टीचर, आपने अप्रूवल करानी है 5 बंदे चाहिए, 4 लेक्चर्स 1 सीनियर लेक्चरर है, दिल्ली से टीम आई स्पेंट अराउंड 2500 फॉर टॉप, मेरे पास छोटी सी कार थी डिग्री के पास, उनको हार्ड कॉपी भी ले दिया, सारे मंदिरों में घुमाया 2 दिन, उनको राइटिंग में मैंने लिख के दिया कि नेक्स्ट सेशन तक हमने अपॉइंटमेंट करनी, यू विल बी सरप्राइज only with one teacher I don't have we have got 3 more teachers, जो भी बोला एडमिनिस्ट्रेशन में एक साल थोड़ी आने थे, जब बड़ी मुश्किल है, कोई एम फार्म मिलता नहीं था, आरएनपी रूल गलत होने थे, बी फार्मेसी को देते थे, पोस्ट में एम फार्म वैसे नहीं मिल रहा, कैटेगरी वालों को नहीं मिल रहा था, रूल मिला ना, इलेक्ट्रॉनिक के बच्चे स्ट्राइक करने के मैंने रोक दिया, मैं डोंट डू दैट, फिर बच्चे समझे, उनमें से एक बच्चा मेरे को कुछ दिन पहले मिला, इंग्लैंड से आया हो, किसी दुकान पे खड़ा था, जैसे दुकान से बाहर निकला, कहते ये कौन थे, दुकान वाला बोलता है गौतम सर, कहते हैं वो दौड़ आया, सर मैं आपका स्टूडेंट हूँ, पर बुजुर्ग हो मेरे तरह 22 साल का, मैं पैर पुछ हुए, उसकी बाइक साथ थी, कहते हमारे टीचर थे, हम तो इलेक्ट्रॉनिक के स्टूडेंट से, पर इनसे बहुत डरते थे, और मेरा नाम दर्द पे बड़ा रखा था उन्होंने, अच्छा ऐसा नहीं लगते, तेरे को क्या पता, मेरे तो भी टांगे कांप रही हैं, अनिल कुमार, ये नाम वेरी ऐसे टॉप इंसान में इसको करता है, माय स्टूडेंट्स मे नॉट बी फ्रॉम फार्मेसी, मे फ्रॉम मेरे बच्चे मेरे स्टूडेंट्स चाहे वो स्टेट का था, आज खुशी होती है, दे आर एक्सेलिंग, टीचर के बाद यही होता है, आप भी कभी जाओगे, कभी कोई आपका फेसबुक में देखूंगा टाइम के बाद, तो आप बोलोगे आई एम फ्रॉम हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, सर टुडे आई एम लाइक दिस, आई एम लाइक दिस, दिल खुश हो जाता है, ये हमारी एनर्जी है, टीचर हमेशा यंग रहता है विचारों के हिसाब से, वक्त ये सेल्स है ना, ये न्यूरॉन से भी डेड होंगे, स्किल भी होगी, सोमैटिक सेल भी डाउन होंगे, एनर्जी लेवल कम होगा, बस यही होता है कि हमने जो पढ़ाया और अच्छे तरीके से पढ़ाया, तो जब मैं बेटा क्लास में जाता था, तो मेरी अगर 50 मिनट की क्लास है ना, तो उसमें मेरे 5 मिनट को इतना टाइम ले लिया, 5 मिनट में डेली कैप्सूल देता था, 5 मिनट मैंने हमेशा दैट इज कॉल्ड
स्पिरिचुअल काउंसलिंग, तो कई वर्ड इसको कहते हैं ह्यूमन काउंसलिंग, वर्ड कैन बी चेंज। तो मैंने तो ये बोलता था फॉर व्हाट यू हैव कम, अगर आप रोड आया आज बताओ आप क्यों आए, दो चार सवाल पूछने के बाद आओ हम टॉपिक छोड़ा। तो ऐसे मैंने डोजेस बता दी बच्चों को। एक इंस्टीट्यूट कॉलेज सॉरी हॉस्पिटल खुला शिमला में, वो बंदा अमेरिका से करके आया बात था, हार्ट का स्पेशलिस्ट, उसने फार्मासिस्ट लड़का रखना था, तो उसने एक डोज पूछे फार्मासिस्ट के, उस टाइम उसने 6 जाके उसको ऑफर दिया, कहते यार आपने कोई इस डाइजॉक्सिन की डोज बताओगे, तो उसने बोला सर यस, हाउ मच इट इज, 0.5 मिलीग्राम, कहते इफ यू विल मेक 0.26 मिलीग्राम, कहते सर पेशेंट विल डाई, मेरे से सुना था, कहते इफ यू गिव 0.24 मिलीग्राम कैन दे गिव यू मोर, तो थोड़ा कहां से, तू तो मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट सोन पता होता है, कहते सर मैं रूल्स पढ़ा यार, कौन था टीचर, कभी उनसे मिला, बट इन 94 6,000 रुपए, और उसके टीचर की तनख्वाह 4,000, मेरे बच्चे को 6,000 रुपए, खुशी होती है जब बच्चा स्टूडेंट टीचर से आगे जाए। तो मोंगा जी को खुशी होगी जब आप बच्चे जाएंगे। तो मोंगा जी का नाम इंटरेक्टिव होता है, रुटकी वालों का नाम वैसे ही कायल हो जाता है, और कहते हैं ना गुड़ गुड़ी आ जाते हैं। हमारे टाइम इन्होंने फॉरट्रॉन पढ़ी हुई है, इन्होंने कोई लैंग्वेज C+ थोड़ी पढ़ी है, तो खत्म ही होगी, अब आप जावा पे आ गए, उसके बाद पता नहीं और आ गई, कोई लॉलीपॉप टेक्नोलॉजी आ गई, कोई एंड्रॉइड, कहीं बढ़ते जाते हैं। तो यू आर ए न्यू पर्सन, और टीचर जो पढ़ाना होता है वो कभी अपने आप को इवैल्यूएट ना करे और स्टूडेंट उसको थोड़ा बहुत रिगार्ड, तो ये हमारा एक कॉम्बिनेशन बनता है। तो जो आपने आज काम किया, आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि आई एम लाइक टू रिटायर आफ्टर 3 मंथ्स, तो 30 तारीख को मैं रिटायर होगा, मैं बच्चों को बुलाऊंगा, होपफुली आए होपफुली डिसाइड से सर आए कि ना, नहीं देखो ये तो इट इज योर चॉइस ना, कोई किसी को बुलाता है तो आए, नहीं आए जब आप बुलाएंगे तो मैं तो बुलाऊंगा ना, फिर मैं जरूर सोचूंगा, ठीक है नहीं, तो आई विल थिंक यू व्हाट टू डू, क्योंकि मैं हूं थोड़ा और टाइप का काम करने वाला, और फिर कुछ और टॉपिक आ जाएगा मेरे याद है, यू विल बी सरप्राइज्ड, आई गॉट मैरिड विद इन 3 इयर्स, बहुत व्यक्तिगत मत जाना, ठीक है, बेटा डिसीजन डिसीजन कर रहा हूं, ठीक है, तो पर ऐसा नहीं है, ठीक है, ओके, विद दीस वर्ड्स आई से थैंक यू टू एवरीबॉडी एंड बी हैप्पी, एंजॉय योरसेल्फ, थैंक यू। बोर कर दिया आज आपको, है? थैंक यू सर, थैंक यू सर फॉर इंस्पायरिंग वर्ड्स। सर हमारा तो मन करता है सुनते ही रहे। मैं तो सोच रही थी कि इंडक्शन प्रोग्राम पे सर को एक दिन बुलाएंगे मोटिवेशनल स्पीच के लिए। It depends on you. जैसे ये बुलाएंगे तो हम सोचेंगे। So I would now request our worthy director sir for his address. आपका भी है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा सर, मैंने ज्यादा तो नहीं ले लिया। Thank you so much, our worthy joint director sir, for gracing this occasion. Already he has shared his life experience with all of you, and believe me, what sir said, मैं उस पे जाऊंगा. He is not adjusted for as a chief guest, not adjusted sir. You are our second choice because director of technical education he was not available, so cannot be said that you are adjusted. You are always our preference. Thank in you. that sense. Thank you. Thank you. So, talking about the takeaways of this particular international conference, I will not say whether it is successful or whatever, but definitely it will be memorable, because I am not the person who can judge it, right? Because we are the host. Whosoever has come as a guest, as a keynote speaker, they may judge it. But yes, our efforts were there, right? We may have faltered in maybe few efforts here and there, we may be, but believe me, our intentions were. They are my strength, our students are our strength, and they are all the time with the institution. This is what I can say. And second, I am not going to counter you, sir, but yes, I can say I am very happy being at this place rather than sitting at directorate. I don't want to join there as maybe at any capacity. So I'm very happy here. So I said, next is this first international conference. This is one attempt taken by Government Hydro Engineering College convener. All praise for him and his team. Wonderfully done. All praise for my students. Really, it's your perseverance, your hard work, your enthusiasm that has made this event possible. Believe me, I was not even expecting. I was talking to
Dr. Abhishek, that how we will do this event, how to plan this event. And then I said, it can be or it may not be a success, but at least whosoever will come here, he should have some unforgettable experiences. What anybody can carry from this place is this thing. And this will be our achievement if we can anyhow could make it happen. So I will say this is not at all on me. This is the team of Government Hydro Engineering College, the convener, the co-convener, and all the committee members, all the staff members, faculty members, wonderful students of this institution, very charming students. I all the time say this college, Government Hydro Engineering College, has potential to really outperform all the institutions in the vicinity and around also. Maybe at least we have to set small targets, and that we can do together. Already you have said, सर ने बड़ा अच्छा कहा कि मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगा उस चक्कर में, फार्मेसी अच्छा, इंजीनियरिंग अच्छा, बिलीव मी मेरे लिए इंजीनियरिंग अच्छा, सर के लिए कुछ और या किसी और के लिए कुछ और. But every field has its own advantages, its own potential, and believe me, now the time has come. We cannot say computer science is better than civil or any other branch like that. It is pharmacy people nowadays. Robotic surgery is being performed at AIMS or maybe Tata Medical College with AI. So AI is what we need to adopt to. Right? I worked in the field of wireless sensor networks, but now it has time that I need to find ways of integrating artificial intelligence, data science, machine learning into wireless sensor networks, and this is not bad either. ये कोई गलत नहीं है, because अगर हम नई चीजों को लर्न करेंगे, emerging चीजों को as a faculty member learn करेंगे, then only our students will be inspired to do something better. And sir very rightly said, IITs are IITs because of their students, because they are ready to work. This problem is persisted with all the institutions. I know students, they are well behaved, right? That वो element आ चुका है. But the next level जो है, that is required to be reached. We need to work with our students. We need to know what is the, and believe me, this international conference has given us the purpose of engineering. मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि अब जो भी यहाँ स्पीकर आए हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए. Whatever results they have presented in terms of graphs, believe me, even I could not make anything out of that. ठीक है, मुझे भी समझ नहीं आया, मैं सच बताऊं. But मेरा point सिर्फ इतना है, the purpose of this particular international conference was that we should know that engineering has its role. We should touch the community. We should touch the society. What is the existence of being an engineer also? This is sir has said in a lighter way. ठीक है, मेरे words अलग हो सकते हैं, उनके words आपको थोड़े entertaining लग सकते हैं, but I say the point is the same. Right. So point ये है कि engineering जो है, engineering is not merely a word. Engineering is something which can touch humanity. It can touch the masses also. And that is what we need to do. We need to identify the problems. We need to provide the possible solutions to that. अब मैं उसी टर्म्स में बोलता हूँ, मैं कई बार बात भी करता हूँ, मेरे पास भी कई टीचर्स आएंगे सर, मैं जानबूझ के रिलेट कर रहा हूँ. They always come with the problems. Sir, ये problem होगी, ये problem है, ये problem है. That means they are not the problem solvers, they are problem creators. They don't want that problem to get solved. So if a person comes to you with at least two possible solutions, then only think that that person is helping you or is good for the institution. The point is that ultimate thing is that being engineers, we have a greater role to play for the society, for the community, and we need to identify that. We need to work in that direction. Already stated in one of the speakers has said that our students must visit nearby society before getting a problem statement ready for their solution. Right. So this is one takeaway from the international conference. Right, we are all motivated. The point is we need to move outside this institution also. We need to see what IITians are doing, how differently they are working, and if we can do something better. Because all the time say HPTU curriculum is obsolete. Right.
And believe me, how many of you completely study that syllabus? I doubt. 100% syllabus is not covered by the teachers even at majority of the times. Right? But here I again say, sir, the concept is entirely different. Teachers, they are putting their 101% effort in teaching these students. They are not carrying books in the classrooms. This is what is happening here. And I cannot comment for other institutions, but Government Hydro Engineering College, I know my students, they are into classes. The class attendance is very high. Faculty members, they are very punctual. They are doing their stuff. Right? Not because anyone is monitoring them. It is out of their own conscience, and I'm proud of that also. So at this platform, I can say the team is doing good, but that iota element is required to be added, and that particular effort, that is the research element, is to be added, and the purpose of this conference is that only. That our students of BTech, they should understand that the time has come that if they want to compete, if they aim high placements, right? And believe me, Government of Himachal Pradesh, they are very, very serious about your internships and about your placements also. Very, very serious. And especially I requested the AICT Chief Technical Officer to get connected in physical mode so that he can talk to you. Unfortunately, there was some issue with the connection at that time. But my point is, the one point agenda was AICT has taken so many initiatives. Believe me, I am connected to AICT in so many platforms. So I regularly go to AICT, Delhi also. I meet everybody there. So they have damn good ideas with them. But point is, the ideas are not reaching to the real stakeholders, that is the students. We are not able to communicate what initiatives AICT is taking. I don't know how many of you have seen the AICT and how often you explore the AICT website. So we should see that AICT is giving so many scholarships to faculty members also, to students also, to institutions also, but we are not exploring that. So we need to change ourselves. Actually, what we are doing, we are confined within a small state of Himachal, in that too, Bandla. We are looking at our peer group only. We are looking and we are thinking that this is the whole world. Believe me, world is waiting outside. Because competition is very, very, very stiff. And for that, if you want to compete at any level, you need to come out of your shell also. You need to add that iota element, that is the research. And you should go, this conference is one platform, at least students should aim IEEE conferences. This is from where I started. Right, go and present your work, do some work, meet your teachers maybe after 4:30 p.m. regularly. Right, your teachers, believe me, have faith in your teachers first. If you say that my teachers, they cannot give me anything, believe me, you are not able to expect anything out of your teachers. Give respect to your teachers. This is one point, you can say Guru Mantra to all of you. Have faith in your teachers. If you have faith in your teachers, you can excel in your life. Teachers, they are here. I am talking only about Government Hydro Engineering College. They are here to give you time, and time is very precious. Believe me, if you say we are sitting here, if you ask us, my whole team of faculty members, staff members, they will stay here also. They will teach you up to 8 p.m. also. We will keep our labs also open for you. So we are that much available, we are that much accessible to you. Thank you so much. I will not delay the things because I also have the habit like our joint director sir. टीचर को स्टेज मिल जाए छोड़ता नहीं है मेरे साथ भी ऐसा ही है. No, but I again say this will be the repetition of the things. I don't want to go into that. But thank you so much. I again say the conference to me was a memorable event at least, and we may be here and there in terms of facilities. We may have skipped somebody's attention also. I would have failed to mention anybody's name here while he will be giving the formal vote of thanks, so I'm not the right person for that. But yes, I can say the efforts were great. My team, I again congratulate from my personal behalf that I have seen them working, and
Believe me, I did not chase anybody in that, particularly this time. So I'm very proud of my team. Thank you so much. And my very charming students of Government Hydro Engineering College, I'm always proud of you. Thank you so much. Thank you, sir. I would now request our worthy director, sir, to please present a memento as our token of gratitude to our chief guest. So you all people are making me emotional. Thank you, sir. Now I request the convener of the conference, Dr. Abhishek Dhiman, to please present the vote of thanks. Ladies and gentlemen, as we conclude this enlightening 2 days international conference on recent trends in engineering, science and technology, I express my heartfelt gratitude to each one of you who have contributed in this conference. I express my deepest appreciation to our chief guest, our keynote speakers, our resource persons, our participants who shared their research work, spared their time, and contributed in this particular conference. I thank our worthy director cum principal, Professor Himanshu Mongaji, who has guided us throughout the journey. I thank the organizing team, the team of Government Hydro Engineering College, Bandla, who worked day and night and made this event possible. And finally, I thank my students for their patience and for their contribution that will reflect in their career after some time. Ultimately, the aim of this conference, as discussed, was to connect the people from different domains. And I hope up to certain limit, we are successful in that. We connected people from biotechnology, we connected people from sciences, chemistry, biology, pharmaceutical, engineering, civil engineering, mechanical engineering, every kind of speaker in the form of resource person, in the form of oral presentations, in the form of poster presentation. We tried to accommodate them all. They discussed the things in these 2 days, and I hope that in one or the other way, a positive outcome will be achieved. With this, I hope that we will carry the spirit of collaboration of people from different background of science and technology with us. I thank you all for being part of this journey. Thank you so much. Thank you, everybody. Thank you for being with us. Thank you. All the best.